invincible.
Invincible. Invincible.
Welcome, ladies and gentlemen, to PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3, Day 6 of playoffs. One last day before we head to the Grand Finals, one last time in Phase 3, in Chapter 3. Welcome, my name is Edge, along with Inferno. We'll be taking you through today's actions. Once again, 6 maps, 6 matches, 6 last chances for the teams at the bottom to make their way to the Grand Finals. I mean, absolutely. It's gonna be the last day, and it's gonna be day number 6, Edge, and it's gonna be the final day. And after this, we'll be having our top 18 teams, right? And we will be having 2 of our teams, right, qualifying for those fan favorite votes. And especially, I feel like DRS and Team 4 Thrives, they're gonna be our fan favorite team again. So no changes in that so far, but it's going to be the last day, and you're not wearing the cap. I'd suggest you do wear the cap again, because from tomorrow we'll be witnessing those grand finals. But still, man, I mean, what are the matches we are witnessing right now? And especially कल के दिन के अंदर जितने भी हम लोगों ने मैचेस देखे थे, बीट रोंडो, बीट रैंगल, बीट मिरामर, हर मैच के अंदर हमने यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देखा हर एक टीम के थ्रू. एंड स्पेशली मैं बात करूँ टीम सीक्रेट्स की, man, they were just totally out of their minds yesterday on that angle. After that, HORAA esports, very consistent, very freaking consistent with their gameplay. आज का स्टोरी लाइन एज क्या होता है वो हम लोग कुछ दफा में देखेंगे एंड देखते हैं किस लम्हे के अंदर ये सारी टीम्स आती हैं. बट आई मीन इट्स बिन अ ग्रेट इमोशंस ऑल दिस वाइल एंड अ ग्रेट रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस आई से. आज का यहाँ पर आखिरी दिन है प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स का, एंड मैं बोलूँगा हर एक टीम, बीट एनी टीम, चाहे वो स्ट्रगल कर रही हो सेकंड पेज पे, चाहे वो फर्स्ट पेज पे, दे हैव टू गिव देयर ऑल व्हाट दे गॉट, राइट. वी वोंट बी विटनेसिंग ग्रुप ब्लू, सो देखते हैं यहाँ पर ग्रुप ब्लू की कितनी सारी टीम्स क्वालिफाई हो जाती हैं नेक्स्ट अपकमिंग ग्रैंड फाइनल्स के अंदर. बट टू ऑडियंस वाचिंग आउट देयर, आप सभी लोगों का स्वागत है दिल से हमारे इस ब्रॉडकास्ट के ऊपर. माय नेम इज इनफोलो, अलोंग विद एज वी डिड द इंट्रोस, बट अगेन वन मोर टाइम फॉर यू ऑल. आप सभी लोग आए हो स्ट्रीम के ऊपर अभी, सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, बिकॉज़ एज व्हाई नॉट, बिकॉज़ आवर चैनल इज रियली क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube. I mean, we are very, very close indeed. And once again, we all know what happens when we hit 50,000. We're going to be giving you guys something in return. So, well, hit us up with 50,000 and we'll hit you up with something. I mean, you probably know already what it is, but once again, we'll keep it a surprise for now, as we have the event roadmap on our screen. Phase 1 started off on 8th of January to 13th of January. Top 18 teams moved to the grand final from 14th Jan to 17th of Jan, where Flash were the champions. Phase 2, 18 Jan to 23rd of January. It's 18 teams once again moving forward. 2 fan favorite teams out of those. Once again, keep in mind, 4 Tribes and DRS were the fan favorites twice back to back. And now, grand finals, 24th Jan to 27th of January, where once again, the reigning, undisputed, undefeated champions were Team Flash. They did manage to come out on top in a great fashion. And here we are in Phase 3, playoffs, 28 Jan to 2nd of February. That is today, folks, by the way. Keep that in mind. Last day of playoffs. And grand finals from tomorrow till 6th of February. Will Flash be able to pull out a hat-trick? Well, it's time for us to wait and watch as we have Group Red coming in. All 3 Guerreros, D plus Kia, Xavier, HORAA Esports, BLUG, Alpha Gaming, the 11 2K Esports, and Team PANDUM, who have been having the best phase for now, at least, if you ask me. I mean, phase 1, they were not that great. Phase 2, they were decent. But phase 3, I mean, it feels like a whole new team. I absolutely love the improvement coming in from them. Alpha Gaming on the other side, after PMGC 25, I expected a lot coming into this one, but unfortunately, it feels like that is not going to be the case. And 11 and D plus Kia, 2 Korean teams that we're getting to witness. I mean, D plus Kia, they're on a whole another level. But 11, they're on a whole other level too. But unfortunately, the level's not up. It's a little, somewhere a little lower. So I'm hoping to see 11 pick up the pace today and maybe get a chance to get to that grand finals. Exactly, this is going to be the group red, and as we did discuss about the teams here, they are looking super good. And especially Edge, let's just talk about the person on our screen right now. On the right hand, we can see alter egos Rosemary. Do you remember that 1v4 against 4 Tribes in the region of Picado on the map of Miramar last time? Man, Rosemary, he was just so dominant, and that 1v4 is going to be a highlight of a show now. I mean, the one before was... That was something I'm pretty sure 4 Tribes
were staying awake at night. That one before was keeping them awake at night for sure. As we have Group Green, Boom Esports, VOIN Esports, Nongshim Red Force, Team Secret, DRX, Team 52, Four Tribes, ASI Esports, and Team WARGYE. I mean, all of these teams are brilliant. Boom, we know the strategy that they've been using, and it's pretty much working out for them. VOIN Esports, they have their ups and downs, but they usually do be the ones dealing insane amount of damage. Nongshim Red Force, the first time we're seeing in any of the faces, and well, they are coming in with a brilliant performance with 3, I believe, 4 chicken dinners already. They are, slightly building a rivalry with their brothers from the same region, DRX, who also have 4 chicken dinners. The dominance from both of these teams is incredible. Team Secret, on the other hand, pulled up a brilliant rondo with 39 points. And apart from that, they're also dealing decent damage into other maps as well. Yesterday's Orangle, especially, where all of them were the top 4 players. Team 52, better performance in phase 2, I would say. But after that, they're kind of falling apart. Four Tribes struggling a bit, but we have seen them be the runners-up in phase 2. So hopefully, phase 3, they can be the ones coming for the crown. ASI 8 Esports, on the other hand, they have been performing decent, and a lot of these eyes are going to be on them for sure. As well, once again, Pakistani region have not yet gotten a chicken dinner in this phase. At least 4 Tribes, ASI 8, and Team WARGYE. So hopefully one of them can do it. And Team WARGYE, I mean, I don't have to talk about them at all. They have been improving immensely, starting off from day 1 of phase 1. As we take a look at the Group Blue, we have BIGETRON by Vitality, the winners of Chapter 2. RIQ Rue, the consistent masters. Team Flash, the reigning, defending, undisputed champions at the moment. Twice back-to-back too. And SKYFORCE. Feels like they might not be able to make it to the grand finals, but we've all seen how good and how deadly they are. And DRS Gaming, the fan favorites, one of the fan favorites, and the Giants coming in from Nepal region. XMPL especially, the Killer YT as well. I mean, both of these players have actually caught my eye a lot. And Hong Kong team, unfortunately, the first team officially to not make it to the grand finals. They will not be making it through, and hopefully we get to see them in Chapter 4 and any of the further tournaments. Team SCYTES, I feel like they might be in a good position to qualify, so they might be the first Pakistani team to make their way to the grand finals. TTK Esports, on the other hand, things are looking grim, and especially after them not showing up into the last year of the match for Group Blue, right? It is just not looking, it's not looking great for them in terms of qualification. But FN Sejong, first day, they came in with a bang, with a chicken dinner on the first game itself. And after that, they kind of fell off, but they still have a very good, lead, very good number in the overall standings. But I feel like they might just be able to qualify as well. So at the moment, it feels like all the Korean teams, except the 11, are going to be going in with the qualification towards the grand finals once again. Today is the last day. Group Blue will not be participating. Group Green, Group Red, these two are the groups facing off against each other. Now things are going to get interesting because all of these teams here, they're still going to be holding on to their position, especially Team SCYTES. They are in a situation where they can get knocked down, so they have to just hope that no other teams will be able to take them down. If you take a look at the overall rankings, you'll know exactly what I'm talking about. 195 points for Nongshim Red Force, 189 for RRQ. Team FN Sejong, 186, BTR 183, 178 points for D plus Kia, DRX 176, 160 for Team Secret, DRS 148. HORAA Esports on 147. These are your top 9, and most of these teams are pretty much already qualifying to the grand finals. As we take a look at the second page of the overall rankings. Now, these teams in the middle order here, Inferno, these are the ones under, I don't want to say a lot of pressure, but there's a little, little bit of that pressure just adding, just lingering out there. True, the pressure is there, but to be honest, how they are going to recalibrate that pressure and use it, right? I mean, in an advantage, to be honest. But Edge, I mean, I have to say, Nongshim Red Forces, Team RQ, Team FN, BTR, Team Duplex, Kia, DRX, everyone, and especially all these Korean teams, they played it very easily. They made it look like it was so easy to be in top 9. Nongshim Red Forces, and especially DRX, Edge, let me remind you, man, they were on the 3rd page, right? But still, they made a huge comeback, and finally they were able to capitalize 176 freaking points, and that too in 2 days of a consistent gameplay.
right? And still they have some of the games remaining. So Duplex Kia, I mean, and DRX, both of the teams, they were feeling like that they were the best contenders here, but still both of them, they put up a show and they're performing really good. एक बारी नजर डालते हैं हमारे second page के ऊपर, जहां पे हम लोगों को देखने को मिल जाएगी Team Flash, VOIN Esports, PANDUM, Team Sides, Fourth Thrives, Team the Xavier, SKYFORCE, a Team Boom Esports, T2K Esports. Okay, Edge. Right now, I feel like we'll be having those top 18, right? Because Team Fourth Thrives and Team DRS, both of them, they are in top 16. So we do have the slots on the 17th and 18th position. Boom Esports and T2K Esports, उन लोगों के पास में अभी भी एक चांस है कि वो लोग शायद से क्वालिफाई हो सकते हैं अगर फोर्थ थ्राइव्स आज के दिन के अंदर 17th स्पॉट पे या फिर 18th स्पॉट पे ना फिनिश ऑफ करे. एंड आई फील लाइक एज दैट इज नॉट गोना बी हैपनिंग बिकॉज़ फोर्थ थ्राइव्स आज के दिन के अंदर मैं जानता हूं कि आज के दिन के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करेंगे एंड ट्राई करेंगे कंसिस्टेंट मैनर के साथ में चिकन डिनर्स लेके जाए. नजर डालते हैं हमारे लास्ट पेज के ऊपर जहां पर टीम सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती हुई अल्टर ईगो एरीज, 2K Esports, टीम हांगकांग, टीम वार्गये, SCYTES Esports, टीम APG, टीम 11 and team 52 Esports. Alter Egos and team SCYTES Esports, I never thought they will be on the third page. I mean, that kind of is a little bit worrisome here, but the teams at the bottom, right? 52 Esports and 11. Both of these teams are struggling and feels like it might be the end. I mean, 52 Esports yesterday with no points whatsoever. Not something that you kind of want to see, especially in a situation, especially at this stage of the tournament. 11, this might be the end unless they can pull off 20 points every single game for the next 6. Then there might be a chance. And BLUG on 60 points, 66 for APG as well. And as you said, you know, I didn't expect ASI and APG to be in this situation too. But all three areas, there's a really good chance they can actually make their way towards the top 16, top 18. So hopefully we'll get to see if today is going to be the day where they will push down a couple of the teams and, you know, secure a slot for themselves in the grand finals. I mean, absolutely. Let's see यहाँ पर आज के दिन के अंदर कौन सी एक ऐसी टीम रहेगी जो थर्ड पेज से उठकर सेकंड पेज पर आके एक बेहतरीन कमबैक हम लोग को उनके तरफ से देखने को मिल सकता है. देखिए एज यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं इजी होने जा रहा है, बट अल्टर ईगोस एंड 2K Esports एक सरन चांस है, एक होप है कि मे भी हो सकता है कि ये लोग एक थर्ड पेज से उठ के सेकंड पेज पे आ सके. लेट्स सी व्हाट्स गोना बी हैपनिंग. But Alter Egos, I really want them to be in the grand finals. Man, I mean, come on, it's Alter Egos after all, right? So, एक बार हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं हमारे फैन फेवरेट टीम के ऊपर, and no doubt कि यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगी टीम फोर्थ थ्राइव्स एंड DRS. देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ कल जितनी भी पाकिस्तानी ऑडियंस देख रही थी, जितने भी पाकिस्तानी फैंस देख रहे थे, they started supporting SCYTES Esports because they are struggling. Right? And अभी के लिए यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि आज के दिन all of these teams, yeah, मेरे को लग रहा है कि at the bottom, आज के दिन they're having a really tough time. Yep. And somewhere around I feel like that edge maybe आज के दिन के अंदर यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस दोबारा से टीम्स ASCYTES Esports को सपोर्ट करेंगे and maybe हो सकता है DRS से ज़्यादा वोट्स देखने को मिले, so ASCYTES Esports can qualify. SCYTES Esports, I mean, now they kind of are relying on the votes coming in. So once again, it's up to you guys to see if you can help any of the teams at the bottom of the scoreboard make it to the grand finals. Well, all you need to do is type in hashtag team tag, your favorite team's tag, in the chat, and well, one vote equals, of course, one vote here. And the top two teams with the highest number of votes will be making it through to the grand finals, regardless of the position on the overall. True. And now this is going to be the scenario right now in the fan favorite voting. And I mean, I don't know, man. आज यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी ऑडियंस देख रही है, जितने भी पाकिस्तानी फैंस देख रहे हैं कि क्या पुल अप करके जाए, क्योंकि कल के दिन के अंदर 7,000 से ज़्यादा वोट्स यहाँ पर accumulate कर लिए थे SCYTES Esports के लिए. And man, let's just see, man. Like, I mean, I don't know how they're going to be performing. And especially SCYTES Esports, देखिए कमबैक करना मुश्किल हो सकता है, बट एक सडन चांस एंड होप है कि अगर फैन सपोर्ट करते हैं, सो हो सकता है कि यहाँ पर इजीली SCYTES Esports की टीम क्वालिफाई कर सकती है. देखिए DRS की टीम, I mean, we don't have to worry about them because I feel like DRS, they'll get
they'll get promoted very easily. They are on the first page of the overall standings. So जितना उनका काम था उन्होंने किया, and DRS उनके पास में बेहतरीन तरीके से points है. So easily यहाँ पर ये नेपाली टीम आराम से क्वालिफाई कर सकती है. एज लेट्स से बिकॉज यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी फैंस थे एंड स्पेशली व्हेन द होरा esports was struggling, so उन्होंने सपोर्ट किया था होरा esports को. They were also so close yet too far, but still somewhere around मेरे को लग रहा है कि आज पाकिस्तानी फैंस हैं जितने भी नेपाली फैंस हैं उनके बीच में एक गठबंधन हो सकता है. उसके बाद में सभी लोग अपनी SCYTES esports की टीम को वोट करके लेके आ सकते हैं सेकंड स्पॉट पे. एक बारी नजर डालते हैं हमारे यहाँ पर मैप रोटेशन के ऊपर. फेज सेकंड प्लेऑफ्स, इट्स गोना बी फेज थर्ड एक्चुअली, माय बैड. एंड यहाँ पर रहेगा पहला मुकाबला रोंडो का, दूसरा रहेगा इरांगल का. उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे मिरामार. एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ. ये तीन मैप दोबारा से यहाँ पर मैप पूल में रहेंगे. एंड लेट मी टेल यू ऑल, ये आज के दिन के अंदर दोबारा से हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 मैचेस. सो डू नॉट गो एनीवेयर, गेट योरसेल्फ सम स्नैक्स, maybe some soft drinks, because आज यहाँ पर मुकाबले बहुत ही ज़्यादा intense and insane होने जा रहे हैं. So hook yourself for the stream today and subscribe the channel. Edge, we're heading towards to the Rondo. We're heading down to the Rondo, indeed. The aggressive map up out of the three, if you ask me. I mean, and this is going to be an important match for the ones at the bottom. 11, APG. These are the two teams I'm going to keep an eye out for. I mean, here's the thing. These two maps, I mean, 2 rondos that they have, right? These 2 rondos are going to be the point scorer for them, the highest point scorer. Let's say they get 25, 30 maybe. I mean, if they can get 30 apiece in 2 of these, that's 60 points right there. So the next two matches, all they need to do is get 10. The next 4 matches, of course. If they get 10, and then it's going to be pretty easy for them to have a chance at the qualification. I mean, it might sound easy when I say it. Not as easy when these players jump into the map, when these players take on the world-class teams, world-class players, and MVPs out there. They are jumping down to the map of Rondo, ladies and gentlemen. This is Asia Battle Wars Chapter 3, Phase 3, day number 6 of the playoffs. Last day before we get our top 16, top 18, depending on the fan favorites, as we take a look at the flight path we're ending towards Mehran. ट्रू. एंड ये जो फ्लाइट पाथ है अच्छा लग रहा है टीम्स के लिए. अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क फैक्ट्री एंड टेस्ट ट्रैक, जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक हॉट ड्रॉप सिनेरियो. जेरेना सिटी, डांचिंग, टिंगलोंगारन and Yulin. I mean, the names are really suspicious, and sometimes मेरे को लगता है कि that I'm pronouncing them wrong. But I'll stick with Stadium and Test Track and New York's Factory. Really easy to pronounce for me. But still, Edge, New York's Factory. हम लोग को पता है कि वहाँ पर majority of the teams drop करती है. But Team 4 Tribes, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है जेरेना सिटी या फिर जो लिंक की तरफ जाना चाहते हैं. And right here, where they are exactly spotting down to. Oh, actually नहीं, New York's Factory पे यहाँ पर सभी टीम्स उतरेंगी. And 4 Tribes यहाँ पर पहली ऐसी टीम जो अर्ली स्कर्मिश के अंदर आ सकती है, एंगेजमेंट्स के अंदर आ सकती है. एंड देखते हैं यहाँ पर किस लम्हे के अंदर ये टीम्स फसल के आती हैं. अभी के लिए यहाँ पर रहेगा पहला मैच. सभी लोग अपनी सांस थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये है टीम 4 Tribes हमारी स्क्रीन के ऊपर. 4 प्लेयर्स DRX के खिलाड़ी, और एक और टीम रहेगी यहाँ पर होरा esports की टीम, जो न्यूयॉर्क फैक्ट्री पे नहीं आते थे. आज हमको होरा esports भी देखने को मिलेगी. दिनों की आज के दिन के अंदर आखिरी मैच रहेगा. So why not to put up everything? Gamble while going on New York's Factory. पहला नॉकआउट यहाँ पर आता हुआ IQ की तरफ से. AKM का कहर मचता हुआ. एंड इसके साथ में यहाँ पर टीम है DK aka डुप्लेक्स किया. That particular player is really low to the HP. को कभी भी यहाँ पर गिराया जा सकता है और घुटनों पर डाल के नॉकआउट करा जा सकता है. T24 OP. एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं IQQ की जुगलबंदी चलती हुई. एंड 2-on-2 के स्प्लिट से यहाँ पर टीम 4 Tribes फॉर्म करेगी. फलक यहाँ पर रूफटॉप पे टीम हो रहा है esports के उस प्लेयर के अकेले 1v1 में आएंगे. क्या फलक यहाँ पे लेता है? जी हाँ, बिल्कुल. AKM से क्राउच स्प्रे, और उसके साथ में यहाँ पर हेड फायर के साथ में एक हेड कनेक्शन, और हो रहा है esports का एक प्लेयर के चारों खाने शिट. Immediately starting things off on a good note here. 4 Tribes get the first elimination in under 3 minutes. 2 minutes after they dropped, of course. As 4 Tribes, I believe IQQ is joining the party here. DRX, on the other hand, looking good with 2 eliminations, but already 2 player bleeding. And APG, this is a very important game for them, so let's see if they can capitalize. But ASI 8 might be stealing a finish here. Maybe not. Oxy
Oh my god, he's on point! It doesn't matter if he's low, he will turn around and take one player down. One extra player, of course. Tiptoe also did get taken down, and now Hoxie. If he gets spotted by Falak, there's no way he survives it because of the position that he is in. And also Falak is feeling that, it's feeling really good right now. So DRX will go for the... Oh, I thought he was going to go for the confirmation there, but they immediately get the recall as well. So Hoxie will be back on his feet, but unfortunately they were unable to get any, elimination points in that fight. True. And 4 tribes के खिलाड़ी एक एलिमिनेशन लेने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा थमते हुए, उनको पता है प्लेयर्स के बारे में एक बारी इंटेल और इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, उसके बाद में यहाँ पर पुशिंग कर सकते हैं। बट एक बारी हम लोग यहाँ पर नजरअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टीम 11 3 एलिमिनेशन लेके गई है। टाइगर यहाँ पर एक्चुअली डाउन हो चुका है, क्या उनका रिवाइवल पॉसिबल है या फिर नहीं, वो देखते हैं। बट अभी टीम 11 तीन एलिमिनेशन के साथ में यहाँ पर कहर मचाती हुई, और ये रहेगी द जेवियर्स के खिलाड़ी, एक वियतनामी टीम अगेंस्ट एक कोरियन टीम के। टीम 11 स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर थर्ड पेज ऑफ द ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, बट स्टिल हम लोग को पता है दे आर रियली गुड एट मेकिंग कमबैक्स। टीम 11 कि आज के दिन के अंदर कुछ 2 चिकन डिनर्स 25 पॉइंट से ज्यादा और एक अच्छा कमबैक सेकंड पेज पे देखने को मिलेगा या फिर नहीं, देखिए खामियाजा नहीं तो भुगतना बढ़ सकता है। आई वॉन्ट ऑल दीज कोरियन टीम्स टू बी इन ग्रैंड फाइनल्स एज, इट्स गोना बी मच मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर कोरियन टीम्स रहेंगी जो कंपटीशन है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा इन वियतनामी, इन इंडोनेशियन टीम्स के लिए, इन पाकिस्तानी टीम्स के लिए। जब से यहाँ पर ये जो कोरियन टीम्स है हम लोगों को देखने को मिली है एज, the aura has been changed and you gotta agree with that thing, man. Comes to red forces in the third party scenario now. Function Red Force getting a couple more points and starting off the day on a very good note as they're on the verge of taking down another player here. It's 11 that are bleeding, that are suffering, that are struggling. And well, Longshim, they're strangling them to death at the moment. They will get a lot of points. There's 7, if I'm not wrong. There's 4 tribes. I mean, Falak is very low. Got to be careful. Ferrari might go for a quick peek and take one down, but Huzaifa is here as well. So the backup is good. And I think Huzaifa will let him pass at the moment. As Nongshim, I'm still taking on the players on the side of 11. I want to see how many points they're going to be accumulating later on. At the moment, 4 tribes. Everyone's just proning. True. And IQ, right now he's just proning, and let's see what will be the case scenario. SITE esports, Panther, SITE esports की तरफ से खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्या यहाँ पर रिकॉल रहेगा या फिर नहीं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फलक अपनी M416 के साथ में APG फेरारी को डाउन करेंगे एंड फिनिश ऑफ भी आ सकता है। मोलोटॉव यहाँ पर डाला जाएगा, ओवर एग्रेस नहीं करेंगे एंड मोलोटॉव्स के साथ में शायद से अपना किल को फाइनलाइजेशन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, APG का खिलाड़ी यहाँ पर बाहर होता हुआ। फलक इनके पास में यहाँ पर लेवल 2 की वेस्ट है एंड इट्स 100% गुड, राइट, नो डैमेज व्हाटसोएवर। एक हेलमेट में मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा शायद से बेटर रह सकता है। आर्मर्स यहाँ पर नहीं रहेंगे। रिफ्यूज की तरफ से बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर प्रीतम के ऊपर। SITE esports यहाँ से ब्लीड करती हुई 2 प्लेयर्स यहाँ से बाहर जा चुके। राजू AKA प्रीतम, हालांकि यहाँ पर उनका जो रिवाइवल है वो शायद से हो सकता है एज। क्रिप्टो भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी डुप्लेक्स किया। राजू ही इज आल्सो गॉन। SITE esports का आखिरी खिलाड़ी, क्या अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर पाएगा अपनी, क्या उनकी टीम अपने पैरों पर दोबारा से खड़ी हो पाएगी अपनी। टीम APG 4 ट्राइब्स एंड टीम डुप्लेक्स किया, इन्हीं के बीच में यहाँ पर न्यूयॉर्क फैक्ट्री में फाइट बनते हुए M249 यहाँ पर यूज करते हुए IQ। That M249, man, I mean, it's very, very scary and deadly too. And we've seen a lot of these, we've seen especially BTR use it in a perfect manner, if you ask me. They probably got the most outcome out of it. I felt like that M249 in the hands of BTR, any player, it's just scary. And in a situation like this, where you are, stuck in a corner, and you are forced to get out, and if that M249 is just shooting, and the bullets never run out, it feels like. So that is a scary situation to be in. But anyway, we'll see if those M249s are going to be coming in anytime soon. In play, of course. At the moment, it's just M4s and shotguns once again. Is the meta at the moment. We've seen a lot of these players stick to the shotguns, and look at T24 toying with the player out there. But gotta be careful as APG finally makes a move. Refuse takes Huzaifa down. Information comes in as well. A beautiful grenade. T24.
Oh boy, D plus Kia. I mean, you're not gonna be able to toy with them. Oh, IQ. इसके साथ में हमें Felix Solomon starting. No. Team 4 tries. Team 4 tries. All the 4 players that gone out of the match. Edge. First match. And 3 points. Oh no. It's going to be problematic for that team. It's going to be really problematic for that team in the overall standings. नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पर HORAA esports के ऊपर स्काई रहेंगे सोलोमन स्टार्टिंग स्काई को भी यहाँ पर ओपन के अंदर स्पॉट किया एंड डुप्लेक्स किया के प्लेयर्स यहाँ पर डोमिनेशन दिखाते हुए बट स्काई इज रियली लो बैंडेजेस यहाँ पर अप्लाई करते हुए 2K esports भी यहाँ पर सिनेरियोस के अंदर आती हुई एंड टीम्स ऑल अराउंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रोटेशन क्लासेस के अंदर फंसेंगे अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर एलिमिनेशन देखा टीम 11 का टीम 52 का टीम 52 हालांकि शायद से ज्वाइन नहीं करी थी लॉबी के अंदर द जेवियर्स टीम 4 ट्राइब्स होते हुए बाहर बट एज 4 ट्राइब्स दे आर गॉन they were at the 14th spot of the overall standings. I don't know इस मैच के बाद यहाँ पर कौन सी overall standings उनके लिए यहाँ पर accumulate होगी but still यहाँ पर इस मैच के अंदर capitalization नहीं आ पाया एज. That is unfortunate again. I mean, after yesterday's performance here on the map of Rondo, I thought maybe they finally found the groove again. And it's not even like they changed strategy. It was still the similar strategy, just that this got taken down. I mean, Deepal's here right now is feeling really confident. Along with APG as well. I mean, with 5 eliminations already into this one, they're looking good. It feels like they are going to be trying once again to get themselves a really good chance to get qualified to the grand finals. At the moment, Nongshin Red Force with 9 eliminations are going to be taking a bit of damage. But Alpha Gaming on the other part of the map, you can see that they're not going to stop anytime soon as they now divert their attention towards Deepal's here. But we will still hold on. We'll keep our eyes set on Nongshim as they get taken down. There's only one player left. They were traveling and Team Secret found them. All three goes in is Krypton. Astral K and इसके साथ में यहाँ पर पहला नॉकआउट यहाँ पर क्रिप्टॉन निकालते हुए रोजबेरी द बेस्ट टाइटल इन द वर्ल्ड राइट नाउ हाथ में रहेगी एक AUG एक शॉटगन का कॉम्बिनेशन आसपास यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बूम esports के खिलाड़ी पीछे से यहाँ पर विसिनिटी के अंदर HORAA esports and Sky HORAA that Solomon starting it's gonna be something interesting because with Solomon starting he will try to gather more and more elimination points to gather more and more placement points. स्काई HORAA क्या यहाँ पर अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर पाएंगे या फिर नहीं बट नो आई गेस बात करते ही करते यहाँ पर स्काई HORAA esports डाउन हो टू ही एंड स्काई HORAA ही इज गॉन आउट ऑफ द मैच वॉइन esports 6 एलिमिनेशन लोग पास में परे रहो अभी तक यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ एलिमिनेशन नहीं आया बट ये दोनों के दोनों एलिमिनेशन टीम PANDUM वर्सेस टीम VOIN esports इट्स गोना बी अ ग्रेट 4v4 I'm telling you Edge. VOIN, as I've already said, they might not be able to get a lot of chicken dinners, but they've always been one of the teams that have been dealing a lot of damage into the servers, into the games. As PANDUM, another team that has absolutely, you know, caught us off guard with their improvement coming in from phase 1. Absolute brilliant performance. And this 4v4 is definitely going to be versatile. Shout out to him, of course. We'll see at the moment. Team VOIN holding on, edge of the circle, stage 3 coming into play, 45 seconds. They still have a lot of time to work with. As VOIN might be retreating, or maybe not. Maybe they don't want to take the fight here, or maybe he just wants to get into a better position here. Zeta. Defiant's going out too. So I think the call has been made that maybe we'll, you know, take this fight in a different fashion. Not going to be engaging at the moment. As Nongshin, they're back to 4 players. All 3 go Eris. 4 eliminations, and the last surviving player is very, very low. जी हाँ बिल्कुल प्लेयर्स यहाँ पर लो होते हुए एंड वर्सेटाइल अपने आप ही व्हीकल के अंदर बट वर्सेटाइल विद प्लेयर इज एग्जैक्टली क्योंकि टीम PANDUM अभी तक यहाँ पर जो एलिमिनेशन पॉइंट्स का खाता है खुला नहीं है एज और भी ज्यादा एलिमिनेशन ले तो बेहतरीन रहेगा बट अभी के लिए टीम PANDUM कुछ मिस टू लॉन्ग रेंज के फाइट के अंदर फर्स्ट हुए डोमिनेशन यहाँ पर नॉन्ग रेड फोर्सेस के प्लेयर्स दिखाते हुए ए साइड राजू एके प्रीतम बेहतरीन ग्रेनेड और यहाँ से टीम ऑट्रिगोस बाहर होते हुए 19वें स्पॉट पर थे एज एंड यहां से
शायद से उनकी पोजीशनिंग और भी खराब हो सकती है क्योंकि तीसरे पेज पे थे एज एंड अभी के लिए ऑल्टर ईगोस दे आर गॉन एंड दे आर आउट ऑफ द मैच. Unfortunate turn of events. 97. They need what? 120, 125? We were hoping for. And if they don't make it to the grand final, it's gonna be really surprising and I can say disappointing too. D plus here, making sure that he absolutely gives no chance to the player there on the side of. I believe that was Boom. No, that wasn't Boom. That was Glue. That was Leon. Anyway, now Sandara in a lot of trouble as a grenade. Will be not good enough, but it will divert their attention for now. It's a 1v2 situation as another grenade misses out. There is going to be a revival now coming in. Sandara has to make a move. The revival is going to be on hold at the moment. It's a good spot. It's a great spot. The grenade might be enough. There you go. The confirmation comes in and now the player's very low too. Sandara, it's a perfect opportunity for you to strike as the bandage, the heal does not come in. He's closing in the distance. The zone is dealing a bit of damage too. Kibo and Keru, the only one standing here. Sandara pulls out the shotgun now, trying to close out the distance. Just be careful. Both of these players sticking up together. It's not going to be easy. Sandara manages to get one, but immediately gets taken down. Kibo barely surviving there. I thought they were going to be collided, but that wasn't the case. Sandara 2K tried his best. We'll be able to get one extra point for the team. Actually, maybe two. As Kibo also gets taken down. Oh, the play zone. Oh, the play zone being the culprit right now. Boom are also gone. Well, once again, nothing to worry about them in terms of points at the moment, at least. I mean, they also have not confirmed their slot in the grand finals. But top 10 teams now here in Inferno. 39 players. Stage 4 circle coming into play in the next few seconds. जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ में टीम्स अपना मजबूत कब्जा बनाती हुई रौनक मुकाबले के ऊपर. बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए साइड ई स्पोर्ट्स, एक प्लेयर यहाँ पे डाउन, और इसी के साथ में यहाँ पे शायद से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और बाजी कभी भी पलट सकती है. सो ए साइड ई स्पोर्ट्स देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर अपनी पकड़ बना के रखते हैं. नॉक्चम रेड फोर्सेस के प्लेयर्स ने सपोर्ट किया टीम पैंडम के खिलाड़ियों को, और टीम पैंडम के अगेंस्ट ये जो टकराव है वो स्टार्ट हो चुकी है. नॉक्चम रेड फोर्सेस खामियाजा इनको ना भुगतना पड़ा और ना भुगतेंगे, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर मुश्किलात के अंदर टीम पैंडम आ चुकी है. क्योंकि ये जो कोरियन टीम है भले ही बेहतरीन लगती हुई, बट XYZ यहाँ से डाउन हो चुके हैं. एंड TZ एक और ग्रेनेड यहाँ पर जाता हुआ. XZY, दिस इज नॉट गुड. सामने से और ग्रेनेड आएंगे. शाका क्या भी यहाँ पर ग्रेनेड जाता हुआ. सो यहाँ पर ग्रेनेड्स एंड यूटिलिटीज बहुत ज्यादा बेहतरीन. एक 2v1 एंड इट्स गोइंग टू बी अ 1v4 सिनेरियो. टीम पैंडम नॉक्चम रेड फोर्सेस के ऊपर एक फुल स्टॉप, एक विराम लगाती हुई, और इसी के साथ में यहाँ पर शोस इस गोइंग टू बी सोलो स्टार्टिंग अपनी तैयारी के अंदर गेट इन किया, बट नो इज गॉन. ही हैज बीन स्पॉटेड. टीम पैंडम एलिमिनेट करेंगे नॉक्चम रेड फोर्सेस को, और जो कोरियन डोमिनेशन है एक वहां पर फुल स्टॉप लगाया होगा. मतलब मेरे को लग तो रहा था कि बाजी पलट सकती है नॉक्चम रेड फोर्सेस के लिए, बट ऐसे this wasn't the case scenario happening. Team Pandum shot elimination. Nonstop Red Forces के अपने खाते में लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे इस मैच के अंदर, बट बेहतरीन प्ले वहां पर बनाया एंड टीम पैंडम काबिल तारीफ. That was incredible indeed. They do deserve some credit for that. 14 eliminations of Longshim, and they're going to be the first team to surpass that 200-point marker. As their side esports, Victor loses his life while he was traveling, and Panther, well, unfortunately, long range is going to be VOIN, dropping him down. ASI 8 gone in 9th position with only 2 eliminations. Their position on the overall is also not looking that good. 8 eliminations for VOIN right now are feeling like they could be one of the teams coming out on top. Team Secret do have 4 players as well, along with APG and WARGYE. I kind of do want APG to be the ones coming out on top. At the same time, WARGYE as well, because both of these teams still have a really good chance to make it to the grand finals. Both of these teams are doing well at the moment. 8 eliminations for Alpha Gaming. WARGYE surviving with 4 players, but D plus here, they're losing players thanks to Alpha Gaming here. Now the only surviving player is going to be Auto. They'll be going in for that revival onto Perico immediately. Alpha Gaming, if they're closing the distance right now, it's going to be a perfect opportunity for them to go for another team while making it to the top 7. But at the moment, the revival will come in. The heal will be coming in no time as well. जी हाँ, वो तो
जो दबदबा है, वो जो डोमिनेंस है, अभी यहाँ पर कोरियन टीम्स अपना शो तो कर रही है, बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डुप्लेक्स किया 6 एलिमिनेशंस यहाँ पर लेके गए थे एंड कैक से एक ऐसे सोलोमन स्टैंडिंग थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए 100% ऑफ द एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले। अभी के लिए अपनी फौज के साथ में जाएंगे जोन के अंदर एंड शायद से कुछ टाइल्स बर्स्ट ऑफ हो चुके, सो दे आर नॉट हैविंग गुड व्हीकल्स टू वर्क विद एज राइट नाउ। सो डुप्लेक्स किया, मैं बोलूंगा यहाँ पर कब्जा, वो जो कंट्रोल है वो दोबारा से पकड़ बनानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से एलिमिनेशन आएगा। जी हाँ, इसके साथ में यहाँ पर ऑटो को डाउन करेंगे एंड पोर्कियो सोलमन स्टारिंग को के बाहर पैंडम का एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, सीकेम के ऊपर स्प्रेस जाएंगे, बट यहाँ पर कोई भी अभी तक कनेक्शन नहीं आएंगे एंड बिकॉज़ ही इज आउट ऑफ द जोन, शायद से उनका गेम यहीं पर खत्म हो सकता है एंड मैं बोलूंगा जोन के बाहर डुप्लेक्स किया जाए, फिनिश ऑफ हो सकती है। टीम एपीजी 8 एलिमिनेशन लेने के बाद में यहाँ पर राउंड के ऊपर एक बेहतरीन गेम प्ले शो करते हुए एंड टीम एपीजी बहुत अरसे के बाद ऐसा कुछ गेम प्ले आप लोगों को टीम्स की तरफ से देखूंगा एशिया बालवर्स चैप्टर 3 के अंदर एंड टीम अल्फा गेमिंग द बैक ऑन द फीट्स नाउ। 8 एलिमिनेशन, क्या चिकन नजर आ रहा है या फिर नहीं? Alpha Gaming, as you said, you know, it's been so long since we've seen anything like this. It's been, it feels like finally our prayers are being answered. The last day of playoffs, Alpha Gaming stepping up like never before. Getting a double-digit elimination right there. Branky is going to be the one going down, and 10 eliminations for Alpha Gaming. 4 players still standing, which means they have 19 opponents in the server, divided into 6 teams. Sounds easy, but isn't as easy as it sounds, of course. But they do have still the side of Team Secret, who are absolutely dominant on the map of Rondo, so they got to be careful a little. VOIN also surviving with 3 players. I believe PANDUM might get taken down here. जी हाँ, वॉइन esports ये सोच समझ के लिया गया पुश, ये सोच समझ के लिया गया एक डिसीजन और दिखाता है कि कितने ज्यादा फ्लॉलेस एंड कॉन्फिडेंट टीम है अभी के लिए। बट वॉइन esports 9 एलिमिनेशन लेने के बाद में यहाँ पर जेटा डाउन होते हुए सामने अपनी डांसियां लगाएंगे, कवर प्रोवाइड किया जा रहा है प्लेयर्स को, एज दैट कवर यहाँ पर सीधा गाड़ी लगाएंगे, बट टीम सीक्रेट्स के लॉस वो यहाँ पर प्लेयर को फिनिश ऑफ किया जाएगा, एक प्लेयर का फटाफट किया जाएगा पटेटो के साथ में एक 1v1 अपोनेंट का एडवांटेज एंड इसके साथ में यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर 1v1 लिया गया है, उस टीम को बाहर किया जाएगा एंड टीम वाइन esports होते हुए एलिमिनेट। बॉगे के खिलाड़ी भी यहाँ पर जिंदा, बट डीआरएक्स का अगेंस्ट फाइट के अंदर मोला डाउन, डाकू डाउन, बॉगे का आखिरी खिलाड़ी, ही इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, डिसाइसिव पुश करना चाहेंगे अभी के लिए बॉगे। सो मच स्टार्टिंग, कैन दे सर्वाइव, कैन दे फ्रिकिंग सर्वाइव एंड आई गेस एज इट्स नॉट गोना बी हैपनिंग। टीम बॉगे दे आर इन अ रियली बैड कंडीशन। Team WARGYE with only 1 player standing. This is looking very hard for them, as they will lose another confirmation. WARGYE might be just down to just 1 player. The other bleeding player might get taken down too. I don't think the revolver will be coming in, and there you go. DRX will get another point in for themselves as APG with 11. As I said, 20 points are needed every game for them to have a really good chance. WARGYE are going to get taken down. DRX will get that point as well. We have down to now 4 teams, 14 players in the server. 21-minute mark about to, 21-minute mark actually hit. As Team Secret are probably going to be the next in line to go against Alpha Gaming, who actually does manage to get a knock there. Lolvu has to be careful. Alpha Gaming with the man advantage. If they go in right now, they can actually capitalize and maybe take down the players inside of Team Secret. But the split is really good coming from Trank and Lolvu. They can actually take down the entirety of the squad of Alpha Gaming. They're out in the open zone. What are you doing? Is this going to be a bold move or a bad move? At the moment, looks like it is bold enough. But is it decent? He comes out in the open. He's going to get taken down. Zone will be confirmed immediately. And there you go. The fine line between bold and bad. Unfortunately, at the moment, turns out to be a bad move. Team Secret, with 4 players standing, still, APG are now in a lot of trouble as they are going to be countered and third-partied by Glue as well. इस राउंड के मुकाबले के कुछ आखिरी लम्हात और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन टीम्स का इम्तिहान लिया जा रहा है एंड टीम एपीजी अल्फा गेमिंग के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन के अंदर डॉक नहीं खेल रहे, बट स्टिल यहाँ पर कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, जायल को यहाँ पर बाहर किया गया गेम से एंड लॉबी तक का रास्ता दिखाया जाएगा, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं
11 एलिमिनेशन का यहाँ पर इम्तिहान, और इसके साथ में यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन किया गया है। दैट प्लेयर इज ब्लीडिंग। क्या यहाँ पर रिवाइव हो पाएगा या फिर नहीं? रिफ्यूजन फरारी, ब्लूमन स्टार्टिंग, टीम सीक्रेट्स का भी प्रेशर आएगा, टीम डीआरएक्स का भी प्रेशर आएगा, एक वियतनामी टीम, एक कोरियन टीम, और ये जो टीम है यहाँ पर बीच में फंसती हुई सोलमन स्टार्टिंग फरारी अपने व्हीकल के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी तक यहाँ पे प्लेयर को स्पॉटिंग है। लालू क्या अपने फिनिश को कंफर्म करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, अपने एलिमिनेशन को कंफर्म किया जाएगा। टीम सीक्रेट से अपना आगे तरफ पुश करती हुई सोलोमन स्टार्टिंग फरारी, कैन ही क्लच इट ऑफ? बट द थिंग इज डीआरएक्स सबसे बड़ी मुश्किलात में यहाँ पर टीम डीआरएक्स डालेगी, टीम एपीजी, और इसके साथ में यहाँ पर टीम ब्लू ई-स्पोर्ट्स के साथ में एलिमिनेशन होता हुआ टीम अल्फा गेमिंग, दोनों ही टीम्स यहाँ से बाहर, टीम सीक्रेट्स एंड टीम डीआरएक्स, वन कोरियन टीम, वन वियतनामी टीम। टीम सीक्रेट्स भले ही ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन के अंदर टीम सीक्रेट्स अपना अगर गेम और दबदबा इस पहले मैच के साथ में कायम करके रखती है आखिरी दिन तक, आखिरी मैच तक, it's gonna be insane. But the thing is DRX, ये जो कोरियन टीम है रुकने का नाम नहीं लेगी, और स्पेशली झुकने का नाम नहीं लेगी। एच ये जो कोरियन टीम है ये अपना डोमिनेंस दिखाते हुए He got to be really careful. अपनी Lamborghini को भले घुमा तो रहे, but एक बुलेट का connection and player down, and that was a huge blunder incoming. That was a blunder of a decision. Team Secrets, they're surviving with 2. Team DRX surviving 4 with 4. Easy match. They have much more numbers, and Manjuke, he's gone in a 1v4. Taran, can he actually clutch it off? इम्तिहान यहाँ पे लिया जाएगा इस खिलाड़ी का। पहला प्लेयर स्पॉट किया, हेडशॉट कनेक्शन आता हुआ, पीछे से कवर फायर भी आएगा एस्ट्रोल के। ही इज रेनिंग सुप्रीम, पहला नॉकआउट, एंड ही इज गॉन, ही इज गॉन। टीम सीक्रेट्स सेकंड डिनर पास आते आते छूट गया, और इसके साथ में यहाँ से बाहर होती हुई, और इसके साथ में DRX कोरियन डोमिनेशन, रेंज स्टॉप, Korean domination still is there, and Korean team is coming on top and making that chicken dinner happen. Edge, it's DRX for you. 5 chicken dinners now to their name. Absolutely brilliant performance coming in from this squad. They are, they're a different monster right now. I mean, we were talking about Nongshim, we were talking about Alpha Gaming coming out on top, DRX. I mean, we kind of didn't really focus on them, but then they're like, you know what? You don't want to give us a spotlight? Well, we'll steal it. And well, now they are in it, and they want to keep it that way for a bit. 5th chicken dinner for them in the playoffs, and that itself is a great achievement coming in. And I do feel bad for Alpha Gaming, but DRX, they have been dominant ever since they showed up. Bro, that was a match. That was one hell of a match again. But Team 4 Thrives नजर डालते हैं हमारे मैच हाइलाइट्स के ऊपर, एंड जो भी ऑडियंस अभी यहाँ पर ज्वाइन करिए, देखिए आज के दिन के अंदर ये रहेगा हमारा आखिरी मुकाबला, आखिरी दिन प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स का। उसके बाद में हम लोग को हमारी मिलेंगी टॉप 16 टीम्स, 2 फैन फेवरेट टीम्स के साथ में, यानी हमारी टॉप 18 टीम्स जो एडवांस करेंगी हमारे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, जो रहेगा हमारा आखिरी ग्रैंड फाइनल्स इस एशिया बैटल चैप्टर 3 के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक 141 ई-स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए अभी जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतरीन मैचेस मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को भी कहीं देखने को मिलेंगे। दिस इज एशिया बैटल चैप्टर 3. लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द हाइलाइट्स नाउ. Well, if you take a look at the highlights, you kind of understand what went down. And this fight as well gave us hope for a second. I mean, Zandara did manage to take down one, did get a knock onto the other as well. It was a jumping shot yet again with the S12. You can see, I thought that was going to be enough. That collab was going to be enough, but just wasn't. Barely survived there. And I believe Zandara, if he would have gotten that, he would have survived. But Kibo, on the other hand, he didn't survive there. That was the end of him and the side of Boom Esports. And Nongshim, they started off really, really strong. They were in a position of power. They were in a situation where they could close out with a lot of elimination points going into this one. And once again, as I told you, the rivalry between Nongshim and DRX, well, it's building up, and it's kind of interesting to watch as well. So both of these teams are probably going to be trying their heart out to get to that #1 spot in the playoffs, to make a statement to other teams, make their way into the grand finals in the grandest way possible. True, man. Let's just have a look on the team stats now. DRX Gaming, the Korean team, reign supreme. दबदबा बनाते हुए और बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर पिछले गेम के अंदर दिखाया, and they just totally deserved it.
आखिरी लम्हात तक यहाँ पर इन लोगों ने अपना दबदबा बना के रखा और बेहतरीन चिकन डिनर लेके गए। एक बार ही नजर डालते हैं इनके पास कितने एलिमिनेशन थे। एंड Edge, I mean, I don't have to tell you, man. They just totally freaking dominated. बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने खेला और पिछले गेम के अंदर 12 एलिमिनेशन यहाँ पर लेके गए। एंड स्पेशली हॉक्सी 700 से ज्यादा डैमेज, टीआरई 400 से ज्यादा डैमेज, एंड एवरी प्लेयर दे जस्ट परफॉर्म रियली गुड। बट हॉक्सी, he was a nerve testing player. He was a nerve wracking player out there. But I guess Edge, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं टीम सीक्रेट्स का कोई खिलाड़ी आ सकता है एंड MVP का टैग लेके आ सकता है. What do you think? It's gonna be DRX or maybe some other player in the MVP. I think there are others. I think there are other players there for the MVP. I think Nongshim maybe. Oh Yeah, I no. mean Deep is here as well. There you go. He's gonna be the one coming out on top. The MVP. 6 eliminations, 1065 damage, no assist, 16 minutes and 54 seconds of survival time, 6 knocks, and 300 heal. He has been one of the consistent performers for the side. And well, he's been here before, and now he's gonna be here a lot of other times as well. True. And now we can see he is the MVP. And he just totally deserved it. एंड मैं बात करूं यहाँ पर टीम डुप्लेक्स किया के बारे में, भले ही यहाँ पर ये जो प्लेयर है इनकी टीम नहीं जीत पाई, बट स्टिल यहाँ पर डुप्लेक्स किया ने बेहतरीन परफॉर्म किया और इसी के साथ में यहाँ पर लेके जाएंगे MVP का टैग। मतलब हिम्मत है प्लेयर और डुप्लेक्स किया। सभी 4 प्लेयर्स की ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो जुगलबंदी है, बेहतरीन तरीके से हम लोग को देखने को मिलती है और कब्जा करके रखते हैं। वो जो कंट्रोल है, वो जो कमांड है, उसकी नींव नहीं छोड़ते हैं। इसके साथ में यहाँ पर डुप्लेक्स किया, देखिए ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर भी यहाँ पर टॉप 5 के अंदर है। सो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर मुश्किलात से टीम डुप्लेक्स किया को गुजरना पड़ेगा। सो देखते हैं यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर टीम डी के कैसे परफॉर्म करती है। एक बार हम लोग यहाँ पर जरूर नजर डालेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर, मैच रैंकिंग्स के ऊपर, मैच समरी के ऊपर। बट जो भी ऑडियंस अभी ज्वाइन करिए, जाइए जल्दी से जाके 141 esports को चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, और अगर आप लोग यहाँ पर हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स करा देते हो, सो विल बी इनिशिएटिंग दोस गिवअवेज बैक टू यू ऑल अगेन। जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं यहाँ पर हमारे टॉप 4 प्लेयर्स के बारे में। नॉक्शिम रेड फोर्सेस, टीम सीक्रेट्स के लॉलवू एंड टीम अल्फा गेमिंग के फोर्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे टॉप 4 प्लेयर्स के साथ में। एंड नॉक्शिम रेड फोर्सेस, हर एक प्लेयर यहाँ पर उनकी भी कोऑर्डिनेशन बेहतरीन, एंड स्पेशली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6 एलिमिनेशंस के साथ में लॉलवू भी यहाँ पर 6 एलिमिनेशन लेके जाएंगे, 5 एलिमिनेशन यहाँ पर फोर्स लेके जाएंगे। सो स्पेशली यहाँ पर मैं बोलूंगा Team Alpha Gaming, they are also back. Team Alpha Gaming, they are back in the circuit. कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा था कि Team Alpha Gaming, Team ABJ AK, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लैक कर रही है, एंड शायद से हो सकता है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वालिफाई करना टीम ABJ के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, राइट? But Team Alpha Gaming, I know what of a team they are. They hold a lot of caliber, man. I mean, that team, they are just invincible right now. Teams to watch out यहाँ पर next match के अंदर रहेंगे टीम नॉक्शिम रेड फोर्सेस, टीम अल्फा गेमिंग, टीम DRX, टीम सीक्रेट्स। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 कोरियन टीम, एक वियतनामी टीम एंड टीम अल्फा गेमिंग आउट देयर। एंड राइट नाउ टीम अल्फा गेमिंग, इज दैट राइट? 29 grenades they used? Oh no, that is just way too much, man. I mean 29 grenades। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने ग्रेनेड्स का यूज किया। टीम नॉक्शिम रेड फोर्सेस, एक स्मोक, दैट माइट बी रॉन्ग, क्योंकि हम लोगों ने देखा टीम नॉक्शिम रेड फोर्सेस को बहुत सारा एक स्मोक स्क्रीन बनाया उन्होंने। देखते हैं हम लोगों को क्या सिनेरियोस देखने को मिलते हैं नॉक्शिम रेड फोर्सेस की तरफ से अगले मैच के अंदर। मैच समरी हमारे स्क्रीन के ऊपर, 94 टोटल एलिमिनेशन, 11 ग्रेनेड एलिमिनेशन, 1 एयर ड्रॉप लूटा गया था, 1 व्हीकल एलिमिनेशन इनकमिंग, एंड होरा esports के जिगल लेके जाएंगे लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन पिछले मैच के अंदर। नजर डालते हैं एक बारी एक दफा हमारे मैच रैंकिंग्स के ऊपर। DRX की टीम लेके जाएगी 22 पॉइंट्स, 22 पॉइंट्स का टाइटल। अल्फा गेमिंग लेके जाएगी 17 पॉइंट्स, टीम सीक्रेट्स लेके जाएगी 15, नॉक्शिम रेड फोर्सेस 14, एंड बाद बाकी टीम्स यहाँ पर उनके पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। एक बार नजर डालते हैं हमारी ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर। ये रहेगा फर्स्ट पेज, होरा esports, यहाँ पर टॉप 9 के अंदर 4 टीम्स, कोरिया से 3 टीम्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, इंडोनेशिया से 1 वियतनामी टीम जो रहेगी टीम सीक्रेट्स। हर एक टीम इस पेज के ऊपर बेहतरीन परफॉर्म करती है, कोऑर्डिनेशन से लेकर स्ट्रेटजीज, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग हैज बीन गुड। एंड इन लोगों ने जो इनका इम्तिहान चल रहा था उसके अंदर
उस टेस्ट को पास किया एंड उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टॉप 9 के अंदर। देखिए आज के दिन के अंदर अगर मैचेस भी ना खेले ना ये लोग, दे विल बी देयर, अपने स्पॉट को नहीं छोड़ेंगे एंड वहीं पे अपने स्पॉट को कायम करके रखेंगे। नजर डालते हैं हमारे सेकंड पेज के ऊपर एक दफा, क्योंकि टीम फोर थ्राइव्स, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले मैच के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स मिले थे, 14 पोजीशन के ऊपर थे, 14th पोजीशन के ऊपर थे एंड अगले ही गेम के अंदर यहाँ पर एक पोजीशन और ऊपर चली, सिडनी के ऊपर एक और कदम लिया गया है एंड इसी के साथ में दोबारा से यहाँ पर अपनी कमांड बना के चलेंगे फोर थ्राइव्स। दिस इज रियली गुड, 127 पॉइंट्स, 101 टोटल एलिमिनेशन हम लोगों को उनकी तरफ से देखने को मिले एंड दिस इज गोना बी द थर्ड पेज ऑफ द ओवरऑल रैंकिंग्स, जहां पर टीम ऑल्ट्री इक्वल्स 2K esports, टीम BOG, टीम HKG, टीम अल्फा गेमिंग, SIT esports, टीम ब्लू, टीम 11 एंड टीम 52 esports स्ट्रगलिंग एंड मैं बोलूंगा यहाँ पर अगर आज के दिन के अंदर ये लोग कमबैक नहीं कर पाते हैं सो दे आर गॉन। देखिए let's be a little bit optimistic, I mean optimistic as well, but let's just be a little bit practical and realistic as well. For teams HKG, Alpha Gaming, SIT esports, team Blue, team 11 and team 52, the game is over. And especially team WARGYE, शायद से हो सकता है the game is over for them as well. Maybe अगर एक चिकन डिनर ले लेते हैं अगले आगे समय के अंदर 25 पॉइंट से ज्यादा, तो फर्स्ट पेज के अंदर विद स्नैप पहुंच जाएंगे। But the thing is, team Outriggers and 2K esports वो भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगी एंड हो सकता है यहाँ पे टीम Outriggers and 2K esports में से कोई सी भी टीम टॉप पे ऊपर जा सकती है एंड they can be in second page and top 8. So anything is damn possible and मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऑडियंस को, यहाँ पर A-Side esports को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है and everyone needs them to be there in those grand finals and नजर डालेंगे हम लोग यहाँ पर टीम SIT esports के ऊपर कितने सारे वोट्स रहेंगे एंड कितने ज़्यादा वोट्स उन लोगों ने अक्यूमुलेट किए हैं एंड फैंस ने उनको कितना सपोर्ट किया है। ओवरऑल MVP के ऊपर नजर डाले तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फेडलेस, नॉनस्टॉप डेड फोर्स का वो खिलाड़ी हॉक्सी DRX से, टीम RQ के फायर एंड नो फियर टॉप 5 MVPs बनते हुए यहाँ पर अभी के लिए एंड मतलब जबरदस्त मजबूत कब्जा यहाँ पर अभी तक फेडलेस बना के रखेंगे एंड उस कब्जे को छोड़ेंगे नहीं, यही कंट्रोल बना के रखना पड़ेगा एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 46 एलिमिनेशन विद 48 नॉकआउट्स फेडलेस यहाँ पे लेके गए। Absolute monster of a performance. Along with him, there are a lot of other names now coming in to the overall MVP as we take a look at the fan favorite teams. Fourth Rise once again running away with the gap at the moment with 26.7k votes. DRS 22.7. That's a 4,000 difference between them. 4,000 plus, of course. ASI 8 in 11,000 votes, almost hitting 12. HORAA esports on 7,000 plus as well. And all of these teams. So you can see, you can take a look at your screens, and if you want to vote for your favorite team, all you need to do is type in hashtag your favorite team's tag in the chat. The teams with the top, top votes, top 2 teams will be qualifying to the grand finals, regardless of their position on the overall standing, regardless of how many points they have. They will be making it through to the grand finals. So, top 16, top 18 will be decided henceforth. I mean, it's up to you guys to vote for the team that is struggling, or you can just go vote for your 4th Rise and DRS, who, by the way, once again, will be qualifying regardless. True. I mean, they will be qualifying regardless, and I mean, still as we can see DRS, they are having a lot of points, and Team 4 Thrives, they are also having a great points as well. And I mean, we are done with all these matches. I mean, not all the matches actually. We are done with the 5th day, right? And now it's going to be the last day itself. I mean, I'm still stuck with the day number 5 because yesterday the matches were really good. Right, and yeah, that is true. Especially today, it's going to be the last day. So we know the teams will be performing the best case scenario now, and I mean, the audience watching out there, hopefully you guys are having fun and you guys got some of the snacks and popcorns for you all. क्योंकि देखिए आज के दिन भी बहुत ही ज़्यादा लंबा होने जा रहा है। आज के दिन हम लोग को हमारी टॉप 18 टीम्स देखने को मिलेंगी। So जाइए, get yourself some snacks and subscribe to the channel now because the intense matches are still remaining. 5 और matches हमारे पास आज के अंदर बाकी हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इरागल का मैप। पहला मैच
यहाँ पर टीम सीक्रेट्स अगेन दे वर रियली क्लोज. एज कल भी यहाँ पर दे वर रियली क्लोज टू मेक अ चिकन डिनर ऑन द मैप ऑफ रैंगल, बट स्टिल यहाँ पर रोंडो के मुकाबले के ऊपर भी डीआरएक्स के अगेंस्ट मैं बोलूंगा एक छोटा सा गलत डिसीजन आता हुआ, जिसकी वजह से वो जो अपनी व्हीकल को रिवॉल्व कर रहे थे एंड उस व्हीकल से घूमने का ट्राई कर रहे थे एंड स्काउट करने का ट्राई कर रहे थे प्लेयर्स को, दैट टर्न आउट टू बी अ मैसेकर ऑफ अ प्ले. एंड इसके साथ में अपनी टीम सीक्रेट्स होती हुई बाहर, बट खामियाजा उनको भुगतना पड़ा. बट दूसरी टीम जो थी डीआरएक्स कोरिया से, उनके पास में एक एडवांटेज, उन्होंने लिया उस एडवांटेज का पूरा फायदा लेके गए रोंडो के मुकाबले के ऊपर चिकन डिनर. नेक्स्ट मैच होने जा रहा है यहाँ पर रैंगल का. All these Korean teams, man. I mean, Edge, I don't even have to say anything about them. From the day one itself of this phase, we knew कि अगर यहाँ पर कोरियन टीम्स के पांव आए हैं तो इधर से हम लोग जो डोमिनेशन है, इधर से जो कंपटीशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, वो जो इंटेंसिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर हमेशा बात करते हैं, उसका ग्राफ और ऊपर जाता जाएगा. एंड ऐसे ही यहाँ पर कोरियन टीम्स परफॉर्म करती जाएंगी. तो मैं बोलूंगा एज द ग्रैंड फाइनल्स इज लुकिंग गुड एंड द स्टोरी लाइंस फॉर ग्रैंड फाइनल्स it is going to be interesting than the previous one itself. I mean, definitely, it feels like you know, with the addition of Korean teams into the mix here, with an already chaotic group red coming in, right? It's looking good. It's looking good, and it's looking spicier than ever. Now, because Korean teams, it feels like they're not just good with the firepower; they're also coming with good strategies. Now, they're outplaying everyone. I mean, between Nongshim and DRX, they have 9 chicken dinners. That is absolutely bonkers between both of these teams. So, coming in, going into the next few matches, I mean, Erangel, we've already seen Team Secret, how good they were on one of the matches yesterday. I believe 23 eliminations is what they were able to get on that one match. That was pretty spectacular, not gonna lie. It wasn't even Rondo, it was Erangel, which was why it was spectacular even more. So coming in today, hopefully we get to see something similar. I'm looking forward to see if Alpha Gaming can keep up with the consistency that they just performed here on the map of Rondo. Right, I mean, along with WARGYE, they didn't really get a lot of eliminations, but this is going to be a very important matchup for them. They need to step up. They need to pick up the pace. If not, I think it's over. But I think for the side of 52 Esports and 11, I'm so sorry to say, but it's the end of the road for you boys. It just feels like and now, with the situation that they're in and situation that other teams are in terms of qualifications, I think it's over. I think it's looking grim, and I think the sun is setting on them. But for the other teams, there's still hope. Alpha Gaming, WARGYE, ASI 8 as well. So all these 3 teams are gonna be at least my main focus for the rest of the 5 matches here today. If any of these teams can make it through, I mean, see, here's the thing. Unfortunately, still, Boom and Alter Ego Ares, they also need to have enough points to qualify. They're still not hitting that 120 mark, which is kind of surprising. I mean, Boom usually are the ones on number 1 spot on Phase 1 and Phase 2 playoffs. Alter Ego, Phase 1, they struggled, but Phase 2, as soon as the Rosemary came in, they were on a different level and they also qualified with no problem. But now, it feels like problem's their middle name. I mean, yeah, absolutely. I mean, the problem is going to be the middle name as well, and especially fourth raves. They are also being in a very problematic situations. So let's see, Edge, यहाँ पर क्या scenarios team fourth raves and in teams की तरफ से देखने को मिलते हैं. Especially we are emphasizing on team fourth raves because यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा struggle कर रहे हैं. देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा था कि फर्स्ट पेज पे हो सकते हैं, बट स्टिल दे आर रियली क्लोज, बट येट टू फार बीइंग ऑन द फर्स्ट पेज. पिछले मैच के अंदर यहाँ पर मैं बोलूँगा जो चिकन डिनर था वो हाथ से फिसला, एंड न्यूयॉर्क फैक्ट्री पे यहाँ पर जो दबदबा था, जो कायम बना के रखते थे, वो अभी तक नहीं देखने को मिला. नेक्स्ट मैच होने जा रहा है रैंगल का और दूसरा मुकाबला आज के दिन का. वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट मैप्स इन द गेम ऑफ PUBG Mobile after Miramar. Of course, I love Miramar more, but Rangel, we all started our journey on the map of Rangel, right? And स्पेशली मैं देख सकता हूँ एज यहाँ पर आज के दिन के अंदर जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं एंड जितने भी ऑडियंस हैं, आज एसआईटी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसआईटी स्पोर्ट्स थर्ड पेज पे है. एज आज के दिन के अंदर जब हम लोग अंत करेंगे, जो आज का दिन है जब हम लोग खत्म करेंगे, अगर एसआईटी स्पोर्ट्स के पास में डीआरएस से ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स होंगे, इट इज गोना बी इनसेन. क्योंकि एसआईटी स्पोर्ट्स भले ही यहाँ पर थर्ड पेज पे, स्टिल उनके फैंस उनके लिए खड़े. I mean, ASI 8, they have good fans, as we've already seen.
and they have good, good potential to actually make it to the grand final. So now these games are going to be very important for them, and I'm hoping to see them qualify, without needing the help of the fans. But if not, well, you guys watching the stream right now, both tribes and DRS will qualify regardless. But if any of you guys out there are waiting to see ASI 8 in the grand finals, if any of you guys are hoping to see them, well, it's time for you to become little keyboard warriors. Hashtag ASI8 in the chat. Once again, we've seen you guys do that before. We've seen you almost, help HORAA Esports with the qualification in phase 2. Well, it's time for you. I mean, we have more time this time. So ASI8, I mean, I'm pretty sure the team is counting on you guys, the audience. It's time for you to help them qualify, if and only if they don't qualify through the point system. Looking at the flight path, we start off at Stalber, ending towards Quarry and Primorsk. Looking at the way these teams are dropping by, you can look at WARGYE. They're literally just spreading all over like virus at this point. Stalber, Kameshki, everywhere they can think of. This is going in. And HORAA actually not dropping towards Yasnaya. Oh, looks like they only want to go there if Flash is there. Otherwise, they don't really want to go towards that region at the moment. Or maybe they do. Maybe they do. Maybe they do. They're actually getting themselves a vehicle. But we'll see where the circle is. And pretty decent circle. Pochinki is still in it. But of course, Pochinki, I mean, it's always going to be there. All three areas, they lose players. What? True. And now again, आप लोग यहाँ पर एक बारी नजर डाल सकते हो क्वेरी के आसपास और गाटका के बीच में आज जो फाइट है, ये जो इनिशिएशन है यहाँ पर होता हुआ द जेविस के खिलाड़ी पोशिंग के ऊपर टीम पैंडम उन लोगों के आसपास, बट द थिंग इज टीम 2K esports यहाँ पर फाइट डाउन सिनेरियोस के अंदर आती हुई है टीम 2K esports. दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग राइट नाउ. नजर डालेंगे हम लोग इन टीम के ऊपर क्योंकि जो 4v4 एंगेजमेंट है स्टार्ट होती हुई आरकाल यहाँ पर एक्चुअली AFK है 2K esports की तरफ से. सो एज मे बी शुरुआत से एक डिसएडवांटेज क्योंकि प्लेयर उनका नहीं है. सो दिस इज गोना बी रियली बैड अगर प्लेयर नहीं रहेगा. सो एक 3-man स्टैंडिंग के ऊपर इनकी जो टीम है कन्वर्ट हो चुकी है. 17 टीम्स इन टीम 52 दे डिड नॉट जॉइन इन अगेन. सो मैं बोल सकता हूं they won't be joining any sort of matches today, and it's really bad to see, man. I mean, I still miss Agent 47 क्योंकि बेहतरीन उन लोगों का उनका गेम प्ले एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं. बट अभी के लिए यहाँ पर वो जो खिलाड़ी है हम लोग को नहीं देखने को मिलेंगे. अभी के लिए यहाँ पर प्रिमॉस्क सब कुछ शांत, कोई भी ओपनिंग नहीं, कोई भी एंगेजमेंट्स नहीं. 2K esports UMPs रहेंगी, एस्ट्रल केस भी रहेंगी एंड आई गेस QBG भी है सोंदारा के पास में. Sondara, this player, was really close to make a 1v2 into the previous one. And Arkar, where is that player is right now? क्योंकि वो जो player थे वो disconnected थे आज. So देखते हैं यहाँ पर कितनी जल्दी अपनी टीम के साथ में reunion कर पाते हैं. But अभी के लिए यहाँ पर टीम VOIN esports के पास में एक sudden advantage. Alter Egos, उनका एक player down. DRX, उनका एक player down. So we started losing players from start itself, Edge. Yeah, I mean, this team that's just absolutely struggling at the moment. Losing players, at least in terms of, I mean, yesterday we've seen Alter Ego lose 3 players quickly. It was thanks to Rosemary that they were able to take down 4 tribes. Otherwise, he would have also, gone down there, and they would not have gotten any points into that one. Those 4 points were the only ones they could get, and those 4 points are what helping them right now reach that 100, reach that qualification points. They're at 97 right now. They need more. 50 esports, they understand the situation and they're not even joining the party. But Nongshim getting one. And once again, the rivalry between them and DRX is carrying forward, and it's absolutely lovely to watch them take on each other pretty early, because once again, not a very important game for both of these two teams because they will be qualifying regardless. But it's fun to watch them go head to head. जी हाँ,
एंड आर्टफल शायद से दोबारा से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सौंदारा के ऊपर कुछ शॉट्स आते हुए एक छोटा सा हेड फिनिश हम लोग को देखने को मिला। सौंदारा नो पोटैटो, उनकी पोजीशनिंग रीति नहीं हुई थी। गुड डॉट अपने रेड डॉट के साथ में यहाँ पर प्लेयर को स्पॉट करने का ट्राई करेंगे। अगर 3x होता तो मैं बोल सकता था शायद से थोड़ा बहुत बेहतरीन हो सकता था, बट किस्मत अभी के नहीं यहाँ पर सौंदारा के साथ में उनके साथ कायम नहीं। एंड सौंदारा होते हुए बाहर गेम से एक और प्लेयर, एक और खिलाड़ी अभी तक का रास्ता पकड़ते हुए वन ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजन कर चुके हैं। और कॉल दिस प्लेयर इज रियली बैक। एकेएम का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे यूज करते हुए वन ई स्पोर्ट्स अगर प्लेयर यहाँ पर ओपन के अंदर आएंगे तो लाजमी तरीके से आप शॉट्स लिए जाएंगे। एंड शायद से खामियाजा वन ई स्पोर्ट्स के कभी ना कभी एक खिलाड़ी को भुगतना पड़ सकता है। पोटैटो अपने व्हीकल को यहाँ पर घुमाते हुए शायद से प्लेयर के साथ में दोबारा से रीयूनियन करेंगे। एज बट द थिंग इज जोन से भी यहाँ पर दूर है। जोन के बाहर रहकर ज्यादा फाइट्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो मे भी हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वन ई स्पोर्ट्स या फिर 2K ई स्पोर्ट्स इस फाइट को बहुत ही जल्दी रैप करना पड़ेगा या फिर रिट्रीट करना पड़ेगा। दोनों में से एक ऑप्शन कुछ ना कुछ हम लोग को इन लोगों को निभाने पड़ेंगे। शायद से पुश करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, दे वांट टू रैप द फाइट्स अगेन। वन ई स्पोर्ट्स क्लोजिंग कर टू एंड क्या यहाँ पर 2K ई स्पोर्ट्स इस फाइट के अंदर जीत पाएंगे या फिर नहीं, वो देखने वाली चीज रहेगी। प्लेयर को किया गया बाहर। इसके साथ में वॉइन ई स्पोर्ट्स दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया। 2K ई स्पोर्ट्स बाजी पलटती हुई इस टीम के लिए। 2K have lost 2 players already. This is an unfortunate situation for them. As VOIN are looking good now with 2 eliminations. They're still standing tall with all 4 players. As this part of the map feels like it is the home for VOIN at the moment, as they will catch Koda 2K off guard too, and now it all comes down to Lele Boy 2K. In a 1v4 where he gives away his position, I don't think he can survive for longer periods there, as DRX have already lost Hoxie, their star player. They're safe for the moment. There's no one in the vicinity. As we take a look at VOIN once again, trying to take down the player on the side of 2K, that is Lele Boy. Last man standing, but for how long? I think this grenade is going to be the end of him. Maybe not. Zera actually taking a bit of damage there, coming in, and now the players are going to be rushing in, going in, closing the distance between them and Lele Boy, and Poxy 5 will be the one dropping him, putting the final nail in the coffin as 2K. They get taken now, and no eliminations as VOIN. They start things off once again on a very good note. 4 eliminations to their name. हाँ बिल्कुल, वन ई स्पोर्ट्स बेहतरीन हिकमत आमले, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लेक्स किया अभी के लिए कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है एज। सो मे भी हो सकता है मुश्किलात के अंदर टीम्स आ सकती है, क्योंकि डुप्लेक्स किया अगर हम कोई भी कोरियन टीम के बारे में बात कर रहे हैं और उनके पास में एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है पहले ही जोन से, इट इज समथिंग नॉट गुड। क्योंकि ट्राई करते हैं शुरुआत से एक एग्रेसिव अप्रोच निभाने का। स्ट्रेलबर एंड कामिश्की से यहाँ पर वार्गे की टीम रोटेट करती हुई जोन के अंदर टीम होरा ई स्पोर्ट्स शायद से उन लोग के अगेंस्ट गेट कीपिंग सिनेरियोस बना सकती है। सो देखते हैं कैसे रोटेशंस आती हैं एंड क्या सिनेरियोस उन लोग के लिए बिल्डअप हो सकते हैं। बट डुप्लेक्स किया जोन के अंदर एडवांटेज उन लोग के पास में पहला ही स्टेज है, पहला ही फेज है, एंड साथ ही साथ में डीआरएक्स की भी टीम, दो कोरियन टीम, दो बिग जायंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट कभी भी एक क्लैश ले सकते हैं। ये जो 4v4 फाइट है कभी भी इनिशिएट हो सकती है। एज व्हाट डू यू थिंक इन दिस मैच हम लोग यहाँ पर कौन सी टीम चिकन डिनर लेके जा सकती है? एंड लेट मी आस्क यू, नॉट टीम बट रीजन, डू यू थिंक वन मोर टाइम द कोरियन रीजन इज कमिंग ऑन टॉप? I feel like, yeah, but one of the Korean teams might come out on top. But as I said, I'm hoping for WARGYE or APG or even ASI8 to maybe actually be the ones securing themselves a chicken dinner. That's probably what I want to do. That's probably what I want to see. But I mean, there's always a really good chance that one of the Indonesian teams or the Korean teams always come out on top. They've been, proving their point ever since. And I think there's a really good chance that today might once again be one of those days where they will just dominate both Korean and Indonesian region. But as I said, Pakistani region yet to get a chicken dinner. So hopefully this game will be a really good chance for them, as WARGYE, ASI8 and 4 Tribes all survive with 4 players at the moment. जी हाँ बिल्कुल, दूसरा फेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, दूसरा स्टेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड शदीद मुकाबला हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंटेंसिटी यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बट द थिंग इज होरा ई स्पोर्ट्स, देखिए एक ही एलिमिनेशन है जिन लोगों के पास में, एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं होरा ई स्पोर्ट्स के आसपास कुछ टीम्स बंडर आती हुई
अभी के लिए HORAA esports हम लोग देख सकते हैं ज़ेवियर्स की टीम PANDUM की टीम इन लोग जो सामने ये साइड esports बूम esports सो HORAA esports भले ही यहाँ पर डेड सेंटर लेने का ट्राई कर रहे हैं जोन का बट इन लोगों के कंपाउंड के ऊपर इन लोगों के स्क्वाड हाउस के ऊपर स्लैमिंग्स आ सकते हैं because they are going to be the center of attraction right स्क्वाड हाउस में अपने व्हीकल्स को पार्क करेंगे और उसके साथ में शायद से इधर या होल्ड करने का ट्राई करेंगे कुछ एमिनेशन और मिल जाए कुछ और रिसोर्सेस मिल जाए तो बेटर हो सकता है टीम बॉगे फाइट के अंदर आती हुई टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट एंड जो टकराव है स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम बॉगे शायद से उनको ये मुश्किलात की सिचुएशन बनते हुए टीम फोर्थ राइड्स फाइनली पहली फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एनालाइज किया एंड अपना असाइनमेंट जरूर करके आए हैं एंड ये जो एनालिसिस था बेहतरीन टीम आईक्यू की तरफ से एंड टीम फोर्थ राइड्स की तरफ से क्योंकि उनको पता था टीम अल्फा गेमिंग आएगी इस रीजन से एंड क्यों ना यहाँ पर हम लोग करें कुछ ब्रिज होल्डिंग एंड एक एलिमिनेशन अपने खिताब में लेके जाएंगे जी हाँ बिल्कुल इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं शाका शहीद होते हुए इस गेम से एंड शाका को बाहर किया जाएगा और भी ज्यादा प्लेयर्स टीम 11 स्ट्रगल कर रही है तो पेस के ऊपर टीम 11 आज के दिन के अंदर कम बैक कर पाएंगे या फिर नहीं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नामुमकिन सा वो कम बैक हो सकता है बट स्टिल इट्स येट पॉसिबल एंड मुमकिन उसको कर सकते हैं टीम पैंडम ग्रेनेड्स इन लोगों के पास में आएंगे पुम्बा अभी हाथ में देगी एक शॉटगन विद असॉल्ट राइफल टीम 11 क्या रिटेलिएशन आएगा जो कि शाका का जो किल है उसको फाइनलाइज करते हुए 11 unfortunately with no eliminations at the moment. They've already lost one player and now holding on to their ground as WARGYE have already lost 2 players. This is looking unfortunate once again for them to start here for 11-2. The only Korean team that has been struggling for quite a bit now. 11-minute mark into the game. 16 teams, 58 players here. The only team to go out was 2K. As you have teams like Boom, once again, will go for that strategy where they can actually just go for the play where they will have all 4 players standing towards the end and hopefully get the chicken dinner. They only need one good game to get themselves to do a qualification point, a qualification threshold. Alter Ego Ares, they also need around 23 points in the next 5 games, including this one. So all of these teams, it's looking really scary because now it's going to come down to the last few games. Who's going to be the one coming out on top? Who's going to be the one qualifying? And by the margin, what difference? Is it 1-2 points? Because that would be heartbreaking. जी हाँ बिल्कुल टीम Alter Ego Ares यहाँ पर कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोग पास में नहीं मिलते हुए एंड एज कभी भी Alter Egos जवाबी हमला देख सकती है इन टीम्स को क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम फोर्थ राइव्स के अगेंस्ट एक रोटेशन क्लैश हम लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है सो टीम फोर्थ राइव्स एंड टीम Alter Egos दे गोना बी रियली केयरफुल एंड कॉशियस कभी भी फाइट इन लोग के अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती है एंड I saw it right you saw it right an AWM incoming HORAA esports finally I love those bull rifle actions incoming those AWMs man. AWMs are going to be something to keep an eye out for as WARGYE, they get taken out. Unfortunate, no eliminations, but let me ask you this. Who do you think is going to be the one coming out on top? Because at the moment, WARGYE are also gone. Now the only hope for Pakistan region are 4 tribes and ASI 8. But regardless, what do you think? Who do you think is going to be the one coming out on top? Hey, come on, non-shimmed forces. I mean, we're never non-shimmed forces. I'm never going to be getting wrong. That team, they're looking good, and especially Edge. You can see that non-shimmed forces. They cross 100 and 210 pointer. This is going to be the first team cross 200 pointer mark. So I mean, it's pretty obvious, right? Team NS gotta stick with the boys. Well, we'll see if that is going to be the case. If they are going to be the ones coming out on top. Looking at the way things are going though, with 15 teams and 55 players, there's a lot of gunshots, there's a lot of bullets being fired, there's no real capitalization, but boom, how did this happen? They've lost a player. Now that gives away their whole strategy, now their whole strategy is in shambles. So now they have to think of something different. That was Boom, right? That wasn't Boom? No, I don't think that was Boom. Wait, what?
that wasn't. Okay. And Uh, right now, Edge. Yeah, go on. I mean, you do have some confusions coming in, I guess. But I mean, सभी confusions यहाँ पर अभी के लिए दूर हो जाएंगे क्योंकि DRX एक और Korean team, Hawks and TRE, both of the players are gone. Vinny is going to be the Solomon standing, हाथ में एक shotgun, and VOIN esports का कहर मचता हुआ निशानेबाजी देखिए अभी यहाँ पर टीम VOIN esports के कितनी बेहतरीन आती हुई, and aims they are looking good. Potato हाथ में देखिए एक UMP close range के अंदर एक submachine gun use करते हुए Vinny, he's got DRX होते हुए बाहर, DRX की टीम होते हुए एलिमिनेट, नॉकचिम रेड फोर्सेस टीम डुप्लेक्स किया, दे आर स्टिल सर्वाइविंग. ये दोनों कोरियन टीम्स का यहाँ पर चिकन डिनर ले पाएंगे या फिर नहीं. एंड स्पेशली एज मैं अगर बात करूँ एक टीम की जो रहेगी टीम 11, दे आर फ्रॉम कोरिया एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कंटेंडर्स इन दिस लॉबी राइट नाउ. इट्स गोना बी टीम 11 बट स्टिल एज यहाँ पर मैं बोलूँगा टीम 11 मुश्किलात से गुजरते हुए, एंड वो जो ऑल्टरेशन है वो नहीं आ पा रही है, वो जो एडेप्टेशन है वो नहीं आ पा रही है. टीम 11 जैसे हम लोग इस स्ट्रीम के बारे में बात करें, टीम अल्फा गेमिंग इनके ऊपर करेगी थर्ड पार्टी फ्रंट एंड के ऊपर हम लोगों को देखने जाएगी टीम सीक्रेट. डाउन, जी हाँ बिल्कुल, जेर भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, एंड टाइगर इज गोइंग टू बी सुपर स्टार्टिंग एंड आई डोंट थिंक ही कैन सर्वाइव हियर. Oh, the last man standing for how long? DRX are gone. They're on the verge of getting the 200, but they're going to be taken down too. Now looking at the way things are going on from here on forward, Longshim feels like they are in a lot of trouble too. D Xavier, I thought maybe they were going to be the ones putting the screws to them, but looks like they are in a lot of trouble themselves, as they will lose another player. They're down to just one, and Longshim, they can go for the rival onto one, so they'll be up to 3, but it's still not enough. Both tribes now finally making some moves as they get 3 eliminations into their favor. If they find Russell, that's a team wipe. As 11, they lose another. They're down to 1 as PANDUM bleeds. That team Alpha Gaming, with just 2 players standing, no eliminations. Now they're losing players as well. This is one of the important games for them. They need to get up to numbers. They need to get a lot of numbers. As Sky, the last one standing on the side of HORAA Esports, against Strang on the side of Team Secret. Gotta be careful. And the shotgun is just too good. It's just too good. Just on the team right there in the vicinity as Russell gets a grenade frag onto 1. ASI 8. They're getting some numbers too. Team Secret, they will eliminate HORAA Esports. But there's been immediate third party by Boom Esports. जी हाँ, नंबर्स एक्यूमुलेट होते रहे. नॉकचिम रेड फोर्सेस के खिलाड़ी टीम 11 यहाँ से होती हुई बाहर है, लॉबी तक रास्ता दिखाया जाएगा. कारगर तरीके से यहाँ पर नॉकचिम रेड फोर्सेस खेलते रही है, बट XGY डाउन हो चुके हैं. ड्रसील के ऊपर ये जाता हुआ ग्रेनेड, ये ग्रेनेड दागा तो गया ड्रसील के ऊपर. कनेक्शंस अभी के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, शायद उनको भी डाउन कर दिया जाएगा. जी हाँ बिल्कुल, चीजें सोलो मैन स्टैंडिंग जेवियर्स का वो आखिरी खिलाड़ी एक 1v1 के अंदर. नो ग्रेनेड हाथ में था, एंड इसी साथ में जो प्लेयर है वो बाहर होता हुआ एज, एंड दे आर गॉन राइट नाउ. टीम नॉकचिम रेड फोर्सेस, दे आर गॉन. टीम डुप्लेक्स किया, एक एलिमिनेशन लेने के बाद में एक पैसिव मोड के ऊपर आती हुई टीम ड्रसील अभी भी यहाँ पर कारगर तरीके से जिंदा एंड बरकरार रखेंगे अपने आप को इस मैच के अंदर एक सस्टेन तरीके से. गेम से अंदर टीम डीके खेलती हुई जो ऑल्ट्रा ईगोस के अगेंस्ट एंड चिप्स फ्रंट साइड ऑफ डीके डाउन स्क्वाड हाउस के अंदर जो फाइट है इनिशिएट हो चुकी है. ऑल्ट्रा ईगोस रोमन स्टार्टिंग, दे आर इन द 2v3 सिनेरियो. 2v3 situation at the moment, but we'll see. All 3 are now holding on. Rosemary is still alive, so there's still a bit of hope. Oh, that grenade, I thought maybe he actually connects onto Rosemary, but that's not the case, as Amsel is there to maybe go for the cover. The grenade, those grenades are scary. They're so close to Rosemary, man. As D plus Kia closing in the distance, Rosemary will be caught. He has no idea that there's another player, as Amsel now with a lot of work to do, as he's going to be cooking up a grenade here. Auto, it's going to be third party actually. There's going to be the other team coming in, so they will immediately go for the confirmation onto the players. As Rico now trying to find out the last surviving player on the side of Rico is Eris, as Amsel is going to get taken down. He will not be able to go for the confirmation, but there is a knock as there's another squad now coming in. I believe it's Boom Esports who are dealing with the damage on the players on the side of D plus Kia. जी हाँ, और इसके साथ में यहाँ पर एंड गेम में नाजुक सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो चुके हैं. द ज़ेवियर्स के खिलाड़ी होते हुए बाहर, एंड ये फैसले की घड़ी और ये जो फैसले का लंबा है यहाँ से शुरू हो चुका है.
esports का खिलाड़ी टॉप 7 के अंदर यहाँ पर अपना दबदबा बनाते हुए एंड टॉप 7 के अंदर बली आ चुके 21 प्लेयर्स जिंदा 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी के लिए यहाँ पर यमी लेके जाएंगे 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपनी टीम के लिए बट एपीजी के फेरारी एपीजी एज व्हाट दिस गाइस आर अप टू टुडे क्योंकि अल्फा गेमिंग जो डोमिनेशन 2 या फिर पिछले कुछ फेजेस क्वालिफायर्स में से नहीं आ रहा था वो आज देखने को मिल रहा है। टीम एपीजी जैसा उनको परफॉर्म करना चाहिए था आज के दिन के अंदर परफॉर्म करें टीम एपीजी फाइनली दे आर बैक इन द सर्किट। टीम टू ट्राइब्स इनको पता है बहुत ही ज्यादा नाजुक लम्बे के अंदर अगर ये मैच खराब हुआ अगर इस मैच के अंदर कोई भी गलती हुई तो हो सकता है ओवरऑल स्टार्टिंग्स के अंदर फर्स्ट पेज पर ना आ पाए। सो टीम फोर ट्राइब्स वेरी काम very composed, every decision is looking good for this team. Edge, this is really good. मेरे को ये जो अप्रोच है टीम फोर ट्राइब्स की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है। हुज़ैफा अभी के लिए यहाँ पे 2 एलिमिनेशन, फलक के पास 1 एलिमिनेशन, T24 के पास में 1 और एलिमिनेशन। 3 प्लेयर्स यहाँ पर अपनी गाड़ी के अंदर घूमते हुए स्काउट करते हुए प्लेयर्स को एंड इंटेल गैदर करी जा रही है इस बैटल एरिना के ऊपर। बट द थिंग इज ऑब्स्टिकल जो फोर ट्राइब्स हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इट्स गोना बी ए साइड ई-स्पोर्ट्स बिकॉज़ दे आर हैविंग 4 मैन स्टैंडिंग। सो फोर ट्राइब्स ए साइड ई-स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड हुज़ैफा अभी के लिए यहाँ पर रूफ के ऊपर खड़े होते हैं और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वॉइन ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट जो टकराव है स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ में फलक ही इज डाउन। फॉक्सी एक बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर आता है फलक के ऊपर। टीम फोर ट्राइब्स कैसे रिटेलिएशन कर सकते हैं। वॉइन ई-स्पोर्ट्स इज गोना बी अ 2v3 सिनेरियो और भी ज्यादा ग्रेनेड जाते हुए आईक्यू यहाँ पर अभी उस फाइट से I guess ट्रेड करेंगे उस फाइट के अंदर नहीं। IQ oh no he could have taken that sprint शायद से 2 प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया जा सकता। फलक का यहाँ पर रिवाइवल हो चुका है which is really good। ये जो दबदबा है यहाँ पर बंद तो अभी के लिए बट IQ ये चीज नहीं होनी थी उनका यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है 3v2 ये दोबारा से फाइट कन्वर्ट हो चुके हैं। फलक ने यहाँ पर अपने ऊपर फर्स्ट एड पॉप इन करे K24 ऑफ ही इज रियली लोडेड HP एक और ग्रेनेड यहाँ पर जाता हुआ मैन ओ मैन ये जो फाइट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच। फलक बेहतरीन शॉट इनकमिंग एंड इसके साथ में वाइन ई-स्पोर्ट्स दे आर गॉन। हुज़ैफा एंड फलक द डेडली डुओ फॉर अ रीजन फ्रॉम फोर ट्राइब्स। Four tribes, 6 eliminations now. They are also looking like one of the favorites to get this one now. SI8 surviving too. So now my hopes, my expectations are lifting up. Looking at both of these two teams playing the way that they are, there's a really good chance that they might actually capitalize and get the chicken dinner into their favor. There was one, but APG surviving with 1 player. It's 5 eliminations. Not a great game, but this could have gone worse for them, you know. True, this could have. And one esports कहीं ना कहीं लग रहा था जिस तरीके से अपना दबदबा बना रहे थे एंड गहरी सोच के साथ में जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन बनाया पुश किया मुझे लग तो रहा था एक लाजवाब और एक फ्लॉलेस वाइप आउट आ सकता था फोर ट्राइब्स का अगेंस्ट बट नहीं। हुज़ैफा एंड फलक अपनी टीम को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करेंगे जिसके साथ में उन दोनों ने वन ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को बाहर किया। ए साइड ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर फ्रंट एंड से शॉट्स आ रहे हैं बैक एंड से भी शॉट्स आएंगे। बूम ई-स्पोर्ट्स फ्रंट एंड से बैक एंड से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम अल्फा गेमिंग भी आ रही है। सो टीम ए साइड ई-स्पोर्ट्स दिस माइट बी अ रियली बैड प्ले इनकमिंग क्योंकि इनकी पोजीशनिंग कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ए साइड ई-स्पोर्ट्स वर्सेस टीम ई-स्पोर्ट्स बेहतरीन तरीके से एक प्लेयर को अप डाउन किया चुका पैंथर स्पॉट के प्लेयर को एक 1v2 में भी आ सकता है। इसके साथ में ब्लू ई-स्पोर्ट्स गलत डिसीजन डायरेक्टली स्लैम करेंगे इंस्टेड में ब्लू ई-स्पोर्ट्स बाहर किया जाएगा। लॉबी तक का रास्ता उनको दिखाया गया एक और ग्रेनेड बूम ई-स्पोर्ट्स की तरफ से थर्ड पार्टी बूम ई-स्पोर्ट्स यहां पर दिखाएंगे टीम ए साइड ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। कीबो अपनी एस्ट्रल के को रिलोड करते हुए दैट पर्सनल रिलोड इट वाज Edge, what do you think? Boom esports और A-side esports पर A-side esports Raju, the grenade from Sara Preetham, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ग्रेनेड और डायरेक्टली उस प्लेयर के ऊपर फोर ट्राइब्स अपना यहाँ पर दबदबा बिल्कुल सेंटर पे एंड टीम फोर ट्राइब्स यहाँ पर सेंटर पे पहुंच चुकी है। क्रिप्टो तीन किल्स यहाँ पे लेके जाएंगे। डोमिनेशन यहाँ पे दिखाते हुए बट फलक यहाँ पे A-side esports के अगेंस्ट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट यही फाइट इनका डिसीजन लेके आएगी। एक और ग्रेनेड यहाँ पे चल रहा हुआ बट नो इट वाज एक्चुअली फलक टेकिंग इट डाउन। एक यहाँ पे प्लेयर को डाउन किया जाएगा तो अल्फा गेमिंग का प्लेयर वो जो आखिरी प्लेयर था शायद से T24 ओपी को डाउन करें तो यहाँ पे बाहर किया जाएगा मैच से। एज दैट वाज रियली बैड। अल्फा गेमिंग यहाँ पर टीम फोर ट्राइब्स के ऊपर कहर बन के आए एक प्लेयर को सीधा नॉकआउट करके फिनिश ऑफ करके यहाँ से कल्टी मारे और भाग गए। The one surviving player is being a menace right now as he will also make sure Falak drops to his knees but unable to go for the confirmation, but there will be a confirmation onto him, but it's the
It's the side of ASI who steals it. So now our 4 tribes are in an unfortunate situation because IQQ is the only one standing. But APZ, that one finish, one extra point is going to be coming in clutch for sure. As boom, they are going to be gone as well. We're looking at ASI 8. Finally, maybe the ones coming out on top with 4 men standing against 2 on the side of D plus Kia. And 4 tribes, just 1. But it's IQQ, so you never really know if he can clutch it around. He has the potential to do it. He's been able to turn the situations in his favor. He's been known to doing that too. Stage 7 circle coming to play in the next few seconds. 6 eliminations. IQQ does not have any. Is this going to be the 3 or maybe actually 6 eliminations that he needs? If he can get it himself, then he will be celebrated throughout the entirety of the day. जी हाँ बिल्कुल and IQ सोलो मैन स्टैंडिंग यहाँ पर 4 ट्राइब्स की तरफ से एंड एसाइड esports जो उनकी सबसे बड़ी मुश्किलात थी, जो उनकी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी, वो अभी भी मैच से बाहर नहीं होती है। एसाइड esports टॉप 3 के अंदर, टॉप 18, यानी हम लोग जब से इस मैच से स्टार्ट किया रैंगल के ऊपर हम लोगों ने कदम रखा, तब से यहाँ पर एसाइड esports की टीम और टीम डुप्लेक्स किया की टीम डोमिनेशन दिखाती हुई देखिए। हालांकि यहाँ पर 4 ट्राइब्स बेहतरीन परफॉर्म करी, बट वो जो अल्फा गेमिंग का एक प्लेयर था उसने कंफ्यूजन बनाया उस टीम के ऊपर, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा जो कब्जा बना के रखा था टीम 4 ट्राइब्स ने, सभी चारों प्लेयर्स ने, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ, वो जो कॉन्फिडेंस है वो टूटा, जिसकी वजह से 4 ट्राइब्स अभी के लिए यहाँ पर बिखर तो चुकी है। बट IQ अपनी टीम का कमांड संभालते हुए एंड दिस प्लेयर ही हैज बीन नोन टू प्ले दैट सोलो गेम, ही हैज बीन नोन टू डू दोस वंडर फॉर हिज टीम। बट अभी के लिए यहाँ पे शॉट्स आते हुए एसाइड esports, क्या यहाँ पर IQ बच पाएंगे या फिर नहीं? नो, वही मैं बोल रहा था, एसाइड esports एक और पाकिस्तानी टीम, भले ही यहाँ पर किसी और टीम से एलिमिनेट ना हुए हो, पर अपने भाइयों की तरफ से वो एलिमिनेट होते हुए एंड एसाइड esports लेके जाएंगे 4 ट्राइब्स को आखिरी लाफ एंड खत्म किया गया उनको। क्या एसाइड esports 4v2 को जीत पाएगी या फिर नहीं? डुप्लेक्स किया पाकिस्तान वर्सेस कोरिया। ASI8, the grenade is so good from Crypto. Now Perico's the only one standing. It looks like finally my prediction might be coming out on top as Perico is very low. He healed up quite a bit with the 4 surviving players inside of ASI8. I think it's too much. I think it's too many. I think it's a lot as ASI8. They will be the ones coming out on top with the winner chicken dinner. A long time coming. It's gonna be celebration here for the team, for the region, for the time being, as they will also now have a really good shot at making it to the grand finals. They're like, I mean, yeah, we're relying on the votes, but guys, if you do not do it, we might as well go ahead and secure the points ourselves. And here you go. Good amount of eliminations with the chicken dinner, a dominant performance, and they still have 4 more maps. So 4 more good performances, and they will not need any of the votes anymore. They will make it through, based on the point system itself. Oh man, that was a performance incoming and इसके साथ में नजर डालते हैं हमारे मैच हाइलाइट्स के ऊपर। पर हाँ, मैच हाइलाइट्स से ऊपर बढ़ने से पहले जो भी ऑडियंस अभी यहाँ पे ज्वाइन करिए, देखिए जाइए जल्दी से आके 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 141 esports का चैनल इज रियली क्लोज टू हिटिंग दैट 50k सब्सक्राइबर गोल। तो जाइए अभी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों को इससे ज्यादा बेहतरीन मैचेस अभी के लिए कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। सो सपोर्ट देम एंड एज अ बिजनेस 141 esports they are growing very rapidly. Keep on doing that thing. 141 esports, they will be bringing all of those tournaments for you all. So जाइए सब्सक्राइब करिए अभी, नजर डालते हैं हमारी मैच हाइलाइट्स के ऊपर। ये टॉप 9 तक हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे थे, डुप्लेक्स किया यहाँ पर तब तक इतना ज्यादा डोमिनेशन दिखाते हुए, जिसके साथ में ऑल्ट्रा ईगल्स का यहाँ पर याद हुआ डोमिनेशन मोमेंट 4 ट्राइब्स से एक बेहतरीन 4v2 फाइट थी। It was the end as well. It was a great situation for SI8. A great opportunity. I mean, you gotta give credit to Alpha Gaming. Actually, Ferrari helped them. If Ferrari didn't take down T24 there, 4T would have probably kept their focus on ASI8. So that one player just disrupting the flow of the game right there caused major trouble for 4 tribes, but helped the side of ASI8 towards the end. And I think coming in with 13 eliminations and the chicken dinner, 23 points. A very important 23 points, that too. True. And ASID esports ये था उनका यहाँ पर विनिंग मोमेंट, और जीत के गए थे ASID esports टीम डुप्लेक्स किया को किया बाहर। एंड बेबी यहाँ पर बनेंगे पिछले मैच के क्रिप्टो एंड लेके जाएंगे 6
एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड 4 नॉकआउट। जैसे जैसे क्रिप्टो मार्केट भी बढ़ रहा है वैसे ही शायद से क्रिप्टो का परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है हर दिन, और बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्म करते हुए। कैन वी हैव सम क्रिप्टो ओपी इन चैट बिकॉज ही जस्ट टोटली डिजर्व इट मैन, कम ऑन। 600 प्लस डैमेज, 200 प्लस हील्स अप एंड स्टिल यहाँ पर 6 एलिमिनेशन के साथ में बेहतरीन परफॉर्म किया। क्रिप्टो, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस टीम। Crypto has been one of the key players for them for a lot of time. I mean, for a lot of these games and for a long time too. I mean, K2 usually is the one we think of as soon as ASI8. You know, we hear ASI8, but Crypto has been the heavy lifter this time with 6 eliminations and 629 damage going in. I really like the damage distribution there, as well as we take a look at the other top players into this one. We will have DOK on the side of APG, as you wanted to see him. Well, he's performing now. Preetham on the side of ASI8, and Shrine on the side of Team Secret. All these teams, all these players, they stepped up really big going into the last day of the playoffs. So we have to, we have to wait and see how they end the day, because now we have only 4 more matches left. I mean, Edge. Is this typical Asia Balwas chapter 3 for you? I mean, every time when we are witnessing some of these matches, at the end especially, मैं बोलूँगा यहाँ पर शुरुआत हम लोग थोड़ा बहुत स्लो पेस से स्टार्ट करते हैं। I mean, कोई भी गाड़ी है, स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा समय जरूर लेती है, बट एज यही सेम चीज हम लोग को टीम्स की तरफ से देखने को मिल रही है। शुरुआत में थोड़ा बहुत स्लो पेस के साथ में स्टार्ट करती है, पूरी इंटेंसिटी के साथ में नहीं खेलती है, बट लास्ट में 5वां और 6वां दिन प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स, इट गिव्स द सेम लेवल ऑफ वाइब जैसा हम लोग ग्रैंड फाइनल्स के अंदर देखते हैं। एज नजर डालते हैं हमारी टीम्स टू वॉच आउट के अंदर अपकमिंग मैच के अंदर, जो रहेगी वन esports SIT esports टीम बूम esports 4 थ्राइव्स के साथ में। SIT esports टोटली डोमिनेट किया, 13 एलिमिनेशन लेके जाएंगे, और उसी के साथ में यहाँ पर 23 पॉइंट्स इन द ओवरऑल रैंकिंग्स एंड मैच रैंकिंग्स अपने अंदर अपने लिए एडिशन करेंगे। डालते हैं हम एक बारी नजर एक दफा हमारे मैच समरी के ऊपर। 64 टोटल एलिमिनेशन, 6 ग्रेनेड एलिमिनेशन, 1 एयर ड्रॉप लूटा गया था, 7000 से ज्यादा हीलिंग्स हुई थी ना, हीलिंग्स पैच ऑफ हुई थी, एंड 300 अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने यहाँ पे देखा एक लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ बूम कीबो एज। बट आई मीन, आई हैव टू से मैन, आई मीन द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर यहाँ पे प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स है और उसका 5वां या 6वां दिन है, it gives the same vibe like we are witnessing on the grand finals. What do you think? I mean, do you think it's playoff qualifiers? I don't think so, man. I mean, it just feels like we are witnessing grand finals. It does feel like it now, doesn't it? Everyone's performing out of their minds, and ASI8 getting that chicken dinner along with 4 tribes doing a really, giving up a really good try there. 23 points for ASI8, 4 tries on 11, D plus K on 10. Boom on 9, APG on 9. Once again, decent performance coming in. Where were they all this time? That's the question I have in my head. As VOIN hit 9 as well. Team Secret on 8, 4 for D Xavier. 3 points for HORAA Esports. PANDUM on 3, Nongshim on 3. This time getting eliminated pretty early into the game. BLUG with only 2. All 3 goers. Unfortunate situation for them as they only were able to accumulate 1 point. DRX, they didn't have to worry about their position on the overall. They have 1 point right now. 11. Well, I think it's done and dusted for them as well. 2K getting eliminated pretty early too. WARGYE, now the next 4 games are going to be very crucial for them, as 52 Esports, they didn't show up, and unfortunately, they will not be showing up in the grand finals as well. जी हाँ बिल्कुल, टीम 52 अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी तक नहीं आते हुए, एंड इट्स रियली बैड टू सी दैट। बट देखते हैं यहाँ पर अगले एक्चुअली टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि देखिए अब तो मैं फेज भी नहीं बोल सकता है, बिकॉज ये फेज आखिरी फेज रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर एशिया बाटलवर्स चैप्टर 3 इट विल कम टू एन एंड। नजर डालेंगे हमारी ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर कि कहाँ पर टीम SIT esports, टीम 4 Stripes, टीम डुप्लेक्स की एंड बूम esports, ये जो टॉप 4 टीम्स हैं पिछले मैच के अंदर ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर, कहाँ पर अपना एक बारी दबदबा बना के रख रखा है। एंड मेरे को लग रहा है कि टीम 4 Stripes अभी भी 13वां पोजीशन के ऊपर ही है, 13th पोजीशन के ऊपर ही है, सो नो चेंजेस व्हाटसोएवर। बट आई मीन that was one hell of a match, man. I mean, the wrangle it turned out to be a good one. नजर डालेंगे हमारी ओवर रैंकिंग्स के ऊपर। फर्स्ट पेज ये रहेगा जहां पर 4, आई मीन एक्चुअली 3 इन कोरियन टीम, ओ भाई, नोंगशिम नेट फोर्सेस, DRX एंड डुप्लेक्स किया। समवेयर अराउंड एज हम लोगों को पता था कि अगर कोरियन टीम्स आ रही हैं सो डोमिनेशन हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नोंगशिम नेट फोर्सेस 212 पॉइंट्स, DRX 1 और पॉइंट यहाँ पर अगले मैच के अंदर जैसे एक्यूमुलेट करेंगे 200 पॉइंट से ज्यादा। डुप्लेक्स किया 195 पॉइंट्स। Team RQ, Team FN Beta, Team Secrets, VOIN Esports and HORAA Esports in top 9.
Aura coming to top 9, but please flip the page. I want to see what the storyline is from 10 to 18. That is where my focus is right now. That's where the attention is leaning towards. Hoping to see some good numbers. Hoping to see some good teams moving on forward. 3 Korean teams at the top. That is ridiculous. Except FN. I mean, unfortunately, they will not be getting any more points, but they're not that far away. They're only 3 points away from RQ. So we will wait for the page flip. Please just flip. I don't know. What am I? Oh, there it is. DRS 148. Flash 145. Pandum on 140. 4 tribes now securing the spot. SCYTES. Now the trouble begins. You can see it. They're on 124. The Xavier 124. Boom 120. SKYFORCE will not be performing. So 119. Alter Egos have made it now, ladies and gentlemen. They will also be qualifying for now. There's still chance that other teams at the bottom might be pushing them further. But SKYFORCE and SCYTES, first things first, SKYFORCE are in a lot of trouble now. They'll be sweating. True. एंड ये रहेंगी यहाँ पर हमारी टीम्स एंड टीम और ईगोस लेके जाएंगे सेकंड पेज के अंदर अपना स्पॉट एंड अभी T2K esports उनके आज के दिन के अंदर कोई भी मैचेस नहीं है सो T2K esports आई गेस द गेम इज ओवर फॉर देम माय फ्रेंड SIT esports यहाँ पर स्टिल दे आर आल्सो रियली क्लोज क्या यहाँ पर एक अच्छा कमबैक दिखा पाएंगे या फिर नहीं टीम 2K esports टीम अल्फा गेमिंग टीम WARGYE टीम HKG ग्लू esports टीम 11 एंड टीम 52 ग्लू esports टीम 11 एंड टीम 52 आई गेस द गेम इज ओवर नजर डालते हैं हमारे यहाँ पर एक दफा overall MVP के ऊपर भी because the BIGETRON by Vitality aka the Fatalist will be taking 46 eliminations and 48 knockouts अभी तक शायद से उनके आसपास कोई क्लोज नहीं आ पाया वो नॉकशिप रेड फोर्स का खिलाड़ी जी हाँ बिल्कुल ही इज रियली क्लोज एंड मे बी हो सकता है कभी भी हम लोग को वो आसपास आते हुए देखने को मिल जाएंगे DRX के हॉक्सी 45 elimination and 47 knockouts यहाँ पर लेते हुए Team Secrets के JKMJ with 36 eliminations 43 knockouts and RK Firen भी यहाँ पर तीसरे स्पॉट से एक्चुअली 5वें स्पॉट के ऊपर डिथ्रोन हो चुके हैं. These are the top players, the overall MVPs, and I still don't think anyone can take Federals down because that 10,000 is a little too much to handle, I believe, and we've also seen him use the M249. That is what I remember immediately as soon as I see that name. Hopefully, we get to see more of that action later on. But for now, we will be taking a look at the next maps left as well. And before that, obviously, we'll take a look at the fan favorite teams. And you can see, okay, 4 tribes and DRS are still leading. And ASIA is still struggling, holding on to their position. But in terms of points, they are picking it up. True. And team SID esports अभी शायद से fans vote तो जरूर कर रहे हैं but अभी के लिए they are not having a lot of votes to getting accumulated and right now we can see 4 stripes and DRS यहाँ पर ये जो दोनों की दोनों teams हैं जी हाँ बिल्कुल आराम से बन सकती है हमारी फैन फेवरेट टीम. देखते हैं यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर क्या सिनेरियोस देखने को मिल जाएंगे. SIT esports and HORAA esports, both of them they are really good and especially मैं बोलूँगी यहाँ पे SIT esports देखते हैं और कितने ज़्यादा votes accumulate होते हैं and HORAA esports they are also making their moves but especially as I feel like that 4 stripes and DRS right now they are doing a bit better. They are doing better now on the overall as well. They're looking decent. They're picking up the pace as well, and they're giving us hope. They're giving us a lot of hope going into the next upcoming matches here in the map of Miramar and the cycle once again will be repeated. So there's a really good chance that a lot of these teams will be now performing better than before. So hopefully we get to see some brilliant performances from the teams at the bottom. SI8, WARGYE, and Alpha Gaming. Alpha Gaming, 2 games, they're doing well, and I kind of do want to see them make it to the grand finals, or at least have a fighting chance, you know. I mean, absolutely, and we are done with 2 matches today, and हम लोग यहाँ पर अपने तीसरे मैच के ऊपर बहुत ही जल्द बढ़ेंगे, and आज देखते हैं
तीसरे मैच के अंदर कौन सी टीम लेके जाती है चिकन डिनर, क्योंकि पहला मुकाबला एक कोरियन टीम ने जीता, दूसरा मुकाबला एक पाकिस्तानी टीम, एक पाकिस्तानी रीजन से टीम लेकर जाएगी, तीसरा मुकाबला क्या कोई पाकिस्तानी टीम दोबारा से चिकन डिनर लेगी, क्या कोरियन टीम जाएगी, मे बी सम अदर वियतनामी टीम और मे बी सम इंडोनेशियन टीम्स आर कमिंग ऑन टॉप, क्योंकि आज के दिन के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर हर एक टीम देती हुई। एंड अगला मुकाबला मेरा मार का है। देखिए इट्स माई पर्सनल फेवरेट मैप। इंडिया ऑडियंस डू लेट मी नो कि आप लोगों का यहाँ पर फेवरेट कौन सा मैप है, एंड आई फील like there will be a lot of Erangels reigning supreme in the comment section, because Erangel, it's very nostalgic and still it's in the nerves of every PUBG player. So I feel like यहाँ पर Erangel बहुत सारे लोगों का फेवरेट रहेगा, but still मेरा यहाँ पर फेवरेट अभी के लिए मेरा मार रहेगा। रोंडो के ऊपर देखिए it takes a lot of skills to play, and I'm just a caster man, come on, I mean you as well, you're just a caster, I'm not a pro player at all, so even if it's classic I die there. So Rondo is not a cup of a tea for me, but still Miramar it's really easy for me, and especially every map is really good. It's all about the skill set that players and the teams they are having right now. And if you're talking about the skill set edge right now, Korean teams, I mean I don't even have to say anything because they're just totally dominating right now. Yeah, I mean their set of skills are different. They are in a different league. They have a league of their own, and they're sitting there comfortably. They're picking up the pieces, and they're putting them in places where they kind of announce it to the world that they are here to play. They're here to dominate, and taking them down is not easy. You better come for the Kings. You better not miss. That's probably what they are going to be talking about. And you can see all these early skirmishes and all these early fights. It's mostly Korean teams taking down other Korean teams. We have not really seen Shim or Deep Tuskia or DRX getting taken down by a different team early. We have only seen them get taken down by their own region pretty early, at least. Most often than not. They always try to retaliate as much as possible. They make sure that even if they go down swinging, they manage to get at least 1 or 2 eliminations in their favor before they do so. So they get at least some sort of points, and they never get eliminated with 0. Very rarely you see these Korean teams getting eliminated at 0 points. Unfortunately for Team 11, I can't really say the same. They're kind of struggling since day one. And as I said, the only Korean team who might not be qualifying and who probably is the only one struggling from the entire region, from out of 5 teams. I think that's the only team that is having a really tough time. But I'm absolutely happy to see ASIA get that chicken dinner. Finally, something for the Pakistani region. We've seen Korean, we've seen Indonesian, we've seen Vietnamese dominance. And now it's about time Pakistan region got one. And now I'm hoping to see Alpha Gaming pick up one as well. I mean true, and especially let me tell you one thing, A-side esports, देखिए फैंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए एंड वोट्स भी कर रहे हैं एक्चुअली। एंड हम लोगों ने देखा कि 6000 से ज़्यादा वोट्स एक्यूमुलेट हुए थे एक दिन के अंदर, एंड स्टिल दे आर हैविंग मच मोर वोट्स हैपनिंग आउट देयर। आई गेस शायद से 2000 वोट्स और भी ज़्यादा मिले हैं ए-साइड ई-स्पोर्ट्स को। बट द थिंग इज आई से ए-साइड ई-स्पोर्ट्स इवन इफ यहाँ पर वोटिंग्स के अंदर क्वालिफाई ना हो पाए, अगर यहाँ पर टॉप 2 के अंदर ना पहुँच पाए, देखिए क्योंकि फोर्थ राइव्स they're having a really huge number, right? उन लोगों का यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ना तो मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। एंड स्पेशली मैं बोलूँ ए-साइड ई-स्पोर्ट्स, सॉरी DRS एक्चुअली, ए-साइड ई-स्पोर्ट्स एंड DRS के अगर हम लोग यहाँ पर वोट्स कंपेयर करें, सो वी आर हैविंग समवेयर अराउंड अ डिफरेंस ऑफ 10,000 वोट्स। सो ऑलमोस्ट या अगर हम लोग यहाँ पर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक भी हो, 10,000 वोट्स एक ही दिन में एक्यूमुलेट करना, इट्स नॉट गोना बी इजी. It's really hard, and especially right now we have some limited number of matches. I mean, I'm not doubting all the Pakistani players, I mean, and the viewers watching out there. You guys can keep on voting. अगर आप लोगों ने 10,000 से ज़्यादा वोट आज के दिन के अंदर SID स्पोर्ट्स के लिए कर दिए, so वो लोग easily second spot के अंदर आ जाएंगे. But the thing is, Edge, let me complete myself. Let me tell you, SID sports they started strong, and मेरे को लग रहा है कि SID sports they might need a voting system as a plan B, but as a plan A right now, SIT esports, they will dominate. D2K esports, they're not playing today. They have their spot in their second. They have their spots in top 18 at least. Because DRS and Team 4 Tribes, they are on the first page, and 4 Tribes, they are also in top 16. So top 17, I mean 17th position के ऊपर जो टीम है और जो 18वें पोजीशन के ऊपर वो जो टीम है, वो दोनों ही टीम्स यहाँ पर क्वालिफाई होंगी. So SIT esports, all they have to do, it's just dethrone T2K esports. They're not having any sort of matches. One more good game. One more freaking good game and they're back in top 18.
Ultra But I Egos think Aries, I'd say that is T2K good. is. I think T2K is not in the top 8 anymore. They were just dethroned by Alter Ego. So I'm Yeah, thinking that's what I'm now. saying. Yeah, SCYTES and what's the other team? There's one more. Yeah, there's one more. We're not able to recall that one. We'll be having a look on the overall standings one more time into the next upcoming one. But what I'm all saying is that Airside Esports, one good match. They're on the 20th spot right now. T2K Esports is really easy for them to beat. So they're having a difference of maybe 9 to maybe 2 or 3 points. Not more than that. Or maybe less than that. They have an equalizer point. I mean, I don't know. But still, SIT Esports, one more good match. One more good match and they are in top 18. That's easily. Right? And the competition in top 18, it's just insane, man. Right now, Ultra Egos, they just passed by. They're in top 18. And especially, I mean, it's just insane, man. But let's just have a look onto our map rotation. I mean, no map rotation whatsoever because we know it's gonna be Miramar. And देखते हैं यहाँ पर इस मैच के ऊपर कौन सी टीम लेके जाएगी chicken dinner. Ladies and gentlemen, it's gonna be Asia Bibles chapter 3rd, phase 3rd. And playoffs qualifiers का आखिरी दिन, आखिरी 6th day. अगर हम लोग यहाँ पर नजर डालें एक बार फ्लाइट पाथ के ऊपर एज ट्रेलर पार्क एल्पोजो से क्रॉस करता हुआ ये जो फ्लाइट पाथ है यहाँ पे चुमासेरा लॉस न्यूयॉर्क से पास ऑफ करते हुए यहाँ पे पार्थोना के आसपास कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ हो जाएगा एंड लॉस न्यूयॉर्क बीइंग द बिगेस्ट सिटी ऑफ द मैप पिकारो द हार्ट ऑफ द मैप वी ऑल नो वहां पर ये टीम्स ड्रॉप कर सकती हैं and we know that Ultra Egos versus 4 Tribes ये जो फाइट है वहां पर accumulate होगी एच और ये जो 4 की आतंक है वो जो पिकाडो पे बनेगी वो हम लोग जरूर देखेंगे and team 4 Tribes they'll try to get the revenge right because yesterday they got 1v4 but still फलक ने यहाँ पर 1v3 भी किया था but still मैं बोलूंगा Rosemary he was a little bit better. Yeah, Rosemary, I mean, we are hoping to see some good performances here coming in from the side of Alter Ego Aries right now, but the circle is where I'm leaning towards. Let's see if it's going to be another basic. Yes, it is. Not a lot of chaos coming into this one. Not a lot of teams that have to worry about their situation, but Rosemary, as you said, is coming out on top immediately as 4 Tribes. They will lose one. They will not be going in for the confirmation just shared as Uzaifa now retaliates with the DBS. He will go for the confirmation himself. Last one standing last time for the side of Alter Egos. This time first one to get taken down. True. Oh, हुज़ैफा उनके ऊपर एक शॉट आता हुआ डाउन यहाँ पर हुज़ैफा को कर दिया जाएगा फलक को यहाँ पर शायद से रिवाइवल भी हो रहा है which is really good. Ultra Egos हाथ में अच्छे weapons close range के अंदर S12Ks shotguns SMGs so they're looking good and बेहतरीन उन लोगों के पास में resources है but T24 OP यहाँ पर डाउन हो चुके हैं स्कूल को फाइट को कन्वर्ट कर दिया गया है and Ultra Egos they're having a great advantage. Rosemary पीछे से DMR के साथ में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से डैमेज लेके जाएंगे but IQ and फलक that duo man standing फलक he's not having any sort of healings to whatsoever. IQ spot हो चुके एक और नॉकआउट यहाँ पर आता हुआ फलक यहाँ पर ट्राई तो करेंगे he's really low to the HP 2v2 के अंदर जो फाइट कन्वर्ट हो चुकी है टीम पैंडम in the meanwhile होती हुई eliminate team Ultra Egos. Rosemary he's going to be the solo man standing again. Edge क्या हम लोगों को एक सेम सिनेरियो देखने को मिल पाएगा या फिर नहीं? Is it a deja vu moment incoming? Rosemary is the same scenario like yesterday. Rosemary. Will they be able to do it again though? I mean, he already got one down and last time I believe it was also Huzaifa who did go down first. And it's almost a similar compound. Oh my god. Will we be able to see a repeat of history? A same compound now. This is giving me deja vu. But this time I like how Falak has adapted. He understood that yesterday all of them went in from the same direction. So this time Falak is like, you know what? I will have the high ground advantage so I can see your head when you take down my friends. So he had the aim on his head with the high ground advantage and he took it down. Falak, that was brilliant adaptation from yesterday. Now that is what I'm talking about. Adaptation, improving and learning from your mistakes. Falak, well, that was your example right there. True. He is. And man, oh man, what a great performance. दबदबा यहाँ पर दोबारा से पिकाडो के ऊपर बनाते हुए and Dogshim Red Forces. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टीम है ग्रेनेड्स को दागती हुई and ये रही टीम ब्लू esports जो अभी स्ट्रगल कर रही है एज थर्ड पेज के ऊपर. So it's not good for them.
And he is using an explosive bow. Nongshim red poses. Let's see यहाँ पर क्या scenarios build up करके आते हैं तेजी. यहाँ पर down हो चुके हैं and ये जो fight है convert हो चुकी है एक 3v1 के अंदर. One. We'll see if it is going to be a situation where they can actually capitalize and get more. Nongshim at the moment, 3 eliminations. Ooh, the grenade. I thought maybe it was gonna land on him for a second, but that's not gonna be the case. As glue. Trying his best, but once again, just not enough. Karbu will get dropped, and immediately the entirety of the squad is gonna be wiped off from the face of Miramar. All three goes on the verge of getting 100 points. ASI 96 now. They might surpass all three goals, and if they do, they will make their way to the top. In the top 18, that is, of course. That's what I'm saying. Xavier. Russell. Grenades are raining in. 2K Esports, gotta be careful. Silence though, all of a sudden. No one's making a move. 2K, beautiful movement there. But weren't able to capitalize on that. Sondara just was so quick on his feet there. So good with the movement. Russell, gotta be careful, but they do have some backup there. Sondara is gonna get taken down. There was immediate retaliation though. A trade comes in. Confirmations will not be coming in anytime soon. Lelaboy 2K out in the open. Look at this. These Xavier 2 players, but that SLK can be deadly. You have to be very cautious with how you move here. They're trying to bait him out. He takes a bit of damage. Tags him a bit too. Lelaboy going for the... Oh. The grenade. If it connects, it might be scary. This bit of damage is not done yet. And now they're coming in from 2 ways. This could be scary now for the side. But look at Kodot. He's trying his best to go for the support. And looking at the grenade trajectory, I think he wants to bounce it off. And he will bounce it off, but he will be out already. Lelaboy 2K now leading. And I'm not really sure, but Hope. Oh, actually, it was Russell with the QBZ who got it. But I thought it was actually Hope with a shotgun. That would have been insane. But regardless, we're looking at another fight here between ASI 8 and Boom. ASI 8 looking like they might be able to get some more points here. Boom already struggling, bleeding. 2 players down, 2 players standing right now. Yummy. And is it Keru? No, it's Kibo actually. 2 players now. The only one standing on the side of Boom Esports. ASI 8, if they get this 2, it's going to be really good for them because they not only will be that much closer to qualification, but they also... Actually, they will qualify. I mean, they'll be in the top 18. I was going to say top 100 there for a second. But regardless, ASI, they will make sure to go for those into confirmations first. ASI Raju will get dropped though. I don't think the confirmation will be coming in, but no, just as I say that, it will. And now Boom, they have a really good chance to actually close this and turn this around. Crypto drops 1 more though, and I think with that, Kibo also hits the deck. And ASI 8, congratulations! They are in the top 18 as they surpass Alter Ego Eras. But they're not safe yet. They just hit 100 points. They need more. They need 115, 120 to feel safer. But at least for now, they can breathe a little easy, knowing that they are on the verge of qualifying to the grand finals. True. And now, Team 4 thrives. 4 elimination look past me. And it's gonna be a flawless team right now. सभी लोग पास में एक elimination ASI Esports versus Team 4 thrives. ये जो fight है 4v4 की and फला किसी के साथ में यहाँ पर एस्ट्रोल के साथ में बेहतरीन
यहाँ पर शॉट लेके जाएंगे एंड एक साथ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं T24 OP एक और ग्रेनेड हाथ में हुज़ैफा को फिनिश ऑफ करेंगे पारिस पॉलिस टीम APG बनती हुई एंड एसआईटी स्पोर्ट्स के पैंथर यहाँ पे डाउन करेंगे नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दो एलिमिनेशन पॉइंट्स अब रिकवर करके जाएगी टीम 4 ड्राइव्स अभी के लिए फलक इज रियली लोड द एचपी नो T24 OP आखिरी खिलाड़ी और इनके लिए यहाँ पर जो इम्तिहान है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है पैंथर He's healing and सीधा कूदेंगे यहाँ पर बट टीम APG जिस तरीके से इन्होंने एक थर्ड पार्टी करी है APG यहाँ पर पहुंच चुकी है he's really low T24 OP वॉन्ट करेंगे but no he's gone 4 times मैच से होते हुए बाहर एक सांस रोक लम्हा और इसी के साथ में यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स बाहर ए साइड ई स्पोर्ट्स दबदबा दोबारा से कायम और मैं बोलूंगा इस इम्तिहान के अंदर टीम ए साइड ई स्पोर्ट्स जीती एक 2v4 के अंदर एंड टीम डुप्लेक्स किया भी पास में आ चुकी है एंड प्रॉक्सिमिटी के पास एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ए साइड ई स्पोर्ट्स अभी के लिए 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स जरूर लेके गए बट ट्रिप टू प्रीतम बाहर हो चुके गेम से पैंथर एपीपी बट नो ही इज ऑन फायर पैंथर और इसके साथ में यहाँ पर रोनियो रहेंगे सोल्डर स्टैंडिंग देखते क्या सिनेरियो एस्ट्रल के पहला नॉकआउट नहीं और इसके साथ में यहाँ पे जिस टीम ने थर्ड पार्टी करी थी वही टीम एक और टीम को बाहर करके जाएंगे एसआईडी स्पोर्ट्स एंड टीम 4 ट्राइब्स दोनों ही पाकिस्तान गेम से होती हुई बाहर टीम डुप्लेक्स किया 0 एलिमिनेशंस इन लोगों के पास में एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम एपीजी इन लोगों के जिस फ्रंट में डुप्लेक्स किया एक और कोरियन टीम एंड टीम एपीजी के अगेंस्ट टीम अल्फा गेमिंग देखिए मैं बात करूँ टीम अल्फा गेमिंग की बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड जबरदस्त यहाँ पर कमांड बना के चल रहे हैं एंड डुप्लेक्स किया यहाँ पर अच्छी एक जो मैं बोलूँगा फ्लो है जो रिदम है जो सिम्फनी उसके अंदर यहाँ पर ये टीम खेलती हुई एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रोटेशन क्लैश के अंदर कोई टीम आएगी या फिर नहीं देखिए जो एनालिसिस होता है जो आईजीएल्स की कॉल होती हैं जितनी भी जोन प्रेडिक्शंस रोटेशंस जितनी भी चीज़ें हैं टीम डुप्लेक्स किया They are topping up everything right now. But Nongshim Ruthless एक और कोरियन टीम जवाबी हमला यहाँ पर ये जरूर देंगे बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस मुकाबले के अंदर इन लोगों के ऊपर कुछ शॉट्स आते हुए दूर दराज से लोगों के ऊपर शॉट्स आते हुए कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ा है तीजी के नाम का जो खामियाजा भुगतना पड़ा है इन लोगों को तीजी बाहर होते हुए गेम से लॉबी तक रास्ता को दिखाया जाएगा बट हो गई एक ये पाकिस्तानी टीम जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया डाकू खिलाड़ियों के ऊपर हमला करते हुए और इस लम्हे के अंदर यहाँ पर टीम गए 2 टीम्स के अगेंस्ट फाइट लेगी और अभी के लिए यहाँ पर होरा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट इन लोग के पास में नहीं टीम गए इन लोग के सामने ये जो मैं बोलूंगा एलिमिनेशन पॉइंट्स का खाता है वो बहुत ही जल्द खुलेगा निशानेबाजी अभी यहाँ पर चलती होगी ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के ऊपर कोई भी कनेक्शंस यहाँ पर नहीं आते हुए एंड एक बार हम लोग यहाँ पे जोन के ऊपर नजर डालें सो पिकाडो के ऊपर ये जो जोन है शिफ्ट होता हुआ एंड पिकाडो इज बीइंग इन द वेरी सेंटर ऑफ द मैप नॉट जस्ट एग्जैक्टली इनटू द सेंटर बट आई से यहाँ पर एक बिल्कुल थोड़ा सा एक सेंट्रलाइज एक्सेंट रहेगा उस पिकाडो के रीजन के ऊपर पावर ग्रिड की जो हिल्स रहेंगी वहां पर टीम 11 के खिलाड़ी एंड sorry guys, I was just vibing on the music for a while. It was a good pop music, maybe rock, but still let's just come back to the match and DRX के खिलाड़ी 4 eliminations and Hoxie बाहर होते हैं एंड द ऑडियंस वाचिंग आउट देयर जो भी अभी यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीम के ऊपर जुड़ा है जो भी अभी लाइव स्ट्रीम के ऊपर आए हैं चाहिए जल्दी से जाके 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए देखिए गाइस आप लोग सपोर्ट करोगे तभी यहाँ पर हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे एंड कीप ऑन सपोर्टिंग क्योंकि 141 esports एज अ बिजनेस दे आर डूइंग अमेजिंग एंड आप लोगों के लिए ऐसे यहाँ पर हम लोग बेहतरीन टूर्नामेंट्स लेके आते रहेंगे एंड मैं बोलूँगा अभी ये जो लेजेंडरी टूर्नामेंट चल रहा है हमारे ऊपर इजबाल वाज चैप्टर 3 इसका हम लोग चैप्टर 4 भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे तो जाइए सपोर्ट करिए 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट कराइए एंड आप लोगों को चैप्टर 4 भी देखने को मिलेगा गिवअवेज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे सो ठीक है सपोर्टिंग गाइस एक बार हम लोग यहां पर दोबारा से मैच के ऊपर आ जाते हैं टीम वॉर्गये रसील के ऊपर शॉपर कुछ शॉट्स लेते हुए दूर दराज के इलाकों से डीआरएक्स के बेनी यहां पर डाउन हो चुके हैं कोरियन टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट दे आर लुकिंग गुड दे गॉट टू बी रियली कॉशियस एंड केयरफुल बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं देखिए ह्यूज एंड टीआरए ड्यूमेट स्टैंडिंग रहेंगे एंड खामियाजा 2 प्लेयर्स का इन लोगों को भुगतना पड़ा कब्जा करने का ट्राई तो कर रहे थे एंड
अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस लम्हे के अंदर एक और टीम बाहर होती हुई। दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर द होल टीम। टीम द जेवियर्स हुई बाहर एंड जवाबी हमला नहीं कर पाएंगे इस मुकाबले से होती हुई बाहर। This was really bad. The Xaviers, I mean, somewhere around कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये टीम भी आज के दिन के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करेगी, but this वियतनामी टीम इम्तिहान यहाँ पर इनका बेहतरीन नहीं हुआ एंड इस लम्हे के अंदर बाहर होते हुए Xaviers के खिलाड़ी 5 सेकंड के अंदर ये जो जोन यहाँ पर क्लोजिंग कर जाएगा। एंड देखिए यहाँ पर चौथा फेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका। पिकाडो के ऊपर एक्चुअली 2 टीम्स देखने को मिल जाएंगी हम लोगों को, डुप्लेक्स किया एंड DRX। Man, that McLaren sounds so good. एंड यहाँ पर हो रहा है esports। देखिए अभी तक यहाँ पर हो रहा है esports, इन लोगों के पास कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है एंड वी कैन सी इन लोगों के सामने एक और कोरियन टीम एंड हो रहा है esports, they're going good। बट देखिए हो रहा है esports एलिमिनेशन के अंदर यहाँ पर इजाफा आना चाहिए एंड मैं बोलूँगा अगर एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं मिले तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। हो रहा है esports, स्पॉट किया गया है प्लेयर पॉइंट, कुछ शॉट्स भी लिए जा रहे हैं, कनेक्शन अभी तक यहाँ पर नहीं बनेंगे। पहला एलिमिनेशन शायद से हो रहा है esports को मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हो रहा है esports के यहाँ पर एलिमिनेशन आ तो सकता है। मजीद प्लेयर्स अभी भी लॉबी के अंदर जिंदा एंड मजीद टीम्स लोग देखने को मिल जाएंगी। 9 टीम्स अभी तक है, 15 मिनट का गेम जो है अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने देखा। मोनोटॉप्स यहाँ से वाइन esports के खिलाड़ियों की तरफ से आती हुई, दोनों ही टीम्स के बीच में अफरा तफरी का माहौल और इसी के साथ में वॉइन esports के खिलाड़ी थोड़ा बहुत रिट्रीट करेंगे क्योंकि जोन भी यहाँ पर आ चुका है। चौथे जोन के अंदर यहाँ पर ये लोग फाइट ले रहे हैं। देखिए मैं आप लोग को एक बार बात बता दूं, चौथे जोन में बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ेगा। जोन की प्रायोरिटीज भी आनी चाहिए, जोन के अंदर यहाँ पर भी जाना पड़ेगा। अगर जोन के बाहर ही फाइट लेते रहे और अगर जोन स्टार्ट हो गया एंड देयर वी हैव इट, जोन विल कीप ऑन क्लोजिंग एंड जोन विल कोलैप्स एनी टाइम सूनर। सो दिस इज गोना बी इनसेन। हो रहा है esports, जोन को यहाँ पर कैपिटलाइज करो तो मैं बोल सकता हूँ बेटर रह सकता है और जोन के अंदर जाके गेट कीपिंग सिनेरियोस टीम वॉइन esports के खिलाड़ियों के अगेंस्ट कर सकते हैं। नारुक सूरत हाल और अभी के लिए यहाँ पर टीम हो रहा है esports जिगल। एक ही एलिमिनेशन यहाँ पर पहला एलिमिनेशन आएगा, स्काई पटेटो को डाउन किया और शायद से उस प्लेयर का एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने हित में लेके जाएंगे। बेहतरीन एक और ग्रेनेड, सामने से भी ग्रेनेड, पॉक्सी बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं एचपी के ऊपर। नो फियर यहाँ पर डाउन होते हुए एंड इसके साथ में जेटा नो फियर का जो एलिमिनेशन पॉइंट है अपने यहाँ पर हित में लेके जाएंगे एंड अपने नाम लेके जाएंगे। बट द थिंग इज हो रहा है esports क्या रिटेलिएट करेंगे, क्या जोन के अंदर जाएंगे, तब जाके गेट कीपिंग सिनेरियोस बनाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि स्काई इनकी यहाँ पर जो पोजीशन है वो ज्यादा बेटर है। जेटा स्पॉट किए जाएंगे, उसमें राडो के अंदर स्प्रेज यहाँ पे लिए गए, रिटेलिएशन के अंदर इनके ऊपर भी यहाँ पे स्प्रेज आएंगे एंड ही इज जस्ट सोलो मैन स्टैंडिंग राइट नाउ। स्काई अपनी टीम के साथ दी रही एनीवे फॉक्सी नो स्प्रेज के यहाँ पर अभी तक कोई भी कनेक्शन नहीं आएंगे। टीम 11 एक और यहाँ पर कोरियन टीम, इन लोग जो सामने टीम वॉइन esports के खिलाड़ी जेरी, he is gone, he is bleeding, अपने कदमों पे यहाँ पर घुटने फेंक दिए गए उनके एंड अभी के लिए वॉइन esports बेहतरीन जोन्स के अंदर आए। गेट कीपिंग सिनेरियोस को यहाँ पर ब्लॉक हो रहे थे एक्चुअली, बट स्टिल यहाँ पर वॉइन esports यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से शोकेस करते हुए और जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी अभी के लिए यहाँ पर वो जो पेशा है वो esports का वो दिख रहा है। बट द थिंग इज टीम 11 ये उनके लिए एक ऑब्स्टिकल। टीम 11 भले यहाँ पर थर्ड पेज पे स्ट्रगल कर रहे हैं बट दे आर डूइंग गुड। वॉइन esports का आखिरी खिलाड़ी एंड वो भी यहाँ से बाहर होते हुए बाहर कर दिए जाएंगे, शहीद होते हुए वॉइन esports के खिलाड़ी एंड एलिमिनेशन आता हुआ। टॉप 8 टीम्स एंड 26 प्लेयर्स यहाँ पर लॉबी के अंदर जिंदा। होरा esports वॉइन esports के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो बनी थी टीम अब यहाँ पर जोन के अंदर एक एडवांटेज लेके जाएंगे। 5वां जोन का हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, 5वां फेज यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ और इन टीम्स का जो इम्तिहान वो स्टार्ट हो चुका है। इजाफा यहाँ पर करना पड़ेगा एंड आगाज इस जोन का हो चुका है एंड मैं बोलूंगा यहाँ पर जो केओस था और भी ज्यादा बनेगा क्योंकि देखिए भले 8 टीम्स है, टीम्स के बीच में ब्रीदिंग स्पेस यहाँ पर मेंटेन्ड। 26 टीम 8 यहाँ पर हम लोगों को टीम्स देखने को मिल जाएंगी। 18 मिनट का हम लोग को जो गेम है वो हम लोगों को देखने को मिल चुका है बट कब्जा कौन बना के जाएगा, कौन लेके जाएगा इस गेम को अपने हित? क्या वो रहेगी कोई कोरियन टीम, क्या वो रहेगी कोई पाकिस्तानी टीम? ग्रेनेड हाथ में और esports जिगल के ऊपर एक ग्रेनेड। दिस इज लुकिंग गुड बट शायद से जिगल ही इज बिहाइंड दैट कवर, ही इज बिहाइंड दैट ब्रोकन वॉल
सो मेरे को लगता है इस बाउंड्री वॉल के पीछे रहेंगे तो शायद से HORAA esports दे माइट एक्चुअली फील गुड बट नो DRX का अगेंस्ट शायद से पुश करने की दरकार रहेगी। जी हाँ बिल्कुल HORAA esports का एक प्लेयर डाउन हो चुका है। एक 2v2 के अंदर ये जो बैटल है कन्वर्ट हो चुकी है HORAA esports। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो शायद से दिक्कतें बन सकती है। जी हाँ इसी के साथ में यहाँ पे चिकल डाउन हो जाएंगे। टीम अल्फा गेमिंग वर्सेस टीम WARGYE, एक और पाकिस्तानी टीम बट HORAA esports आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर बचता हुआ HORAA esports का आखिरी खिलाड़ी क्या HORAA esports का यहाँ पर उस टीम को एलिमिनेट कर पाएगा या फिर नहीं। And there we have a team 11 के ऊपर एक बेहतरीन विनर आता हुआ Pubgm and Tiger are going to be the duo man standing। दो ही एलिमिनेशन का यहाँ पर इजाफा और एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर ले तो बेहतरीन हो सकता है बट द थिंग इज डिसएडवांटेज यहाँ पर मैन पावर नहीं है। एक प्लेयर यहाँ पर ब्लीड होता हुआ अपने घुटनों के ऊपर टेक दिया जाएगा। रिवाइव यहाँ पर हो जाएगा बट द थिंग इज अल्फा गेमिंग वर्सेस टीम WARGYE। ग्रेनेड्स यहाँ पर इधर से उधर जाते हुए अफरा तफरी यहाँ पर बचती हुई एंड ये जो ग्रेनेड्स हैं दे वोंट बी स्टॉपिंग एनी टाइम सून बट द थिंग इज टीम WARGYE टीम अल्फा गेमिंग के अगेंस्ट एक 3v3 सिनेरियो के अंदर शाका डाकू एंड मौला सब लोग यहाँ पर स्पॉट हो चुके हैं। रेज मौला स्पॉट यहाँ पर किया जाएंगे। टीम अल्फा गेमिंग यहाँ पर मूव करती हुई जोन के अंदर एक और ग्रेनेड यहाँ पर जाता हुआ वो ग्रेनेड बेहतरीन लग रहा है। एक और प्लेयर यहाँ पर डाउन शाका यहाँ पर बाहर शाका को भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। मौला ही इज आल्सो गॉन एंड इसी के साथ में यहाँ पर बाहर होती हुई टीम WARGYE एंड स्काई HORAA esports की तरफ से यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। एक और कैजुअलिटी एंड कॉशियस रहना पड़ेगा क्रॉस टीम 11 दे आर मेकिंग अप अ मूव। बेहतरीन स्प्रे और इसी के साथ में यहाँ पर प्लेयर को फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा जिगल एंड एक और उन लोगों का खिलाड़ी HORAA esports क्या यहाँ पर टीम 11 को फिनिश ऑफ कर पाएंगे या फिर नहीं। स्काई ही इज गॉन आउट ऑफ द मैच। 2v2 की जो फाइट कन्वर्ट हो चुकी है DRX के अगेंस्ट एक खिलाड़ी 1-on-1 का स्प्लिट हम लोग को देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स HORAA esports के दो टीम्स के ऊपर कवर अप करते हुए एवरीथिंग इज जस्ट साइलेंट राइट नाउ। Oh no, team 11 he's gone। Pumba Solomon standing अभी के लिए he's really low to the HP and now we can see HORAA esports। The thing is Jiggle यहाँ पर एक्चुअली पुल करी गई थी इस खिलाड़ी की तरफ से एक लास्ट 1v1 नो ही वोंट एबल टू लूज दैट वन। ही इज रियली लो टू द एचपी। यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स दिखाते हुए ही इज रियली लो टू द एचपी एज वेल। जिगल इज गोइंग टू बी द सोलमन स्टार्टिंग इन HORAA esports। शायद से यहाँ पर इन लोगों का अंत होता हुआ एंड HORAA esports दे माइट एक्चुअली गेट आउट ऑफ द मैच। फैसले की घड़ी यहाँ पर बनती हुई टीम अल्फा गेमिंग 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों के पास में। जायल डाउन हो चुके हैं। डॉक एक्चुअली पिछले मैच में हम लोगों को खेलते हुए देखने को मिले थे बट इस मैच के अंदर यहाँ पर टीम अल्फा esports के मैं बोलूँगा अल्फा गेमिंग के डॉक नहीं है एंड अभी के लिए नॉन स्ट्रीम रेड फोर्सेस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक ग्रेनेड यहाँ पर जाता हुआ ग्रेनेड दिस इज लुकिंग गुड बट शायद से कनेक्शन नहीं लेके गए। नॉन स्ट्रीम रेड फोर्सेस टीम 11 के अगेंस्ट एक और मोलोटॉव यहाँ पर डाला जाएगा। बिल्कुल जी हाँ ये जो मोलोटॉव शायद से कनेक्ट करके जाएगी। अभी तक यहाँ पे कोई भी मोलोटॉव का कनेक्शन नहीं। डुप्लेक्स किया प्लेयर यहाँ पर डाउन। नॉन स्ट्रीम रेड फोर्सेस ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कवर फायर नहीं था एंड इसके साथ में यहाँ पर ओपन सिनेरियोस के अंदर गए जिसकी वजह से यहाँ पर वो प्लेयर डाउन हुआ एंड शायद से उन प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनती हुई। नॉन स्ट्रीम रेड फोर्सेस और भी ज्यादा लोग ऊपर स्प्रेज आते हुए 4 एलिमिनेशन लोगों के पास में। टीम सीक्रेट्स के जू के डाउन एंड टीम सीक्रेट्स दे आर गॉन। मैच से लॉबी तक का रास्ता और वो जो सफर है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक। टीम सीक्रेट्स हो तो एलिमिनेट टॉप 6 टीम्स 14 प्लेयर्स और देखते हैं कौन सी टीम लेके जाएगी इस चिकन डिनर को अपने हित के अंदर। देखिए चिकन डिनर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट चिकन डिनर। HORAA esports जिगल अपनी सांसों को थाम के बैठ जाए तो शायद से मैं बोलूँगा बेहतर रह सकता है। जोन का एक एडवांटेज रहेगा। जैसे ही प्लेयर्स आएंगे अपनी एस्ट्रल के को उठा के प्लेयर्स को नॉकआउट करने का ट्राई करेंगे बट द थिंग इज टीम 11 व्हाट इज गोइंग टू बी द केस सिनेरियो। क्या टीम 11 यहाँ पर HORAA esports के उस आखिरी खिलाड़ी के ऊपर पुश करेंगे? क्या उन लोगों को इन्फॉर्मेशन है? क्या उन लोगों को इंटेंट है? हाथ में रहेगी यहाँ पर एक शॉटगन। 11 आगे बढ़ते हुए जिगल जी हाँ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी एंड के साथ में यहाँ पर टीम 11 के खिलाड़ी डाउन करेंगे उस खिलाड़ी को एंड HORAA esports होती हुई यहाँ से बाहर and they are gone out of the match। Man, this is one hell of a match and team DRX
डुप्लेक्स किया टीम अल्फा गेमिंग, टीम 11 नॉन्गशिम रेड फोर्सेस एंड DRX। देखिए अभी भी यहाँ पर हम लोग को 4 कोरियन टीम्स देखने को मिल जाएंगी। सो ये कोरियन डोमिनेशन नहीं है तो और क्या है, ये अगर कोरियन एग्रेशन नहीं है तो और क्या है, क्योंकि हर एक टीम यहाँ पर अपना एग्रेशन दिखाती हुई, हर एक टीम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती हुई। टीम अल्फा गेमिंग अभी के लिए यहाँ पर एक अकेली टीम जो एक दूसरे रीजन से आएगी, तीनों प्लेयर्स यहाँ पर जिंदा है, एक प्लेयर का यहाँ पर खाओ यहाँ भले भुगतना पड़े, बट द थिंग इज जो जोन है उसके अंदर शायद से आ चुके हैं। अभी के लिए यहाँ पर नॉन्गशिम रेड फोर्स का प्लेयर यहाँ पर डाउन चुका है, डिफ्यूज ही इज गॉन। अभी से अपने यहाँ पर एक और शॉट आएगा फेरारी की तरफ से, टीम अल्फा गेमिंग द बैक ऑन द फीट। क्या आप प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे या फिर टीम 11 ये फाइनली कोरियन टीम बढ़ती हुई उठती हुई इस टीम की तरफ से यहाँ पर हम लोगों ने चिकन डिनर्स नहीं देखे। एंड पुम्बा अभी के लिए यहाँ पर जिंदा, P90 यहाँ पर XZY की तरफ से हम लोग को देखने को मिल जाएगी। एंड टीम 11 के पुम्बा सोलो स्टार्टिंग DRX के अगेंस्ट एक 1v2 सिनेरियो के अंदर ग्रेनेड की यहाँ पर पिन जो है पिन आउट करी जाएगी। ग्रेनेड क्या कनेक्ट करके जाएगा या फिर नहीं, और शायद से वो ग्रेनेड है बिल्कुल ऑन पॉइंट नहीं। एंड इस साथ में यहाँ पर एक और प्लेयर को डाउन किया जाएगा। पुम्बा इज रियली क्लोज टू मेक दैट 1v2 मोनोटॉप यहाँ पर जाएगी, कनेक्ट करके जा सकती है। ऊपर इसका एडवांटेज, ऊपर हाइट का एडवांटेज एंड देयर वी हैव इट, किल्स होते हुए यहाँ पर बाहर। नॉन्गशिम रेड फोर्सेस डूम एंड स्टार्टिंग एंड टॉप 3 की टीम्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएंगी। एंड स्टिल यहाँ से जैसे ही टीम अल्फा गेमिंग गई हम लोगों को 3 पूरी टीम्स देखने को मिल जाएंगी हमारी स्क्रीन के ऊपर। देखिए चलिए एक बारी क्वेश्चन पूछते हैं हमारी ऑडियंस से, लेट्स जस्ट हैव सम प्रेडिक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ ऑडियंस एज वेल। देखिए एक और टीम हम लोग को एलिमिनेशन देखने मिलेगा एंड टीम 11 यहाँ से बाहर हो चुकी है। एंड शायद से आप लोगों से प्रेडिक्शन पूछने से पहले ही आंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टीम नॉन्गशिम रेड फोर्सेस बाहर होती हुई एंड डुप्लेक्स किया इस विनर चिकन डिनर को अपने हित में लेके गई, बेहतरीन परफॉर्म यहाँ पर किया। एंड इस साथ में यहाँ पर टीम नॉन्गशिम रेड फोर्सेस हुए बाहर एंड टीम डुप्लेक्स किया बेहतरीन चिकन डिनर एंड दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर द होल टीम। मैं ऑडियंस आप लोगों से एक आप लोगों की प्रेडिक्शन पूछने वाला था, उससे पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन देखा एंड इस साथ में यहाँ पर नॉन्गशिम रेड फोर्सेस इट वाज लुकिंग वेरी बैड फॉर देम। एंड मेरे को लग रहा था वो जो आखिरी प्लेयर था उन्होंने अपने ही ग्रेनेड से अपने आप को तोड़ लिया था। वाज इट ट्रू, वाज इट रॉन्ग, एक बार हम लोग जरूर मैं देखना चाहूँगा हमारे मैच हाइलाइट्स के ऊपर। एंड मैच हाइलाइट्स के ऊपर जो हम लोग नजर डालेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो नॉन्गशिम रेड फोर्सेस के अगेंस्ट आया था। मैच हाइलाइट्स हमारी स्क्रीन के ऊपर। टीम 4 थ्राइव्स, देखिए इस 4v4 कमोशन के अंदर टीम ऑल्टर ईगोस एडवांटेज यहाँ पर नहीं था उन लोगों के पास में, बट स्टिल फलक एंड IQQ ये जो जुगलबंदी यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स ने दिखाई थी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। कल के दिन के अंदर हम लोग को थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद से वो जो रीमेक थी, वो जो हिस्ट्री थी, वो दोबारा से रिपीट हो सकती है रोजमेरी की तरफ से, बट इट डिड नॉट हैपन। द जेवियर्स के खिलाड़ी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 0 एलिमिनेशन थे इन लोगों के पास में। एलिमिनेशन के खिताब यहाँ पर लेते गए थे टीम एसाइड esports, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीन खेली थी। बट द थिंग इज टीम 4 थ्राइव्स के अगेंस्ट ये जो थर्ड पार्टी आई थी, उस थर्ड पार्टी के अंदर एसाइड esports यहाँ पर बहुत ही तरीके से खेला एंड जीत के गए थे। बट एसाइड esports उन लोगों पर भी यहाँ पर एक थर्ड पार्टी आती हुई थी एंड इसके साथ में यहाँ पर वो लोग भी बाहर होते। टीम 11 वॉइन esports को सेक्शन के ऊपर बाहर किया था एंड वार्गये ग्रेनेड्स के ऊपर यहाँ पर स्लैमन आता हुआ था एंड बहुत ज़्यादा ग्रेनेड्स मैं बोलूँगा इन लोगों के ऊपर दागे गए थे, जिसकी वजह से दिक्कतें इन लोगों के लिए बनी। मौला ये जो ग्रेनेड था आखिरी का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ग्रेनेड, ये जो स्प्रे था दामी की तरफ से बेहतरीन स्प्रे था एंड इसके साथ में जो 1v1 था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1v1 था मैं बोलूँगा। बट टीम 11 यहाँ पर शायद से जो जिगल की इन्फॉर्मेशन थी वो थी, और उनको पता था कि कंपाउंड के अंदर एक प्लेयर होल्ड कर रहा था, दे वर रेडी विद देयर शॉटगन्स, दे वर रेडी विद एवरीथिंग। राइट नाउ टीम अल्फा गेमिंग का यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट आता हुआ, ये एक 1v2 था पुम्बा की तरफ से, भी बेहतरीन एक 1v2 हम लोगों ने देखा। मोनोटॉप्स यहाँ पर दागी गई थी, बट द थिंग इज दिस वन, ये जो अपर रिच का एडवांटेज होता है, अपर रिच तो नहीं, ये जो हाइट का एडवांटेज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बखूबी तरीके से प्लेयर ने यूज़ किया। ये ग्रेनेड की मैं बार बात कर रहा था एंड शायद से वो जो ग्रेनेड था अपने ही ऊपर डाला गया था एंड प्लेयर ने अपने आप को यहाँ पर बाहर कर लिया था एंड एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलेगा उनको। बट नॉन्गशिम रेड फोर्सेस का वो खिलाड़ी लेके जाएगा बेहतरीन 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड 4 नॉकआउट्स। एंड जो भी ऑडियंस अभी यहाँ पर ज्वाइन करिए, देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जाइए जाके 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। देखिए अगर आप लोगों को एशिया बैटल वॉइस चैप्टर 4 देखना है, अगर आप लोगों को गिवअवेज देखने हैं, अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी ज़्यादा सरप्राइजेस देखने हैं, तो जाइए जल्दी से आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप ऑन सपोर्टिंग, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन मैचेस लेके आएंगे, ऐसे ही बेहतरीन हम लोग आप लोगों के लिए टूर्नामेंट्स लेके आएंगे। एक बार यहाँ पर विनिंग टीम स्टैट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। डुप्लेक्स किया यहाँ पर लेके जाएगी इस विनर चिकन डिनर को 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ में। देखिए 4 मैं बोलूँगा ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स तो थे नहीं, बट एक डिसेंट नंबर ऑफ एलिमिनेशन पॉइंट एंड इसी के साथ में यहाँ पर टीम डुप्लेक्स किया बेहतरीन मैच खेला उन लोगों ने और यहाँ से चिकन डिनर अपने नाम लेके गए थे। 14 पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों को मिलेंगे एंड मैं बोलूँगा शायद से यहाँ पर डुप्लेक्स किया they did perform really good, but the thing is वहां पर उन लोगों के पास में ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं थे। नजर डालेंगे हमारी टॉप 4 टीम्स के ऊपर, एक्चुअली टॉप 4 प्लेयर्स के ऊपर, माय बैड। एंड एसआईटी स्पोर्ट्स के पैंथर 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स इनकी तरफ से, वे पुम्बा लेके जाएंगे 3 एलिमिनेशंस एंड एरो फ्रॉम साइड ऑफ टीम एपीजी ये भी लेके जाएंगे 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स। सो ओवरऑल it was a good one. And Panther, he also performed really good. And as we can see, Nongshin Net Forces, they were really close to make the second dinner happen, but it did not happen. Top 4 teams on the screen for the next upcoming match. Yeah, APG, Nongshim, and DRX 11 as well, doing a really good, performance, having a really good performance going into this one. Well, hoping to see them do better going into the next, but keep an eye out for them for sure. As we are done with the first cycle of maps, we're looking at the next and the final cycle here in the playoff situation. 3 maps to go: Rondo, Erangel, Miramar. That's it. After that, we will crown our top 16, top 18 going into the grand finals. True, these are teams to watch out into the upcoming one. And match summary हमारी स्क्रीन के ऊपर 60 एलिमिनेशन पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, एक्चुअली टोटल एलिमिनेशंस देखे 5, ग्रेनेड एलिमिनेशन हम लोगों ने देखे 3, एयर ड्रॉप्स वर लूटेड एंड 6000 प्लस हीलिंग्स वर पैच्ड ऑफ एंड लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन यहाँ पर आता हुआ पोरक्यू की तरफ से। एंड दिस वाज आई मीन डुप्लेक्स फॉर यू ऑल अगेन एंड लेट्स सी यहाँ पर 386 मीटर वाज द लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन इनकमिंग। एंड देखिए यहाँ पर डुप्लेक्स किया, अगर मैं बोलूँगा ऐसे ही परफॉर्म करते रहे और ऐसे ही यहाँ पर परफॉर्मेंस टीम की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगी, सो मे बी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एंड डुप्लेक्स किया ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, दिस टीम इज लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट देयर फ्रॉम द रीजन ऑफ कोरिया। ऐसी यहाँ पर परफॉर्मेंस ये टीम देती रहेगी एंड टू बी ऑनेस्ट कोरियन टीम एंड कोरियन रीजन दे आर जस्ट टोटली डोमिनेटिंग राइट नाउ। आई मीन they are here to totally dominate and they will be dominating. This is duplex किया for you all। नजर डालते हैं हमारे यहाँ पर एक बारी मैच रैंकिंग्स के ऊपर एंड duplex किया right now they will be taking 14 points. Nongshin Red Forces will be taking 13. Team 11 will be taking 11 points. So very ironic. I mean, Team 11 will be taking 11, so which is really good. And DRX will be taking 10. And now we can see Team APG will be taking 9 and जहाँ से 6 spot तक 18वें स्पॉट तक की जो टीम्स थी बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हुई। बट एसाइड esports दाद देनी पड़ेगी इस टीम के बारे में भी क्योंकि इन लोगों के पास में 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स थे। HORAA esports उन लोगों के पास में भी 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स थे। बट द थिंग वाज दैट एसाइड esports दे हैड अ रियली गुड इनिशिएशन बट उस इनिशिएशन को कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। नजर डालेंगे हम लोग यहाँ पर एक बारी ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर भी इसके बाद में। एंड हम लोग को पता है जो भी टीम्स यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग्स के पेज 1 के ऊपर हैं दे आर हैविंग अ गुड वन राइट। नोंगशिम रेड फोर्सेस, डीआरएक्स, टीम डुप्लेक्स किया, आरआरक्यू, टीम एफएन, टीम सीक्रेट्स, टीम बीटा, टीम वॉइन esports एंड HORAA esports पहले पेज के ऊपर and no problems whatsoever। and there are actually 3 teams edge and तीनों ही कोरियन टीम्स है जिन्होंने 200 से ज्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए। एंड डीआरएक्स एंड डुप्लेक्स किया, कितना ज्यादा टफ कंपटीशन चलता हुआ। 133 elimination points डुप्लेक्स किया के पास में, 136 रहेंगे डीआरएक्स के पास में। so that competition is looking way too insane right now. Yeah, that is true. DRS, on the other hand, 148 points. Flash, 145, 143 for 4 tries. Pandum on 141, 127 for D Xavier.
SCYTES on 124, still holding on to their position. Boom 121, SKYFORCE on 119, 103 for ASI8 as they make their way to the top 18. Alpha Gaming now on the verge of qualifying to 101. Really amazing to see them get a jump too, but Alter Ego Ares with just 1 point in the last 2 matches apiece, it's looking really grim for them. But I'm pretty sure they're going to be jumping up some numbers as well. TDK, 2K, WARGYE, HKG, BLUG, 11, and 50 Esports. The rest of the teams in the top, in the bottom of the scoreboard. That's true. Overall MVP, it's going to be Nongshim Poses, and that player is going to be joining in Fadeless. वो जो legendary supremacy थी, वो जो legendary legacy थी, अभी यहाँ पर वो चीज़ हम लोग को नहीं देखने को मिलेगी. Bigetron by Vitality, I mean, he has been dethroned right now. Edge, I mean, 3 players right now, they are from Korea. It's just insane. And 2 of the players are DRX. Is even more crazier now. Indeed. Federals, I did not expect him to get taken down from the #1 spot, but Hyunbin, I mean, he's doing really well right now. He's still not hitting that 10,000 mark in terms of damage, but he's on the verge of doing so. So looking forward to see how the next few games go for him, so we can see if they can actually capitalize. And maybe he's probably going to be crossing that 10,000 mark as well soon. True, man. I mean, he needs only 300 plus more damage, and Nongshim Red Forces and all the Korean teams, they're performing really, really good. And I mean, that's how the performance we got to be witnessing. But we are back here, and I mean, I'm so on the desk right now. We'll be having Edge soon enough. But still, everyone watching out there, jaldi se jaiye and abhi jaake subscribe kariye. But till then, we'll be having a short break.
impossible. Ladies and gentlemen, and we are back again. I mean, you guys were missing Edge for sure because I was on the solo cam and I was missing you more than anyone out there. And Edge, we are back here again with a bang because next match is gonna be Rondo again, and we gotta be repeating the cycle. And the audience watching out there, you're welcome again after a really short break. And hopefully, आप लोगों ने जाके अपने जितने भी snacks है, popcorns है, and maybe those soft drinks and जो भी you guys right love to have in snacks, जल्दी से जाके refill कर लियो क्योंकि next match रहेगा Rondo का. You guys can munch on your snacks to be honest because we here will put up a show, and especially the teams will put up a show for us as well. But Edge, you're here back again, and Edge, it's gonna be Rondo. What are your expectations in coming? Do you think one more time we can witness that Korean team making up a move and taking that chicken dinner? I think so too. I mean, once again, on the map of Miramar, it was also another Korean team coming out on top. And with the way things are going, right, Rondo is a very aggressive map. And the team that's going to be really aggressive, I mean, teams that are going to be really aggressive are probably going to be the side of Korean region, D plus Kia coming in. We have 11 who's struggling, the only team. So I'm hopefully they can be the ones stepping up quite a bit. This game, you did see they were able to get a little bit of points. They're going into the previous ones. But on the other hand, Nongshim and DRX as well, both of these teams looking really promising in taking those chicken dinners to themselves. DRX already on the other hand, they've already got 5 for themselves. Nongshim on 4. So there's a lot of chicken dinners between the Korean region. But yeah, hopefully we can see a Korean region again. But I'm looking forward to see, still waiting to see LPG get a chicken dinner for themselves. ASI8 once again in a good position right now. Congratulations to that. Also, Vigo on the verge of qualifying too. It's going to be really tough. It's going to be really hard for these teams, especially Boom as well. I mean, they might be pushed down too if they don't pick up the pace. So it's going to be a very important matchup. And Rondo, the last time we'll be witnessing this here in the playoffs, the high-scoring match. This is going to be it. This is gonna be it, man. I mean, good level of performance and Edge. The last match, it was really good. Let me give you a recap because we have seen HORAA esports. They were also climbing up, but especially Team 11, they were so close to make that chicken dinner, yet too far again. So they fell short. And I mean, HORAA esports, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा अच्छी performance. देखिए, overall standings के अंदर top 9 के अंदर है. So it shows the consistency of level they are showing up. And I guess we will be witnessing the legendary fight again in the grand finals. And you know what I'm talking about? The 4v4 fight and the map of Rangal and the Yasnaya. You know what it is? It's going to be Flash versus HORAA esports. It feels like it is going to be happening once again. It's been a while. It's been a long time coming. We did witness that in the playoffs as well. And well, guess what? It wasn't just Flash dominating. It was HORAA esports actually putting the screw to the players on the side of Flash this time around. So maybe who knows? It's going to be a similar situation. But we will be witnessing both of that in the grand finals later on. But for now, we still have 3 more matches left here in the playoffs. The last day of the Phase 3 playoffs here. Chapter 3 coming to a close. I mean, gotta say, I'll miss all this for sure. I mean, yes, it's all a massacre happening right now. And especially Asia Balbo's chapter 3, everything was really good. Be it matches, be it qualifiers or anything. Everything is just on point. Right? And from the start itself, beat any team, right? And beat any tournament, teams, they go for a very slow-paced gameplay. But here, it's not going to be the same because the event roadmap, it's like that. From the start of the day, you have to show up great, right? And at the end of the day, we can see all of the teams, they are putting up a show and they're trying their level best to make those chicken dinner happen. And especially the Korean teams, I mean, we can never go wrong with these Korean teams, man. They are putting up a show right now. Duplex, Kia, Nongshim, Red Forces, DRX, Team 11 right now, they fell short. But still, everyone, they're performing really well. But right now, Nongshim, Red Forces, Duplex, Kia and DRX, they're on top right now. FN Shojong, we are still missing them because they're in Group Blue. But Duplex, Kia and Team FN, right now, they don't have any competition. I mean, they don't. They definitely do not have any competition right now. And
they're picking up the numbers like it's easy. You know, they're just getting Yeah. chicken dinners like it's nothing, like it's homework for a third year student. But anyway, coming in to the matches once again. The maps, of course, Rondo, Erangel, Miramar. Rondo, we all know the teams that come into our head are Force Drives and Team Secret with the way that they've performed in previous matches, in the previous phases as well. So hopefully this Rondo is going to be better for Force Drives. Last time, not so much. I mean, yesterday we did see the second Rondo, and the day before that too, the second Rondo was very dominant for the side of Force Drives. So hopefully this time again, if not the chicken dinner, then at least some insane amount of points. जी हाँ एंड नेक्स्ट मैच रहेगा यहाँ पर हमारा चौथा मुकाबला आज के दिन के अंदर एंड नाउ वी कैन सी रोंडो अपकमिंग एंड देखते हैं ये जो केओस है कैसा रहेगा एंड कौन सी टीम लेके जाएगी चिकन डिनर को आगे आने वाले मैच के अंदर एंड एज आई मीन ऑल दीज 5 मैचेस ऑल दीज 6 मैचेस दे गोना बी इंटेंस लास्ट का यहाँ पर रोंडो आज के दिन का आखिरी रोंडो आज के फेज क्वालिफायर्स डे नंबर 6 का आखिरी राउंड और उसके बाद सीधा ग्रैंड फाइनल्स के अंदर हम लोग को ये जो राउंड का मुकाबला देखने को मिलेगा. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स वाचिंग आउट देयर, इट इज गोना बी राउंडो एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा फेज थर्ड का क्वालिफायर्स. एंड देखिए 34th मैच है एंड स्टिल इट इज पुटिंग अप अ शो. एंड देखते हैं यहाँ पर कौन सी टीम्स लेके जाएगी चिकन डिनर. बरेज flight path के ऊपर नजर डालें, so it's gonna be a complex flight path, and to be honest, Distract Neos Factory दोनों ही flight path के बीच में यहाँ पर आता हुआ, so no problem whatsoever right now. Multi-flight path is always fun to watch. A lot of these teams will have a lot of opportunities to go to a lot of parts of the map. A lot of points on the table, a lot of stakes on the table, a lot of pressure on a lot of these teams, especially in 16th to 20th position. Those are the teams that will be sweating right now. Difference between 2K, actually WARGYE, 2K, Alter-Ego, APG is not that big. So all these teams will be looking forward to see if they can actually increase their lead, or if they can secure their position into the grand finals. Not confirmed just yet, but they're on the verge of capitalizing. They're on the verge of qualifying. As Rondo comes in, we'll be looking at APG immediately dropping down the players on the side of HORAA Esports. And Force Drive picking up the pieces once again here as C24 opens things up for them. Gets a first elimination. Things are looking good. They do drop off near on New York's Factory again as 2K. Unfortunate situation as they get taken down pretty early too. 4 players going out. I did not expect that. Here's the thing. They will not be going for the recall, and they only have 2 more games. They are 97 points. They're on the verge of getting the qualification as well. But that is not going to be possible anymore. I mean, the next 2 games are going to be very, very crucial for them. But this one was the point scorer for them. But unfortunately, they've gone away from it. And Team Secret, on the other hand, surviving with 3 players at the moment, will not be able to go for the recall just yet. They're waiting for that situation. As ZRX will immediately go for the recall, as Binny is going to be back in the server. They have no eliminations at the moment. As 11, they pick up 3 pretty early into the game. They're looking good as well with 63 points. But unfortunately, as I said, their situation is grim, and their entire journey to the grand final is pretty much has cut short already. Malak, on the other hand, is going to get dropped. Fourth Drive still surviving with 3 players. 1 elimination already. HORAA Esports surpassing 4 tries. Pandum, Xavier, really good situation. Boom. At the moment, are going to be happy, but still not going to be easy for them to secure a spot in the grand final. 122. They need at least 10 more points, and they'll be in a much more safe position. At the moment, they're in 10th position between these two groups, but I think on the overall they're like 15 or 16 tops. Their side, APG, Alter-Ego, WARGYE, the teams that are going to be battling it out for the top 18 at the moment, as Rondo is turning out to be a bloodbath right off the start. As APG, they will lose 1 more. Ferrari gets taken down, might be dropped immediately as APG trying to now focus out in the open. Arrow
The grenade was good. Refuse is back though. Refuse is here. And I don't think the play is going to be coming in. And so, what a beautiful shot there. Coming in immediately, getting themselves another point here. Alpha Gaming, 4 eliminations with 2 players bleeding. They will have them a backup. But Alpha Gaming, this is the Alpha Gaming we know. This is the squad that we were waiting to see since phase 1. And now finally they're putting up a show. As Uzaifa, they will steal a finish here onto Aero on the side of Alpha Gaming. Both tribes are up to 3 now. Thanks to Uzaifa getting 1 more as Team Pandum. They will be in a situation where they can get 3 that's versatile, all 3 himself. All 3 go Ares on the other hand. A very important game for them. Can they get it? Is it gonna be good? Or is it gonna be an unfortunate situation again? Zaifa on the other hand, holding on to his position, will be able to get 1 more, I believe. Should be able to get 1 more. There's backup as well. There's backup as well. And Alpha Gaming, they get taken down. 4 eliminations. We thought maybe they'll get more. But unfortunately, the 4 is all they get. And they're already gone out of the situation. जी हाँ, एंड इसके साथ में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम अल्टर ईगोज एरीज एलिमिनेशन पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर नहीं आएंगे एंड टीम पैंडम अभी के लिए यहाँ पर 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स इन लोगों को मिल चुके हैं टीम वॉर्गये इन लोगों को जस्ट अगेंस्ट एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग बिकॉज़ टीम 4 ट्राइब्स अभी के लिए 6 एलिमिनेशन एंड न्यूयॉर्क फैक्ट्री के शहजादे दे आर बैक हियर अगेन Going for the knockout and साथ में यहाँ पर IQ पहला knockout यहाँ पर निकालेंगे and 7वां elimination points किताब में लिखता हुआ and इसके साथ में यहाँ पर कब्जा बनाते हुए team 4 tribes के खिलाड़ी Edge they're performing really good and finally 4 tribes they're making a huge comeback on the map of Rono. A comeback is on the cards for sure. Not gonna be easy. But these teams at the bottom, right? WARGYE especially, Alter Egos as well. ASIA on the words. Very important games for them. And look at Krypton. Krypton is going to be going down. Xavier will be able to take him down immediately. 11's having a good start. 5 eliminations coming into this. As WARGYE will lose a couple players here to the players on the side of Pandum. WARGYE down to 3 players with 3 eliminations only. As Pandum, they get 4 eliminations right now. True. And Team Pandum, देखिए यहाँ पर एक और एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए लेके गए हैं एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम पैंडम अभी के लिए टीम वॉर्गये के अगेंस्ट जो फाइट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होती हुई इस मुकाबले के अंदर टीम 11 भी आ चुकी है एज सो 3 टीम्स ऑन अ सिंगल सेक्शन ऑफ दिस रोनो एंड यहाँ पर पैंडम के खिलाड़ी Versatile ने यहाँ पर एक शायद से 1v4 किया था if I'm not wrong edge and he is able to capitalize 4 elimination. So control यहाँ पर बना के रखेंगे मौला को यहाँ पर दुबई से डाउन किया था 5वां elimination लेके जाएंगे Versatile he is on up to something right now. This game is very important in terms of points securing. You know, just getting as many points as possible and making sure that you have a decent position on the overall so you can take a chill pill the next couple of matches. All of these teams fighting for those points and Pandum at the moment fighting for their life as Versatile. He gets taken out. Holland bleeding. Seekim and Brankia the only one standing. Team Pandum. 146 points on the overall. 5 eliminations into this one, and they're not done yet. जी हाँ, and इसके साथ में 4 tries, 8 eliminations और
यहाँ से इस गेम के अंदर बेहतरीन तरीके से बरकत करते हुए, एंड यही इजाफा टीम फोर्स राइट्स को करना था। एंड फैंस खुश, सब लोग खुश, बट और भी ज्यादा सेलिब्रेशंस होंगे जब यहाँ पर टीम फोर्स राइट्स लेके जाएगी इस कंटेनर को। इट्स रियली अर्ली टू से एनीथिंग, देखते हैं यहाँ पर टीम फोर्स राइट्स क्या करती है। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर एक दफा नजर डालेंगे द जेवियर्स एंड टीम पैंडम के खिलाड़ियों के अगेंस्ट। बट बूम स्पोर्ट्स का एक खिलाड़ी डाउन होता हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्लू स्पोर्ट्स की टीम रहेगी। एंड कुछ 1v1 के एंगेजमेंट के अंदर कार्डियो आएंगे। एंड ब्लू स्पोर्ट्स ये जो टीम है एक बेहतरीन टीम, बट अभी के लिए एच टीम डुप्लेक्स किया को भले ही एलिमिनेट किया, बट तीसरे पेज के ऊपर है ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर रिमाइंड यू एच। सो टीम ब्लू स्पोर्ट्स, आई गेस द जर्नी फॉर देम इज गोइंग टू बी गेटिंग ओवर इन टाइम सून। Yeah, Glue Esports is having a tough time at AE2. Only able to get 2 points. This is not a great situation for them. This is just turning out to be a disaster of a match. Yet again, and all three areas today, the entire day, 4-1-1-2. I believe those are the score lines they were able to accumulate. I mean, those are the kills that Rosemary alone gets in a single match. This time, that's their 4 games score. I'm not really sure what's going wrong for them, but whatever it is, it's going, you know, insanely wrong for them, and it's not something that they whoa Hoxie, what was that? What in the world was that? Jumps down, tacks up the player, and then the player zone does the rest. Oh my lord, that was so cool. That was indeed cool. Nongshim that poses ये जो कोरियन टीम है, अभी के लिए देखिए मजीद प्लेयर्स जिंदा लॉबी के अंदर, 12 टीम्स एंड 45 प्लेयर्स एंड 10 मिनट का ये जो गेम है अभी तक बीत चुका है। एंड इस लम्हे के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे स्टेज के अंदर ज़्यादा फाइट्स नहीं आएंगी एज लाजमी तरीके से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेलते हुए। और नॉन्गशिम डेड फोर्सेस टॉप 3 के अंदर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 टीम्स देखने को मिलेंगी जो रहेंगे कोरिया के रीजन से। नॉन्गशिम डेड फोर्सेस, टीम डुप्लेक्स किया एंड DRX। देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियोस बिल्डअप होते हैं। एंड एज वी कैन सी द जोन। Well, the zone, you can, I mean, see it. It's leaning towards the western part of the map at the moment, and teams like is that Glue? Yeah, they're really far away. I mean, Glue with 73 points, they need a monstrous game here to have a chance, to have any sort of chance to make their way into the grand finals. They need at least 100 points by the end of this one. So that's a 30 bomber they need here. Do they have the potential? They definitely do. Do they have the capability? Yes. But is it looking like it might come in? I don't really know. That is what's scary. अभी के लिए शांति। और esports अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए एक और प्लेयर को स्पॉट जरूर कर देंगे यहाँ पे, पर अभी थोड़ी स्लो पेस गेम दिखाते हुए as Team Secret and DRX. They're probably going to be next in line to take on the fight against each other. TRE is gone here for the side of DRX, so they've got to be careful with HORAA esports. There you go, Nongshim. उनको spot कर लेंगे जरूर और एक immediate retaliation, एक और trade यहाँ पे आता हुआ। HORAA esports एक खिलाड़ी को खो जाएंगे जरूर, 2 elimination already उनके नाम। Team Secret can actually third party this. Nongshim, they're also feeling the heat coming in. They will lose 1. But they're up to 228 points. D plus Kia have already gone into the picture here. SKYFORCE was the screws to the players on the side of DRX. Oxy gets taken on. That's another good grenade. QXC! Sky! बहुत ही बेहतरीन ग्रेनेड, एक और प्लेयर को टेक डाउन कर देंगे। इस बार एलिमिनेशन पॉइंट भी अपने नाम, क्योंकि इंस्टेंट कंफर्मेशन कमिंग इन। एंड लुक एट फलक, 4 थ्राइस भी यहाँ पे मौजूद। फलक एक और फ्रैग अपने नाम करते हुए। एंड हॉक्सी, I mean, his elimination is going to be stolen. But Kibo taking no players on the side of Team Secret now. HORAA, Sky should be getting a freebie. एक और प्लेयर को confirm कर देंगे यहाँ पे जरूर। एक और पॉइंट उनके नाम, 4 पॉइंट नाउ।
होरा के नाम। यहाँ पे 3 प्लेयर अभी भी जिंदा है। नो एक्चुअली एक ही प्लेयर अभी अनफॉर्चुनेटली स्काई ऑल्सो जस्ट टेकन डाउन। बट यहाँ पे बूम की मदद से टीम सीक्रेट हो जाएगी बाहर। जी हाँ, एंड इसके साथ में यहाँ पर 4 ट्राइब्स देखिए 9 एलिमिनेशन लेके गए हैं। एंड शुरुआती जब जैसे ही न्यूयॉर्क फैक्ट्री के ऊपर उतरे थे वहीं से दबदबा बनाते हुए और वो जो अपना कंट्रोल है उसको कायम करके जाएंगे। IQ स्काई को डाउन करेंगे होरा esports की तरफ से। एंड शायद से होरा esports सर्वाइव करेंगे एक सोलो मैन प्लेयर के साथ में। बट स्टिल DRX वर्सेस टीम 4 ट्राइब्स, पाकिस्तान वर्सेस कोरिया। बेनी इसी सोलो में स्टैंडिंग। जी हाँ, इसके साथ में आप 4 ट्राइब्स के जंगल में फंसेंगे। बेनी सोलो में स्टैंडिंग एंड आई डोंट थिंक सो ही कैन सर्वाइव। 4 ट्राइब्स के हुज़ाइफा सी चेंज करेंगे, ग्रेनेड यहाँ पर आएगा एंड IQ dominate करेंगे एंड टीम DRX बाहर होते हुए। दिस मार्क्स एलिमिनेशन फॉर द होल टीम। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर आते हुए 20 सेकंड के अंदर जो जोन है वो भी क्लोज हो जाएगा। जवाबी हमला यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स हालांकि दे रही है बट टीम नॉनस्टॉप रेड फोर्स के वो जो खिलाड़ी हैं जोन से अंदर आएंगे। डोमिनेशन का टाइटल यहाँ पर मिलता हुआ IQQ को। बट द थिंग इज टीम 4 ट्राइब्स वर्सेस टीम नॉनस्टॉप रेड फोर्सेस, ये जो फाइट है दोबारा से कभी भी इनिशिएट हो सकती है। एंड टीम NS राइट नाउ, दिस टीम दे आर द डोमिनेटर्स of the whole lobby. 228 points हैं जिन लोगों के पास में। Let me remind you one more time, they're having 228 points right now. So टेबल टॉप यहाँ पर करते हुए इन प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स एंड 4 ट्राइब्स के अगेंस्ट ये जो फाइट है कभी भी इनिशिएट हो सकती है, कभी भी टकराव यहाँ पर हो सकती है। बट टीम पैंडम के खिलाड़ी थोड़े बहुत मुश्किलात के अंदर आते हुए एंड दे गोना बी रियली केयरफुल। जिगल फॉर esports के आखिरी खिलाड़ी। एक बार हम लोग मिनी मैप के ऊपर नजर डालें। सो 4 ट्राइब्स दे डोंट हैव अ वे to rotate anywhere. अगर वो लेफ्ट साइड से रोटेट करेंगे they have WOIN esports right, so उन लोगों के अगेंस्ट फाइट लेनी पड़ेगी। if they want to come up into the zone उन लोगों के अगेंस्ट नॉनस्टॉप रेड फोर्सेस है। अगर राइट साइड से पूरा एक रोटेशन काटना चाहते हैं ईस्ट साइड से, so they are having team A side esports in front of them. so 4 tribes, what is going to be your play? क्या यहाँ पर नॉनस्टॉप रेड फोर्सेस के अगेंस्ट खेल के डायरेक्टली डोमिनेट करेंगे एंड अपना रास्ता बनाएंगे जोन के अंदर? That is what we have to wait and watch. The teams in the second and fourth position, second to fourth position are already gone here between both these two groups. Deep DRS and Team Secret, all of them are gone. Alright, esports out of the picture too. Their position is really good. I mean, 163. I believe this is the best performance coming up from them in a really long time. This is what I've been waiting to see. APG, 105 points. Alter Ego, 101. Struggling, and it'll be heartbreaking to see any of these teams not making it to the grand finals. Alpha Gaming actually didn't make it through in phase 1 and phase 2. Maybe coming into phase 3, this is their time. As Pandum, they get taken out in 9th position with 7 eliminations. यहाँ बिल्कुल इसी के साथ में यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स के खिलाड़ी एग्जीक्यूशन लाजवाब और प्लानिंग मुस्तकाम। और इसी के साथ में 4 ट्राइब्स T24 OP 13 एलिमिनेशन यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स के पास में। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हुज़ाइफा, ही इज ऑन फायर राइट नाउ। एंड ये जो एंड गेम है नाजुक लम्बा हम लोग को देखने को मिल सकता है कभी भी, बट 4 ट्राइब्स राइट नाउ दे आर डोमिनेटिंग। हुज़ाइफा यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। द ज़ेवियर्स के खिलाड़ी यहाँ पर शॉट्स लेके जाएंगे, हेडशॉट के साथ में यहाँ पर डाउन किया जाएगा। क्या रिवाइवल यहाँ पर पॉसिबल है? क्या प्लेयर को यहाँ पर रिवाइव किया जा सकता है? जी हाँ, इसके साथ में यहाँ पर T24 OP द ज़ेवियर्स के ड्रेसिल को डाउन करेंगे। द ज़ेवियर्स के खिलाड़ी आउट ऑफ द जोन, बट हुज़ाइफा डाउन हो चुके हैं। जोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। टीम 4 ट्राइब्स यही है नाजुक लंबा उन लोगों ने। अगर इससे उभर के आ पाए तो मैं बोलूंगा लास्ट तक चिकन डिनर ले सकते हैं, क्योंकि इन लोग जिस सामने रहेगी नॉनस्टॉप रेड फोर्सेस के खिलाड़ी हुज़ाइफा, द MVP ऑफ द टीम राइट नाउ, ही इज गॉन, बट IQ इज जस्ट नॉट स्टॉपिंग एनीबॉडी। T24 OP ड्रेसिल का भी यहाँ पर किल फाइनलाइजेशन करेंगे एंड टीम द ज़ेवियर्स होती हुई बाहर यहाँ से। चौथा जोन, डैमेज बहुत ज्यादा एंड इसके साथ में 4 ट्राइब्स 3 प्लेयर्स के साथ में सर्वाइव करती हुई। 15 eliminations. What a game this is turning out to be for the side of 4 tribes. But they will finally feel the heat coming in now from the side of Nongshim as T24 hits the deck. Oh my lord, IQQ also gets taken down. It all comes down to Fullet. Now, can he capitalize? Can he save the day? I don't think he can go for the revival, but maybe he can survive a little longer and maybe get a couple more elimination points and get a bit more points than what they already secured. Yeah, Falak, well, never mind. He's going to get taken down. Defiant will be the one dropping him, and 4 tribe with 15 points are going to get taken down in 7th position. We're here in the top 6. Well, 18 minute mark coming in, and 19 players, 6 teams coming in. Nongshim still surviving with 5. VOIN alive with 4. SI8
is a perfect opportunity for them to capitalize. Same thing for WARGYE. जी हाँ बिल्कुल एंड जो भी ऑडियंस अभी यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीम के ऊपर जुड़े हैं जाइए जल्दी से जाके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट करिए उस 50K सब्सक्राइबर्स को 141 esports के चैनल को सो गो एंड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब राइट नाउ बिकॉज 141 esports एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज बिजनेस दे आर डूइंग ग्रेट सो क्यों ना आप उनको भी सपोर्ट करो सब लोग हाथ मिला के एक बार दोबारा से सपोर्ट करें 141 esports को जैसे आप लोग करते आ रहे हो एंड वी विल बी कीप ऑन ग्रोइंग ऑल टुगेदर राइट एक बार हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं बूम esports के ऊपर 8 एलिमिनेशन यहाँ पर इन लोग के पास में एंड 2 प्लेयर्स जिंदा कीबो एंड रैपचोरी एज ही विल बी टेकिंग 5 freaking elimination this is looking really good but top 6 teams and 19 players edge what do you think maybe an Indonesian team maybe a Korean team or maybe the Pakistani team SKYFORCE esports जिनको ये chicken dinner चाहिए and this is going to be a really important one. This is going to be a really important one indeed. I think a very important one for WARGYE, A-side, and even Glue, I might say. I mean, Glue, if there's a twist in the tail, if there is a miracle play under their sleeve, then it's a perfect opportunity for them to actually hit it right now. Any cards that they're showing, any card they're saving to show in the grand finals, well, it's a perfect opportunity for them to show it right now and get themselves a few more points going into this one. They can get, what, another 16%, another 26 points. So that will be a 30 bomber. If they, that is of course, if they eliminate everyone here on the server, which is kind of a little too much to ask for even for me. So once again, being as optimistic as possible, there's still a lot of points for Glue to accumulate going into this. Maybe a 20 game, getting themselves up to 93 points, which is pretty decent still, if you ask me. Going into the last 2 matches, if they get another 15, 20 each, there's a really good chance that they also have a chance to qualify, but the teams in the middle order, they're going to be sweating and sweating hard. They're on the verge of getting taken down. Let's see who are going to be the ones coming out on top and which team will be moved to the bottom of the scoreboard. True. देखते हैं यहाँ पर कौन सी टीम टॉप के ऊपर आती है बट नॉन्गशम नेट फोर्सेस देखिए यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों ने कैपिटलाइज कर लिए थे बट द थिंग इज कि प्लेयर्स का जो एडवांटेज रहता है नॉन्गशम नेट फोर्सेस के पास में वो कायम रहेगा सो VOIN esports टीम A-side esports एंड टीम नॉन्गशम नेट फोर्सेस ऐसी कुछ टीम रहेगी जिनके पास में यहाँ पर 4 के 4 प्लेयर्स जिंदा है सो इट्स दे आर हैविंग द बिगेस्ट एडवांटेज एट द एंड जोन इट्स गोइंग टू बी द नंबर्स राइट एंड उसी के साथ में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि VOIN esports उनके पास में इतने ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है सो ट्राई करेंगे कि और भी ज्यादा पॉइंट्स देने का बट द थिंग इज WARGYE लोग जो सामने मोलो पूरा ग्रेट स्प्रेड इज कमिंग इन टीम ग्लू esports अपना एक और एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम करके देंगे शाका यहाँ पर टीम WARGYE की तरफ से आखिरी 16 में स्ट्राइक एंड शाका हाथ में लगा एक ग्रेनेड जरूर दागा जाएगा बट द थिंग इज दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर उनके ऊपर कभी भी शॉट्स आ सकते हैं दिक्कतें हो सकती है एंड ऑल द वॉरियर्स वाचिंग आउट देयर देखिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर आप IQ लाइक राइट 4 ट्राइब्स IQ का यहाँ पर YouTube चैनल क्या यहाँ पर जो है लिंक मिल जाएगा YouTube चैनल का तो जाइए उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए बिकॉज ही नीड ओनली एंड ओनली 2000 मोर सब्सक्राइबर्स 2.1,000 more subscribers to hit 50K so क्यों ना आप लोग उनको जाके सपोर्ट करो एंड IQ के जाइए जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स कराइए लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा पिन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा so why not support him to reach 50,000 subscribers go and right now tap on the link IQ के चैनल पे जाइए सब्सक्राइब करके आइए एंड सपोर्ट दैट गाय बिकॉज़ ही इज द बैकबोन ऑफ टीम 4 स्ट्राइप्स परफॉर्मिंग रियली वेल सो सपोर्ट हिम राइट नाउ इट्स यहां पर मैच के अंदर दोबारा से बढ़ते क्योंकि हम लोग यहां पर देख सकते हैं हमारी टॉप 5 टीम्स बरकत करती हुई नजाकत यहां पर खेली थी बट VOIN esports के टॉप शॉट यहां पर डाउन हो चुका VOIN esports के सेटअप 5 डाउन with VOIN esports Matic he is going charge with Leon the duo starting Leon and Carbu, the only one standing here for the side of Glue now, barely surviving towards the edge of the circle. Boom, down to 1 player now as they will go for the revival, I believe. Glue as well be back on the field with all 3 at the moment. Boom, back to 2, and the 3 teams with 4 players standing. VOIN, Nongshim, and ASI8. It's going to be a fight between them, and ASI8 are going to be the ones going down first as Nongshim puts the screws to them, takes one down. ASI8 now out in the open, got to be careful. Crypto will be taking a bit of damage, and Raju is going to be dropped as well, so he's catch him mid traveling. As Crypto is the only one right now who is also not safe. He's out in the open, he's taking a lot of damage, and it looks like all 3 players on the side of ASI8 are going to be taken down while they're traveling in the vehicle. And there you have it.
it's gonna be Boom getting taken out, and then ASI 8. जी हाँ, एंड काफी माहिर और लाजवाब बेमिसाल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग नेट फोर्सेस खेलती हुई। एंड हम लोग यहाँ पे यूटिलिटीज के बारे में बात करें तो हर एक टीम, हर एक प्लेयर के साथ में यहाँ पर बहुत सारे यूटिलिटीज, बट द थिंग इज टॉप 3 टीम्स, टॉप 11 प्लेयर्स, एंड कौन सी टीम लेके जाएगी सेकंड को, दिस इज लुकिंग गुड। बट द थिंग इज वन इस लॉन्ग नेट फोर्सेस, उन लोग के पास में चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा। सो मैं बोल सकता हूँ दबदबा उनका ज्यादा मिल सकता है, कंट्रोल यहाँ पर उनके पास में ज्यादा रह सकता है। जी हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स का वो आखिरी खिलाड़ी नियॉन, क्या यहाँ पर एक बेमिसाल परफॉर्मेंस दिखा पाएगा या फिर नहीं, क्या एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं। एंड आई थिंक यहाँ पर 1v8 करना पड़ेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ 1v1, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ 1v2, अ 1v8 अगेंस्ट ऑल दीस प्लेयर्स। ब्लू, मेरे को लगता नहीं है कि टीम्स को रिवाइव किया जा सकता है, एंड बूम स्पोर्ट्स आई गेस खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी प्लेयर जिंदा, सांसों को थाम कर बैठा हुआ उस स्मोक के अंदर, कभी भी जैसे ही वो स्मोक फेड होगा उनकी भी यहाँ पर शायद से सांसें रोकी जा सकती है, शहीद कर सकते हैं उस प्लेयर को। बट द थिंग इज वन ई स्पोर्ट्स, द लास्ट वन, ब्लू स्पोर्ट्स, यहाँ पर उसी के साथ में यहाँ पर उनको एक जीवन दान मिलता हुआ, ग्रेनेड आ रहा है, ग्रेनेड आ रहा है, जिसके साथ में यहाँ पर कार्पो उनको फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। 3 टीम्स 1 विनर, और चिकन डिनर के लिए सब लोग गुर्राते हुए। Another beautiful grenade coming in from Leon. Okay, hold up. Glue might actually be able to get another couple of points here coming in. The Nongshim Red Force, they might be the ones coming out on top at the moment now, with the only squad with 4 players standing, as Glue are on the verge of getting taken down. VOIN will have to, make their move back in the circle as well, so they got to be careful. Nongshim, they're also very far away from the zone, but they have a really cool high ground advantage along with the buggies that they have here saved up. So Glue are probably going to be the ones getting taken down first, but VOIN, I feel like they're second in line. Oh, one more grenade on Jace. वो ग्रेनेड सीधा मुंह पे आके दागा गया था, एंड बेहतरीन ग्रेनेड। बट वो जो ग्लू स्पोर्ट्स का आखिरी खिलाड़ी लियोन जिंदा तो है, अपनी सांसों को थाम के बैठा हुआ और स्मोक्स किया जा रहा है अपने आगे। बट द थिंग इज एक और ग्रेनेड, वो बेहतरीन ग्रेनेड, और ग्लू स्पोर्ट्स की टीम यहां से बाहर होती हुई, और मेरे को लगा नहीं था कि वो ग्रेनेड बिल्कुल ऑन पॉइंट जाएगा। इट वाज सर्व्ड हॉट, इट वाज लाइक डिनर ऑन द स्पेस, एंड सीधा यहां पर खत्म किया जाएगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस of VOIN Esports versus Nongshim Red Forces, Edge, Indonesian team versus Korean team. And you know what, Edge? I gotta stick with Nongshim Red Forces right now because they're looking good. But no, XG he's gone. And VOIN Esports, देखिए Zeta, Potato, Jace, हर एक प्लेयर बहुत ही ज्यादा बेमिसाल खेलता है। एंड शायद से एक और प्लेयर डाउन कर दिया जाएगा। Nongshim Red Forces के सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स जिंदा, और एक 2v4 के सिनेरियो के अंदर जेस के ऊपर यहाँ पर कुछ आते हुए शॉट्स। And I guess Nongshim Red Forces, they're in a really bad situation. They gotta be really careful. And ये जो डेडली डुओ है, क्या यहाँ से बाहर कर पाएगा प्लेयर को? लोअर इसके ऊपर जिंदा, एंड एक और नॉकआउट, TC सोलमन स्टैंडिंग, एंड ये 1v4 करना बहुत ज्यादा मुश्किल, और इसी के साथ वो प्लेयर बाहर जाता हुआ, और फैसले की घड़ी पूरी इस लम्हे के अंदर। टीम नॉन्गशिम रेड फोर्सेस होती हुई बाहर, एंड VOIN Esports एक इंडोनेशियन टीम बाहर करेगी, जहां पर एक कोरियन टीम को टॉप 3 टीम्स के अंदर थी और हुई बाहर। It would have almost been Korean dominance again. Almost was Nongshim with the 5th chicken dinner for them. Well, they will be denied of it just another time. Well, the side of VOIN, they will be happy to take it. Beautiful performance coming in, surviving with 4 players towards the end and making sure they survive till the end with 4 players. A flawless fight against the players on the side of Nongshim too. I believe that's 9 eliminations for them along with the chicken dinner. That'll be 19 points for VOIN Esports. I mean, they're in a good position already in the overalls. We take a look at the match's highlights. We started off here towards New York's factory where 4 tribes were absolutely dominant once again, reigning supreme, marking the dominance towards the territory. Man, what one hell of a match it was. एंड जो भी ऑडियंस अभी यहाँ पर हमारे ब्रॉडकास्ट को देख रही है, गाइस जाइए जल्दी से जाके आप एक बार पिन कमेंट देखिए, एंड हेल्प IQ, यस आई एम टॉकिंग राइट, हेल्प IQ, 4 ट्राइब्स IQ टू रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स, एंड जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए अभी उनके चैनल को, because he is really close to 50,000 subscribers, so why not support him, because he's the backbone of Team 4 Tribes and he's just playing amazingly. So support that guy, he just totally deserves it, so support him right now. That is true.
I mean, he is the key player for the side of Fortress as well. But this move, look at this. Oh, okay, no, we already went past that. Okay, that the jump coming in from Hoxie, man. I mean, I cannot, I cannot get over it. That was a crazy move coming up. I mean, of course, a bit of luck there coming in, but regardless, they'll take it. And Fortress here, they were up to 11. They were up to 15 towards the end before they got taken down. And you can see Xavier also got some insane numbers. But the teams that were kind of unfortunate once again have to be Alpha Gaming and Alter Ego Ares. Both these teams in a really tough spot on the overall, and WARGYE too. True, and this is the elimination point incoming. Dizzy, he was also close to getting down, and इसी के साथ में यहाँ पर बाहर होते हुए नजर डालते हैं यहाँ पर हमारी टीम स्टार्स के ऊपर, because VOIN esports लेके जाएगी इस winner chicken dinner को, और as they're having 9 eliminations to work with, so really good. But Edge, what do you think? MVP, who it's gonna be? I feel like some of the player of Team Force Drives. What do you think? I think so too. I think Force Drives probably are going to be the ones with the MVP there, or maybe someone on the side of Xavier as well. I mean, there were some really good numbers being punched there too. So we'll have to wait and watch. But I'm pretty sure both these teams will have top 4 players at least. You know, whoever the MVP is going to be, but I'm pretty sure both these teams will be present in the top 4, and also teams to watch, because those were some insane damage coming in, being dealt by VOIN as well. As a matter of fact, towards the end, the damage output is crazy coming in from all of these players and all of these teams in the map of Rondo. I mean, true, man. And whew, let's just have a look onto our MVP. It's gonna be the player of Pandum. 6 eliminations, 8 knockouts, 1,181 damage has been accumulated, and 12 minutes of survival time. So quality time he was proposing into the previous one. And man, I mean, he just played really good. हम लोग यहाँ पे सोचते रहते शायद से फोर्थ राइज का कोई खिलाड़ी बन सकता है MVP के अंदर, बट वो टीम फैंडम का खिलाड़ी लेके जाएगा MVP का टाइटल. I absolutely forgot about this player. I mean, Pandum also did have a really good game coming in. It looks like this guy was the one doing the heavy lifting. 6 eliminations, 1,181 damage, you said, and he was also alive for like very less period of time. And imagine if he can do this much destruction in this small amount of time that he was alive. Imagine if he was just alive for a little longer. Things would have been scary. As you have Huzaifa on the side of 4 tries coming in with 6 eliminations, TZ on the side of Nongshim with 5, and Defiant on the side of VOIN coming in with 5 as well. TZ with the highest damage out there at the moment, 1,286 coming in from Nongshim Red Force. True. And it's gonna be 4 tribes Huzaifa. I felt like somewhere around कि Huzaifa बन सकते हैं यहाँ पर MVP, but it did not happen. नजर डालते हैं यहाँ पर हमारे teams to watch out into the upcoming one के अंदर Nongshim Red Forces लेके जाएगी यहाँ पर teams to watch out का tag with 4 tribes, VOIN esports and Team Pandum. Look at the elimination points from the side of Team 4 tribes right now. Totally dominant, but Nongshim Red Forces एक बार ये आप उनके डैमेज के ऊपर नजर डाल दिए. 2700 से ज्यादा डैमेज, 2800 तक का डैमेज यहाँ पर पूरा हो सकता था. Edge, it's really crazy to look at like that. Man, oh man. Nongshim Net Forces, they just totally decimated the lobby. Yeah, Nongshim absolutely, caused a lot of trouble for a lot of these teams. Those damage outputs are crazy coming in from them. And that's why they are one of the best out there. That's why they are, scary team. And the Korean region itself is an entire region of scary players at the moment. Everyone's looking dangerous. Even 11 right now are building it up. But I think it's a little too late at the moment. That might be a little bit too late. Match summary: 99 total elimination, 7 credit elimination, 2 airdrops were looted, 8,600 healings were patched off, and 374 meter was the longest elimination coming in for the setup boom Kibo. And this is just a typical match summary we always look forward to it. But after this, match rankings is something we are looking forward to. Match rankings to see how many points they have secured, and to see how many points of a difference are we talking about in between the middle order. VOIN with 19, 4 tribes with 16, 15 for Nongshim, BLUG on 12, 11 for Boom,
10 for Xavier, 9 for Wargyye, 7 on A side, and PANDUM 6 for 11, 4 for D plus Kia, HORAA, Esports, and APG, 2 for all 3 Guerrillas, 2K, and DRX. Team Secret with just 1 for Esports, unfortunately, once again with no points. That is true. This is going to be the match rankings from 12th spot to the 18th spot. All these teams, they got eliminated way too early. And after this, we'll be having a look onto our overall rankings. We can see all top 3 teams. I mean, FN is not playing right now, man. But still, we know that team FN Shashang, they can also make a huge comeback. And now we can see non-shielded forces team Duplex Kia, team DRX, they performed really well, and they are the only 3 teams across 300 pointers right now. And RQ, VOIN Esports, Team Secrets, Team Beta, Team HORAA Esports especially. Edge, they're not having a great day today, but still, HORAA Esports, a very good performance overall, and they're in top 9 as well. Top 9, but once again, the all eyes are set on the middle order there. 15 to 20th points. That's what you need to see. 4 Tribes on 10, PANDUM on 11, DRS on 12, Flash on 13. All good and safe till there. 137, I feel like the Xavier also are safe at the moment. Boom, 132, questionable, but feels like they're safe. Sight, not so much. They can be pushed down now by ASI 8. And SKYFORCE are also on the verge of getting eliminated. Now, both of these teams are going to be sweating for the next 2 maps. But 14 points difference between them and ASI 8. 9 points for SCYTES and ASI 8. Let's see if there's going to be a difference. I mean, let's see how big of a difference we're talking about between ASI 8 and the rest of the squad down there. True, and the fans watching out there, देखिए यहाँ पर आप शायद से अपनी वोटिंग्स को एक प्लान बी समझ सकते हो. देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था जो आप लोगों की वोटिंग्स है, इट कुड बी अ प्लान बी बिकॉज एयरसाइड ई-स्पोर्ट्स उन लोग के पास में 2 और मैचेस हैं. All they have to do is just survive till top 10 or maybe top 5, that's all. 7 पॉइंट्स यानी 14 पॉइंट्स, और उसी के साथ में यहाँ पर उन लोगों ने एटलीस्ट एज 17 से 18 पॉइंट्स यहाँ पर 3 मैचेस के अंदर कवर अप किए थे. बाद बाकी यहाँ पर एसआईटी स्पोर्ट्स दूसरे मैच के अंदर चिकन डिनर लेके गई थी. सो एज इनटू द अपकमिंग वन उन लोगों को शायद से कुछ और 20 पॉइंट्स चाहिए. अगर नेक्स्ट मैच के अंदर 10 से ज्यादा पॉइंट्स 2 बार कैपिटलाइज कर लेते एज, इट्स गोना बी रियली इजी एज for them to qualifying easily, and top 16 के अंदर भी आ सकते हैं, and team sides के position के ऊपर जहां पर है वो आ सकते हैं, and they dethrone all 3 egos right now. I want to see the score line. They're coming in. You can see Alpha Gaming 105, 103, WARGYE, Alpha, all 3 Guerrillas. Come on, what is happening? 101. Now this is gonna be a battle between 5 or maybe even 6 teams. T2K, 2K, SKG, BLUG, 11, 52 each. But I think it's safe to say that their journey is pretty much done here. Unless BLUG can get a 2 30 bombers here. Or at least like 130 bomber and maybe like a 15-20 point game in the last one. Which I think is close to impossible right now. 50 points in 2 games is a little too much to ask, especially with the way things are going. But all 3 go Ares, WARGYE, and APG. These are the ones in contention still. What do you think? Is there a good chance? Because right now it is scary. It's very, very scary. Yep, it is looking really, really scary. And for all these teams on the 3rd page, it's really bad, man. I mean, Team 52 did not join any sort of games, and let's just have a look onto our overall MVP edge, because non-team Red Forces, that particular player, is looking good right now. And you can see Hyunbin, he has also surpassed that 10,000 damage output mark. Absolutely ridiculous performance coming in from them. BTR Federals, on the other hand, 10,500 damage. He will not be performing today, which means, he's going to be sticking to whatever the stats that he has. 46 elimination for Hoxie, 38 for Jaiki, 42 for TC here on the side of Nong Shim Red Force. These are the players. These are the overall MVP contenders. Now looking forward to see if they can perform any better or the consistency coming in to the next days. And that is, I'm talking about the grand finals, because I'm pretty sure we'll be witnessing all of these players, because all of these teams have already qualified to the grand finals. We have 2 more matches left here, ladies and gentlemen, before we
get a confirmation, an official confirmation on who are going to be the ones going into the grand finals. Which teams will be moving forward, and which teams will be going home for one last time in Chapter 3. We have one more grand finals to go. 4 days of spectacular action. So make sure to subscribe and also hit that. I mean, like as well, of course, but I want you to hit that bell icon so you don't miss out on any of the action. We'll send you a notification every time we come online so you don't miss out on your favorite players, favorite teams, and your favorite cards, of course. As we are almost done with day 6 playoffs, we'll also be taking a look at the fan favorite teams. Now, once again, 2 matches left. So let me remind you once again, folks, 2 matches left. Top 2 teams with the highest number of votes will be qualifying to the grand finals, regardless of the position on the overall. So if you're wondering how to vote for your favorite team, all you need to do is type in hashtag your favorite team's tag in the chat. You do that, and they'll be, moving forward to the grand finals, regardless of the position and regardless of the number of points they've accumulated into the final matchup. We have 2 more games to go, which means you guys have 2 more games to vote. You have enough time to probably help ASI8 get 6,000, 7,000 votes. That's all they need to surpass DRS. At the moment, once again, do not take DRS lightly, and their fans at all. They keep going hard and hard and harder. At the moment, 4 Tribes and DRS are pretty much in a good spot. They're probably going to be qualifying to the grand finals, regardless of the situation here in the votes. Both of them in comfortable positions on the overall standings. So looking like SI8 probably need a little more than when compared to other teams. HORAA also in a really good spot. And I mean, T2K and sites, alter ego areas. I would have urged the audience to vote for alter ego areas because we definitely want to see them in the grand finals. But right now, with 360 votes, getting to 20,000, 24,000 votes almost, it's going to be close to impossible. That's a very big number. A side at least needs like what 67,000, 24,000 in between 2 matches is crazy stuff. I'm not really sure if you guys. I mean, once again, it's up to you guys. You guys can decide what teams you want to watch in the grand finals. But once again, if it was for me, I would have gone with the alter egos right now for sure, and probably, what are the team that I want to see? I actually, you know what? I don't. It's not even alter egos. I actually wanted to see Alpha Gammon. We have not seen them once in the grand finals. I feel like alter ego at least had a chance last time in the grand finals. They had their shot. Alpha Gammon, they never got it. They never got a shot at the championship. They deserve it after everything they've done, after all the momentum, all the accolades, all the trouble and hard work and the struggle. But 24,000 votes in 2 hours. Alpha Gaming. I'm not really sure if the fans are going to be up to the task. It's only 298 votes. Can you guys actually do it? I mean, I feel like ASI also is going to be qualifying mostly. So is it possible for you guys to help Alpha Gaming? It's hashtag APG. Maybe we can give them a chance to, prove themselves or show their skills in the grand finals. They've never made it, ladies and gentlemen. They were one of the teams that performed brilliantly in PMGC 25, and they made our community proud. So I think it's only fair we give them a chance, no? Well, once again, that's what I think. You guys are free to vote for whatever team. All you need to do is type in hashtag and your favorite team's tag. So if you're actually voting for APG, it would be hashtag APG. If you're voting for SI8, it's hashtag SI8. If you're voting for anyone else, like let's say HKG, it's hashtag HKG. And just like that, the teams with the top, the top 2 teams with the highest number of votes will be qualifying to the grand finals without any consideration in terms of position points, their position on the overall. All of that doesn't matter. All of that goes out the window. So these words are going to be coming in clutch, and you guys have the power to do something incredible. You guys have the power to decide the fate of 2 teams. Use it wisely. Great power
comes with great responsibility. And with that, we are done with 4 matches. Rondo, Erangel, Miramar, and Rondo gone. We are now heading down to Erangel again. The second one as well of the day, and the final one in the playoffs. It is going to be interesting to see how the teams perform. It is going to be amazing for sure. But we will be looking forward to see which teams, and if the teams at the bottom will be making it to the top 16, top 18. Now coming in, I'm not really sure if the teams like BLUG have a really good chance. WARGYE are in a tough position at the moment. ASI 8, Alter Ego Ares, and APG. All of them are on the verge of getting that qualification for the grand finals. True, I mean, they're on the words of getting that qualification, that is for sure. And Edge, we are done with our 4 matches. After this, we'll be heading towards Erangel. And it's going to be a national gameplay coming in. Those textbook plays we always do talk about, the national gameplay, the national mindset these teams show up. So they'll be playing up with a very ease mindset, I'd say. Let's see यहाँ पर आगे आने वाले मैच के अंदर क्या होता है एंड क्या सिनेरियोज हम लोग को देखने को मिलेंगे इन टीम्स की तरफ से. एंड हालांकि यहाँ पर हर एक दिन के अंदर हम लोगों ने बेहतरीन गेम देखे, बट डे नंबर 6 इट हैज बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल दिस वाइल. एक दूसरी स्टोरी लाइन हम लोग को देखने को मिली है, जो इंसानिटी है, जो इंटेंसिटी है, वो और भी ज़्यादा मैं बोलूँगा बढ़ती हुई. एंड देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मैच के अंदर कौन सी टीम लेके जाएगी चिकन डिनर, एंड कौन सा मैं बोलूँगा एक रीजन है जो शाइन करेगा. एंड इट कीप्स ऑन bedazzling right now. I'd say the stunning region is gonna be Korea, man. I mean, all these Korean teams, they've been bedazzling throughout the whole lobby right now, and on the point tables as well. I mean, 3 teams, they're just shining, they're stunning right now. So let's see. I mean, all these Korean teams, can we see a new winner in phase 3 is the biggest question, Edge, because हमने पिछले 2 phases के अंदर देखा है Team Flash, they just keep on dominating, but I feel like Korean teams are here, man. I mean, so Team Flash, get yourselves ready because it's not going to be easy. It's going to be a hell fight for them. That is true indeed. I mean, Team Flash are definitely going to be contested this time. They're going to be, having to run for their money for sure. These Korean teams are on a different level. And we've seen Team Flash. I mean, we've seen them again and again. We've seen them with a new change of roster as well in between. They did come back and they did perform well as well. So I think Team Flash are ready, but it's definitely going to be one hell of a match when both these giants step into the server. And by giants, I mean the entirety of Korean region versus Flash. You see the comparison here. We're comparing an entire region to a single team. That's how much of an impact Flash has left us with already coming in from phase 1 and phase 2. I mean, absolutely, man. They left us with a huge impact, and to be honest, the impact we are talking about is the domination, of course. And Team Flash, the coordination and the strategies, it did work out really well. And I'd say Team Flash, it is a very versatile team, man. They adjust very good, and the adaptation Team Flash they show, it is really well. Because Edge, I have to say one thing, that Team Flash, if they're aggressing a lot, if they're having a great stance on the point tables, right? I mean, let's just take a hypothetical situation. I mean, not even a hypothetical, it actually happened in phase 2 क्योंकि Team Flash जब top 2 के अंदर थी या फिर top 3 के अंदर थी, right? So what they did was just playing very slow. They were playing very slow from the first game itself, and वो लोग try कर रहे थे कुछ rotation clashes के अंदर या फिर कुछ इधर उधर से कुछ points को steal कर ले, कुछ elimination steal कर ले, and at the end they came out of their hibernation mode and just started dominating, right? So Team Flash, the adaptation is really good. They keep on hibernating from the first game itself when they're having a great lead on the point tables, right? So if that is going to be the case, Team Flash, they might actually win one more time. But right now, all these Korean teams, they're really good, man. I mean, I won't say any one of the Korean teams, they did not even make a stupid play anywhere, right? So Team Flash, they might actually have a great contestant right there. It's going to be Duplex, Kia, man. It's going to be Nongshim, Red Forces, FN Shenzhang. I mean, we just cannot forget about that team. And Team DRX,
Let me remind you one thing. They were on the third page. They were on the third page on the third day. But what a comeback it is. What a freaking comeback it is. They're having 200 plus points now. Indeed. I mean, it is turning out to be a very good game for them, and a very good day, a couple of days as well, as they managed to get themselves into a really good position on the overall. And not just that, they've also managed to get themselves in a very good position in terms of momentum and the confidence as well. So now going into the grand finals, they're definitely going to be feeling like one of the teams that could actually take out the championship to their name, actually contest Flash, maybe come on top. But there are other teams who are looking really good as well. I mean, Fourth Tribes were very close to getting the championship last time. They, themselves and Flash were at 177 points at one point. Both of them were in the same situation at one point of the day, in the last day too. And after that, Flash was scared. Unfortunately, Fourth Tribes, they were caught in the crossfire. They did get taken on too. As we're done with 4 matches here, ladies and gentlemen, we're left with 2. Wrangle, Miramar. Let's see which teams are going to be the ones coming out on top here, as we have 2 more matches left. The teams at the bottom, is the final stride for them. It is gonna be, and this is going to be a last wrangle. Alright, Edge. I mean, we do have the last wrangle, but we might be having some difficulties here. So, I mean, without any further ado, we'll be starting up really strong and really soon. And we are having a small rehost of the lobby because we don't want any sort of issues coming in when we are having those smooth gameplays and coming. So good, we finalize those difficulties and we'll be just kicking them off really soon. And Edge, next match, it's gonna be a wrangle. Oh, it is going to be a wrangle. Looks like it's going to take a little longer, so we'll give you some time to cool down and also get your snacks and drinks refilled. We'll be taking a short break. We'll be back with Map of a Wrangle.
Welcome back, ladies and gentlemen, to PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3. After a short break, we're done with the 4 matches. We're now back with 2. Miramar and Erangel. Both of these are left, and not in that order, of course. Erangel and then Miramar will be witnessing, and Inferno coming in to the map of Erangel. What are your expectations going into the last match in playoffs, at least for Erangel? I mean, if you're talking about my expectations, Grand finals. and hopefully keep the best for the last, right? So my expectations upcoming on the map of Erangel, I feel like it's going to be a really balanced gameplay, a lot of commotions happening, because A-Side Esports and teams like they're on the 18th spot to the I'd say 19th, maybe 17, 18, 19 spot. All these teams, they are on the 3rd spot. I mean, all these teams taking those 3 positions in the overall standings, they will be playing very carefully. They don't have to make a single bad decisions, or else they're gone. I mean, they're gone, right? They don't have a chance to make a comeback now. A-Side Esports, they're on the cliff. They're on the edge right now to fall, or maybe just climb over the ladders in the grand finals. So team A-Side Esports, they gotta keep on climbing, man. They need one more good chicken dinner. If not chicken dinner, we are asking for a lot maybe. All they have to do is just accumulate maybe 9 points in each of the games, right? That's all. That's all they have to do. Just be consistent in the overall standings. And the fans watching out there, I know that कि आप लोग यहाँ पर A-Side Esports को support कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा vote कर रहे हो. But the thing is, the voting system won't be helping them. It's right. I mean, it's all about all those players, right? वो players अपने आप खुद की help कर सकते हैं. They know what they're doing right now, and they have to help themselves out, right? I mean, fans, you guys can support, but right now, A-Side Esports सब कुछ अब उन पे depend करता है. Because fans are not playing. Oh. It's all those 4 players playing in the game right now, right? And the next Erangel, we had a small rehold, so they do have time to rethink. They do have time to reposition their mindsets. Maybe just make a reset, right? And maybe do not try some new strategies. I'd say do not experiment. You don't have to experiment anything. If they're going to experiment anything, new strategy or something like that, and if it did not turn out to be a good one, that might be a gamble from the side of A-Side Esports, and especially Alter Egos. They are on the 19th spot. And let me tell you, that team, they will also try to come back onto the top 18 spot. Team SCYTES, they're not having any games to play with today. So Team SCYTES, it's not looking good for them. Maybe Alter Egos and Team A-Side Esports can take their spots. Hopefully. Let's see if what is going to be the case and how things are going to be unfolding here on the map of Erangel. We're left with 2 matches. 2 matches, that is it, in the playoffs here in Phase 3. Day 6 it is today. We had a month-long tournament. And now to think that we only have 4 days left after this. I mean, I might as well just get a little emotional here. But with 4 days left, it feels like it's a long journey. And it feels like all these teams and I'm in the audience as well. It feels like a whole bunch of family, and it feels like it's a little sad. You know, it's getting a little sad now thinking about the end. But it's the memories that we are going to be living through, and it's the happy moments, those amazing clutches, those amazing plays, those silly plays as well. As a matter of fact, we definitely did see some stupid plays. I'm sorry to say it, but we did see some unexpected silly plays coming in by some of the teams. I mean, they tried it. Unfortunately, it didn't work out. But some of them did work out. We've also seen how, you know, HKG especially just sitting in that vehicle and just survived. Now that is just something that is gonna pop in my head as soon as I think about a silly move. That was a smart plus silly move, and it worked out not once but twice. True, man. I mean, that was the case scenario. And today, we saw 2 Korean teams, 1 Pakistani team and 1 Indonesian team. But ladies and gentlemen, it's gonna be Erangel now. Without any sort of technical difficulties, we're gonna be starting in. And this is gonna be Asia Battle Wars Chapter 3rd. Playoffs qualifiers, last day, day number 6. And that freaking airplane skin, I mean, that skin is legendary. It's from season 7 if I'm able to recall. And जो भी audience यहाँ पर अभी हमारी live stream देख रही है, हमको बताइए वो जो airplane skin है वो कौन से season से है. If I'm not wrong, that is from season 7 and season 8. Let's just see. But एक बार हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं हमारे फ्लाइट पाथ के ऊपर. जॉर्जपुल कंटेनर्स जॉर्जपुल सिटी से स्टार्ट करेंगे एंड करेंगे हम लोग लिपोवका पे. Rozok, School Aparts, School Mail Mending, Ruins, Mention and Yasna, Prison with Shelter.
ये रहेंगे हमारे कुछ हॉरर सिनेरियोस. शूटिंग रेंज इन 70 मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ग्लाइड करके आराम से पहुंचा जा सकता है. बट द थिंग इज Team SIT Esports and Team Ultra Egos, where they are settled in this game. I like the flight path here coming in. I absolutely love any flight path that goes towards Norepnoi, towards Milta Power, or Kameshki and Lipovka. That's where it feels like, you know, there's a lot of hope for these teams to go drop wherever they want. As we're dropping in one last time here in the playoffs on a wrangle. Well, let's see how things turn out. As you have Zarki in the picture, Nongshim going there, and the circle. I think we've seen this before as well today. True, we did. And now 2K Esports versus the Xaviers. And 2K Esports के पास में यहाँ पे रहेंगे 2 प्लेयर्स. एक 4v2 के बैटल के अंदर आते हुए the Xaviers के खिलाड़ी यहाँ पर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा तड़पते हुए, क्योंकि उनको पता है कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर यहाँ पर कोई भी गलती हुई तो they can fall short, and यहाँ से उन लोगों के लिए दिक्कतें बन सकती हैं. अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लेयर होता हुआ डाउन, द लिली बॉय आर्कॉल यहाँ पर रहेंगे डुओ मैन स्टैंडिंग. देखते क्या सिनारियोस बिल्डअप होते हैं. इसके साथ में यहाँ पर बेहतरीन ग्रेनेड सौंदर्य के ऊपर डैमेज यहाँ पर बहुत ज्यादा उनके ऊपर लिया गया था. अभी रियली क्या करना है, इवन अ स्मॉल मिस्टेक will cause them to get their elimination. Right now 2K Esports, they are on the verge of getting eliminated. They are on the cliff to getting eliminated. Good shots incoming, but Arkal, he's also gone. Sondara, he's also gone. No, Sondara is just barely surviving on the cliff right now. 2K gone again. This was a very important match for them. They were on the verge of getting those 100 points. They're on the verge of making it to the top 18. It looks like now this might be farewell for them. The dreams and hope to make it yet another grand finals. I have not expected this coming in from 2K Esports and Team Secret. At the moment, with 4 players standing towards George Pool area, they will be securing as much loot as possible for them. And they will be looking forward to see if they can get more loot here. As Xavier towards Pochinki, they will get the loot and they will be happy with everything they find at the moment. Level 3 helmet and vest is probably gonna be their go-to kit, and getting utils is gonna be the optimal situation, because you need to have the utilities going into those last few zones especially. And now we can see 4 thrives right now. इसी के साथ में यहाँ पर easily rotate करेंगे and चारों के चारों players easily यहाँ पर पहुंचेंगे. थोड़ा esports अभी के लिए यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं 0 elimination points यहाँ पर इन लोग के पास में. But the thing is edge यहाँ पर यास्ता में team flash नहीं है, so they might be actually missing them. Well, let's see how these teams are going to be playing it out towards the end of the day now. The points accumulation is probably going to be their major focus right now. It's not Rondo, no recalls coming in. So you don't have that freedom to go aggressive anymore, especially the teams at the bottom, especially the teams that are worried about that qualification towards the grand finals. That is going to be the major troublesome factor for a lot of these teams. The teams at the top, I mean, they don't really give a damn. They can just go in, try their best, try a different strategy as well. It might or might not work out as we move to the grand finals. If it works out, well then good. If it doesn't, well, they don't really have to worry about it because they probably are already going to be qualified here. I'm talking about Nongshim, D plus Kia, DRX, VOIN, Team Secret, HORAA Esports, 4 Tribes, PANDUM, Xavier, and I might as well go ahead and say Boom as well. So anyone apart from them, SI8, WARGYE, Alter Ego, especially these 3 teams, are going to be trying their best to go for those placement points as their priority. But apart from that, they probably need at least few elimination points, maybe like 5. I think would be decent if they can get the chicken dinner, of course.
Alter Ego Aries. Now we can see DRX, Wade, VOIN esports. यहाँ पे कुछ promotions के अंदर हमने पहले player को help किया गया and VOIN esports Jace उनको यहाँ पे कुछ M164 से shots आते हैं but connection अभी के लिए यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, दूर दराज के इलाकों में जाएंगे and इसके साथ में यहाँ पर ये players easily rotate करेंगे but VOIN esports एक प्लेयर का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा एज. सो VOIN esports शुरुआती फेज के अंदर यहाँ पर मैं बोलूँगा स्टेज 1 के अंदर अगर एक प्लेयर आपका जा चुका है कॉन्फिडेंस जो मोराल होता है वो थोड़ा बहुत डिमोरलाइज हो जाएगा. बट अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं 4-on-4 की फाइट डुप्लेक्स किया वर्सेस ऑल्टर ईगोस. दिस इज गोना बी अ लेजेंडरी वन. ये जो ग्रेनेड है सीधा जाएगा, शायद से रोजमेरी को नॉकआउट कर सकता है. नहीं, कोई भी चिप डैमेज हम लोग को यहाँ पर अभी के लिए नहीं देखने को मिलेगा. बट डुप्लेक्स किया, क्या रिटेलिएशन रहेगा, कैसे रिट्रीट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे, and how they're going to be covering up. But there we have it for kill. Amazing knockout incoming and जो opening है एक चांस लेके जाएगी Alter Egos के ऊपर and maybe हो सकता है डुप्लेक्स किया might capitalize this one. 4 players standing and they're in a good position as well. Alter Ego is in a tough spot. They cannot afford to get taken down here. And this is what we're talking about, right? D+ here are really good at the moment and they're so well in terms of synergy and coordination that all 3 areas might just fall apart. You can see they're losing players. Rosemary drops, Snape gets taken down too. Alter Ego, what is happening? They're crumbling like a piece of paper. And D+ here will take them all down, eat them up, and then spit them right out of the server. Alter Ego Ares, this was their game. This was supposed to be their way into the grand finals, but that is not gonna be the case. They took a fight that they cannot win. D+ here will drop him down as we now turn our attention towards Nongshim and Team Secret. Looks like Nongshim will be in a bit of trouble, Red Force. XZY will be dropped. Team Secret looks like they might be capitalizing on getting a couple of extra eliminations here. They have lost 1 player, but they're able to drop 3 on the side of Nongshim. Oh my lord. TZ, the MVP last time, is going to be the only one standing right now. Will he be able to go for the revival? Will he be able to survive is the first question. Exactly. And now Tizzy, he is the solo man standing. And शायद से वो प्लेयर भी डाउन हो चुके हैं. यहाँ से इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है. Nongshim Red Forces टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट एंड टीम सीक्रेट्स हार गए. यहाँ पर ये टीम अच्छा परफॉर्म करती हुई Tizzy is really low to the HP. First hit pop करेंगे. एक grenade the Molotov. Yeah, the Molotov is incoming. But Duplex किया एक बार हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे इस टीम के ऊपर. And wait, did they eliminate them? Did they? Yes, absolutely. The Xaviers की टीम यहाँ से होती हुई बाहर and ये चारों players होते हुए बाहर. Duplex किया. I mean, Edge, they're having 112 points and Nongshim Red Forces का जो मैं बोलूँगा एक रिकॉर्ड है अभी के लिए उसको तोड़ने का ट्राई करेंगे. 240 points. Team the Xaviers and DRX they wanna have a look out there, but Team Nongshim Red Force होती हुई बाहर. वो Solomon standing बाहर होते हुए Team Secrets के JKMJ बनेंगे Grenadier. I mean, they do have a really good chance to make it to the 250 points maybe next game. There's still 1 more map left and it's going to be Miramar too. Now, 9-minute mark about to hit, 12 teams and 47 players surviving at the moment. ASI 8, they need a decent game. As you said, you know, all they need is around 9 points each. I think that would be good enough for them to secure. I mean, they're already in the top 18, but they're not secured just yet. There's a chance that other teams can actually take them down. And by other teams, I'm talking about WARGYE, APG, and Alter Ego, and 2K as well, as a matter of fact. There's going to be a really tough fight between these teams towards the end, but we'll have to wait and watch to see who's going to be the one coming out on top and making it to the top 16, top 18, depending on the fan favorite teams as well. So once again, the votes coming in from you guys. I mean, I have seen the jump that ASI are making. So ASI, they also do have the fans backing up right now. So it's going to be really crucial to see which team will be the one coming out on top at the moment. As HORAA Esports, this is their best performance up until now from Phase 1, Phase 2, and Phase 3. Then 163 points. And looking like one of the strongest team going into the Grand Finals. So I think the Flash versus HORAA fight might not go one-sided this time. True. SIT Esports. यहाँ पर देखिए पुचिंकी हिल के आसपास एंड पीछे से ग्लू esports की टीम भी कैपिटलाइज करेगी एंड चार प्लेयर्स एक 4v4 फाइट के अंदर बैटल के अंदर आएंगे. 12 टीम्स और 10 मिनट का ये जो टाइमर है यहाँ पर हमारा सेट होता हुआ. बट हम लोग यहाँ पे देख सकते देखिए अभी भी मजीद टीम्स. बट द थिंग इज ग्लू esports एंड एसाइट esports के बीच में जो 4v4 फाइट रहेगी एसाइट esports के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एज राइट नाउ
SITs puts they are on the pinnacle to be in top 18 or maybe dethroned in top 19, and after that, third page is their way. SIT Sports, if they are going to be picking the 4v4, they got to be really careful and cautious. But बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम पोस्ट राइट्स के बारे में. शायद से APG का दोबारा से वेट किया जा रहा है, if I'm not wrong, but APG अभी यहाँ से होती हुई eliminate. They're not in the server, and DRX, this Korean team, they're just totally playing out of the minds right now. उन लोगों के पास में रहेंगे 221 पॉइंट, and fourth Thrives के अगेंस्ट जो भिड़ंत कभी भी स्टार्ट हो सकती है. And fourth Thrives, this match gonna be a very important one as well for them. This got to be really cautious. But the thing is, मैं बोलूँगा यहाँ पे टीम फोर्थ Thrives अगर वो लोग 5 से 6 पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, that is going to be more than enough. यहाँ पे फर्स्ट पेज के अंदर आराम से एंटर कर जाएंगे. They don't need a lot of points to work with now. They're performing really good. That's what I'm saying. They are indeed. Everyone's doing really well right now. I mean, I love how the teams have picked up the pace towards the end of the phase 3 playoffs, especially. But once again, I feel like it's a little too late now coming in. I mean, look at the way 11's performing now today. If they were to just perform like this, maybe just yesterday, not even, let's not go back further than that. If yesterday they were performing the same way that they're doing it right now, they would have had a much better opportunity, a much better chance to make it into the grand finals. Because now they're on 66 points. I don't even want to be, I don't even want to be that optimistic anymore. But you need 70 points almost to make it to the grand finals. 35 points each. It's still possible. But come on. Come on, who am I kidding at this point? It's done. They're done for. 50 Esports, 11, and probably BLUG as well. I feel like along with 2K, might as well say it, are going to be out of the contention for the grand final situation. But for now, PANDUM holding on to their ground as Team Secret and SI goes head to head. True. SID, oh, the grenade is good. The grenade is fine. इसके साथ भी यहाँ पता रंग knockout लेके जाएंगे. एक और knockout no. SIT Sports, this cannot happen right now. This Vietnam team shouldn't eliminate you. You guys gotta pick your fight up. बेहतरीन grenade यहाँ पर आता. Wow, उसके साथ यहाँ पर retaliation के अंदर Team Secret का एक player down. Three goes upon Raju. प्रीतम इसको सोलो में standing. पहला knockout यहाँ पर आएगा. Can he go for the second? But no. Oh my God. Team SIT Sports. Oh no. Edge. They're out of the match. That was very quick. Team Secret. I mean, they capitalized on that team so hard, and they took him down. 1-on-1 is what they get with one elimination into this one. They get taken down in 12th position as Nofia number 1 drops 1. Jiggle HORAA is going to be bleeding, but they got to wait and watch as 11 once again might get taken down by HORAA. They're going to be escaping at the moment. Will be going back to safety. Don't want to escalate that fight any longer as 11 now are in a tough spot. They will be caught off guard by the players inside of PANDUM. Team WARGYE actually are going to be the ones getting another point for themselves. Oh wait, no, the knock was from them, but Versatile confirms that elimination. True. Oh no, Team 11, they're also gone. They are out of the freaking match. Team 11, this Korean team, they performed. Still, the thing, they are on the third page. They did put up everything they had. And now we can see Seekum and Baron K Doom and Survival यहाँ पर ये टीम कर पाएगी. बट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं HORAA esports के प्लेयर्स उस कंपाउंड के ऊपर सीधा स्लैमिंग करेंगे. एंड टीम डुप्लेक्स किया. No eliminations. Edge. This Korean team. This team is just out of their minds right now. But HORAA esports. यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर Dami. He's just on fire right now. Sky. He is really low to the HP. PANDUM. The grenade is good. ये grenade सीधा Jiggle के मुंह पे आके लगेगा. और फटेंगे शायद से Jiggle. जी हाँ. इसके साथ में यहाँ पर No Fear is good. With this ultimate starting with the UMP in his hand. यहाँ पर करना पड़ेगा एक 1v2. Team PANDUM. They're strong. Tough spot, but HORAA is in a worse spot. They will also get taken down here. 2 eliminations, 10 position. We're down to top 9. 33 players still in the server. Stage 4 circle coming into play now in the next 30 seconds, which means the cluster of players will start to accumulate now in that circle. So all of these teams and all of these players will have to go for those fights pretty quickly and also get themselves in a position where they think it's going to be safe. And now the utilities are going to be coming in clutch. Boom, on the other hand, with just 2 players standing, 1 player bleeding, gotta be very cautious
as their strategy of having 4 players surviving today has not worked out just yet because they were unable to, make that happen today in all the games. Maybe next game they'll try their best and they might come out on top. A little bumpy cars there, a team secret. They're feeling the heat coming in from VOIN, but Juke, he's like, yo, you want to take a shot with me? I'll stop, take you down, and go get back into my car. That's just style points, but he takes a bad decision there. He was not expecting multiple players on the side of VOIN there. VOIN comes in, Global gets taken down. So all of a sudden, Team Secret, they're falling apart. VOIN might just be able to take down the players on the side of Team Secret. It all comes down to Triangus. Glue, Carbu will be the one dropping him down from long range. He will help the side of VOIN. Team Secret are gone just like that. 8 eliminations, but it's just not enough. True, and boom, esports, they're bleeding. Raptori, solo man standing, and शायद से देखिए इतने सारे बेमिसाल परफॉर्मेंस के बाद में बूम esports शायद से उनका जो खेल है वो यहीं पे समाप्त हो सकता है। शाका को यहाँ पे स्पॉट किया, डाउन यहाँ पर किया, 11 एलिमिनेशंस यहाँ पर, बट टीम 4 थ्राइव्स इनके पास में कोई भी एलिमिनेशन नहीं, कुछ भी यहाँ पे मैं बोलूंगा पॉइंट्स का खाता अभी तक यहाँ पर खुलेगा। टॉप 10 के अंदर भले यहाँ पर आ चुके, सो 1 पॉइंट कहीं ना कहीं मिल तो चुका है, बट द थिंग इज एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर बरकरार तरीके से लेंगे तो अच्छा सिनेरियो हो सकता है ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर, और यहाँ पर नजाकत से यहाँ पर ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर रहकर टॉप 18 के अंदर रहकर अपने आप को क्वालिफाई करा सकते हैं। बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स किया यहाँ पर लिंक सामने खबर का रहे हैं, ये रहेगी हमारी टीम वार्गये। व्हाट, दे गॉट एलिमिनेटेड, टीम वार्गये यहाँ पर किया सिनेरियो था एंड क्या करना चाह रहे थे, बट अभी के लिए 4 थ्रेव्स घुमा के यहीं पे सेम सिचुएशन पे आए और डीआरएक्स के अगेंस्ट टीम 4 थ्रेव्स ये फाइट दोबारा से चलेगी। ज़ाइफा अभी के लिए यहाँ पर ट्री को स्पॉट किया गया तो जरूर है, एंड शायद से उनकी पोजीशन रिवील है या फिर नहीं, ये जो ग्रेनेड है शायद से ज़ाइफा की लोकेशन रिवील कर सकता है, एंड लोकेशन खुद के रिवील भी कर दी गई है एक्चुअली। Wargyye there, I mean, you're actually right. I mean, even I didn't really understand what they were trying to do. It's as if we already talked about it, right? It's a very important game for them. And they tried something different, didn't work out in their favor, and now they have to pay the price. One more game left. This last game is going to give me a heart attack. I don't know about the players and the teams. It's definitely going to give me a heart attack, the Miramar map. So for now, we have 6 teams and 21 players still here. 80-minute mark about to hit, and the zone. Now drifting. Oh, not that far away, So the players on the side of BLUG, they don't really have to worry about their situation. But they're trying to pick up the players here, and I think it's too late. 4 tries, they will drop 1. I think they will have that revival coming in immediately. Or maybe not. BLUG? Are they trying? No, they're not. They're just trying to get back into the circle. Try to still have that high ground advantage, because that on the map of on the map of Erangel, especially towards Pochinki, is going to be very, very crucial. As Zeta will drop, Falak immediately confirms that finish. जी हाँ, इसी के साथ में यहाँ पर 4 ट्राइब्स का एक खिलाड़ी डाउन हुआ, एक एलिमिनेशन भले यहाँ पर लोगों को मिला, but the thing is they lost 1. ब्लू esports यहाँ पर अभी के लिए कुछ शॉट्स को दागते हुए, एंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम ब्लू के पास में भी एक एलिमिनेशन रहेगा। एंड टू ऑल द ऑडियंस वाचिंग आउट देयर, देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर पिन कमेंट नहीं देखा है, सो आप लोगों को पिन कमेंट के अंदर यहाँ पे 4 स्ट्राइप्स की IQ का चाल मिल जाएगा, IQ का, तो जाइए उनको भी जाके सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ही इज रियली क्लोज टू हिट दैट 50,000 सब्सक्राइबर गोल। एंड इवन दो मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहूंगा, क्या जाइए जाके 141 esports को चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज 141 इज आल्सो क्लोज टू हिट that 50,000 subscribers goal. So make sure कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि कल से हम लोग यहाँ पे विटनेस करेंगे ग्रैंड फाइनल्स। तो जाइए अभी जाके सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, एंड ऐसे ही यहाँ पर आप लोग को बेहतरीन मैचेस आगे आने वाले दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। सो गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ। नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पर एक बारी मिनी मैप के ऊपर एज टीम 4 थ्राइव्स एक बारी जोन के अंदर, एंड डीआरएक्स के अगेंस्ट जो फाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। कोई भी टीम मैं बोलूंगा फाइट लेना नहीं चाहती। एक 3-on-3 बैटल के अंदर यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स फंसी हुई। एक्चुअली इट्स नॉट 3-on-3, इट्स गोना बी a 3v4 battle. 4 थ्राइव्स surviving with 3 and DRX they are surviving with 4 of the players. At the moment holding on. 4 players standing, D plus Kia with 3 players standing, but 14 eliminations on the map of Erangel. They might as well beat a Team Secret's record yesterday of 23 eliminations. Team Secret, they did go out with a bang as well. 8 eliminations. Unfortunate turn of events there when they wanted to take down the players inside of VOIN, but regardless, still a great game coming in from them, and they might also surpass 200 points for the next match here.
We have 6 teams here, and D plus here on the verge of getting maybe 20, 25. Maybe we can get the chicken dinner. They can get even more. Glow with 4. DRX with 4. Only 2 teams with full man standard. 4-man standing team. DK, it's gonna be Duplex Kia और भी ज़्यादा elimination points लेंगे 14 elimination points and Huzaifa he's out of the zone के अंदर जाना पड़ेगा smokes यहाँ पर अपने आगे किए जा रहे हैं Duplex Kia के chips को यहाँ पर finish off कर दिया जाएगा Leon यहाँ पर actually Leon down हुए हैं Duplex Kia की तरफ से T12 पर OP finally एक बेहतरीन नॉकआउट निकालेंगे हॉक्सी के ऊपर और यहाँ पर गेट कीपिंग सिनेरियोस ग्रेनेड इज लुकिंग गुड और शायद से फिनिश ऑफ भी हो सकते हैं तो ट्रेव्स एक और ग्रेनेड लेके जाएंगे बानी ही इज रियली लो एंड हॉक्सी नॉकआउट हो चुका बट हुज़ैफा को भी यहाँ पर स्पॉट किया डाउन किया जाएगा क्योंकि जोन के बाहर स्मोक स्क्रीन बनाया गया था स्मोक का एक आर्टिफिशियल कवर बनाया जा रहा था बट Duplex Kia चिप्स and kayak से दोनों यहाँ पे प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा लो हुज़ैफा क्या रिवाइवल यहाँ पर हो सकता है या फिर नहीं I feel like हुज़ैफा that won't be the case scenario DRX को यहाँ पर मिलता हुआ उनका elimination point 1 more. 2 more for D plus Kia though on the other hand. 16 is what they're up to now. But they are bleeding. And DRX is just 1 man stand-in. 4 tribes. This is a really good opportunity for them. T24. Perfect time for him to strike. To show what he's made of. TRE is very low. He's stacked up. It's quite low. 1 more shell of that DBS is all he's going to need. TRE is very, very tight. He's going to smoke blind shots and it will connect. The blind shots will connect. That was a 1v4 by the way. That was a freaking 1v4. Insane performance coming in from T24 and 4 tribes once again and making sure that they get something on the highlight reel every single day. And today T24 takes a crown in that situation as D plus Kia. They're not done with the performance. 2 players standing, but they're still picking up numbers like it's nothing. 17 eliminations now. It's down to 5 teams and 10 players in the server. True, Duplex Kia 17 eliminations and Gax and Chip रहेंगे ह्यूमन स्टैंडिंग एंड पोथ्रेट्स का आखिरी खिलाड़ी भी बचा रहेगा वो जो 16 मन स्टैंडिंग है क्या यहाँ पर G24 OP ले पाएंगे इस चिकन डिनर को अपने लिए अपनी टीम के लिए बट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम पैंडम एंड वॉइन esports 3-on-3 प्लेयर्स जिंदा एंड 3-on-3 यहाँ पर एक फाइट कभी भी इनिशिएट हो सकती है बट वॉइन esports they will not lose the players right now because they're having advantage टीम पैंडम उनको ले रहेगी यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल डोमिनेशन यहाँ पर Zeta करते हुए 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स एक साथ यहाँ पर लेके जाएंगे बट द थिंग इज वॉइन esports ये जो 3 प्लेयर्स हैं क्या टीम पैंडम को एलिमिनेट कर पाएंगे क्या ये जो Duplex Kia है ये जो टीम है ह्यूमन स्टैंडिंग इनको एलिमिनेट कर पाएंगी एंड वेयर एग्जैक्टली T24 इज हायरिंग टुवर्ड्स मेरे को बारी उनकी भी पोजीशन देखनी है क्योंकि 4 ट्राइब्स के T24 OP is going to be playing a really crucial play in this one. Because yeah, with 2, Pandum with 3, 1 with 3, 4 tribes with just 1. So if T24 can actually capitalize and maybe get this one in his favor, things are going to be very interesting. And well, he will be the star of the show. Both tribes have not yet got themselves a chicken dinner into this one. So let's see, maybe this one is the match and T24 is the man for this. Pandum at the moment with the advantage along with VOIN, but T24, as we were talking about it, he is going to get taken down. Unfortunate turn of events, but he has done enough. That one before was beautiful, and he's going to get taken down in 4th position. True. Top 3 teams, one winner, and who it's gonna be? And Duplex Kia, अगर यहाँ से बाहर होते हैं, so Team Pandum versus Team VOIN esports, एक 3-on-3 का बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं Duplex Kia, सोल में स्टार्टिंग के साथ में यहाँ पर शायद से दूर दराज के इलाकों में बचे रहेंगे, बट नहीं, ये केस भी यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड Duplex Kia होती हुई बाहर, एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं VOIN esports के 2 खिलाड़ी अभी तक जिंदा रहेंगे एंड 1 खिलाड़ी नॉकआउट हो चुका है। So the thing is, क्या यहाँ रिवाइवल आ पाएगा यहाँ पे नहीं? Jace, he's just bleeding. Zeta and Proxy, 7 elimination, but no. Jace को सीधा फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। 2v3 की बैटल, Zeta के ऊपर एक ग्रेनेड जाता हुआ, ये जो ग्रेनेड है कभी भी कनेक्शन ले सकता है। वर्सेटाइल अपनी बगी को घुमाते हुए, Proxys बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं। वर्सेटाइल अगेन एक और ग्रेनेड की पिन को यहाँ पर पिन डाउन करेंगे एंड शायद से जो ग्रेनेड है सीधा Zeta के ऊपर जाके लगेगा। Zeta is going down. Absolutely, and Pereiro is the Solomon standing, and it's really easy to call it off. कि टीम पैंडम जीत रही है हमारा रैंगल का मुकाबला और लेके जाएगी हमारे आज के दिन का 5वां मुकाबला, but still यहाँ पर मेरे को शायद से थोड़ा चांसेस लग रहे थे, but इसी के साथ में टीम पैंडम they are winning this one, and यहाँ पर जो उनका
मैं बोलूँगा एडवांटेज था, उसको थ्रो ऑफ नहीं करेंगे, उस एडवांटेज को अपनी ताकत बनाएंगे एंड कैपिटलाइज करेंगे इस मैच को. बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन गेम, एवरीथिंग down to the top, from the top to the bottom, everything was good. Team Pandum, they just totally deserve it, and they will be taking this winner chicken dinner. Man, I mean, And it's been a while. It's been a while, Yeah. man, since they got it. And I mean, definitely, they deserved it. As I said, the improvement that I've been, witnessing from this team from phase 1, day number 1, is immense. And I mean, them and WARGYE, the two teams that have absolutely amazed me coming in from phase 1. They both deserve to be in the grand finals. Pandum will be there, but WARGYE, I'm not really sure now. They have a really tough chance, but it's still a chance. yeah. And Edge, we're heading towards our match highlights, and all the audience watching out there, देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, go and make sure to hit that like and subscribe button and keep on supporting 141 esports. And IQ के भी चैनल का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो जाइए जल्दी से आके Force Drives IQ का भी चैनल सब्सक्राइब करिए, because we both are really close to hitting that 50,000 subscriber goal. So go and make sure to hit that like and subscribe button. नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पर मैच हाइलाइट्स के ऊपर. ये था टीम 11 का एलिमिनेशन मोमेंट्स टीम पैंडम के अगेंस्ट. ये जो ग्रेनेड था जिगल के ऊपर, इट वाज आल्सो ऑन पॉइंट एंड नो फियर. सोलोमन स्टैंडिंग थे, ही गॉट आउट नंबर एंड ओवरवेल्म. जिसके बाद में यहाँ पर ये होते हुए बाहर. Yeah, I mean, if you take a look at the match highlights, of course, it tells you what went down into this one. But the way things are looking for a lot of these teams, it's scary. Now, the last match is going to be so interesting and so anxious. I mean, the anxiety-inducing for sure. I cannot wait for this. I mean, I need to calm down first. The last one, but that was a great play coming from T24 there at the towards the end as well. He did get taken on, burned to a crisp, unfortunately. But here, Pandum with insane amount of eliminations too. Was a brilliant performance coming in from them overall. And VOIN did try their best, but it just wasn't enough. As Pandum, with 12 eliminations coming in with the chicken dinner, that's 22 points going into the last match here on the map of Rangle. Brinky with 6, Oyo Saipa on 4, Lazarus on 1, Asika with 1. A great performance coming in from the entire squad. And well, I'm looking forward to watch them perform in the grand finals. True, and I mean, Benke, he will be taking 6 elimination for his team, and in total we saw 12 elimination. So मैं बोलूँगा जो अपना दबदबा था वो बना के रखा इस टीम ने, and इसी के साथ में टीम पैंडम लेके जाएगी बेहतरीन matches. I mean, they just totally deserved it. I mean, 12 elimination all this while. That was really good. And इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर complete किया आज के दिन का 5वां match, and Edge, after this we'll be heading towards our last match, which is going to be Miramar. Miramar is definitely going to be the last one in playoffs. We're done with all the phases, at least in terms of playoffs here in Chapter 3. We only have one last grand finals left. 4 days of action, ladies and gentlemen. Once again, this is me urging you to subscribe and also hit that bell icon so you do not miss out on any of the actions. 4 days of grand finals, 4 days of intense gameplay to see if Flash can be, once again, an undisputed champion 3 times back to back. As D plus Kia, they will have an MVP from their side. It's Sykes coming in with 7 eliminations, 711 damage, 3 assists, 25 minutes and 18 seconds of survival time, 4 knocks, and 278 heal. He was a monster. And look at his damage distribution too. Good percentage onto head, decent on the body. I mean, he was also leaning towards the lower half of the body as well. He was dealing damage in all aspects. I mean, he was. And especially the upper torso, he was taking 54.17 versatile of the damage incoming. So good performance coming in from Saraf Kayakse. Let's just have a look on to our top 4 players on the screen. And Chips from the side of Duplex Kia, going to be joining spot from the side of Pandum as well. And VOIN Zeta, he is also here. Everyone performed really well. And especially VOIN Esports, they were also close to make the chicken dinner happen. But Team Pandum, they took from the hands. Let's just have a look on to the teams to watch out into the last match of our playoffs qualifiers of phase 10. Let me remind you all one more time. It is going to be our freaking last match. And after that, Edge, we are done, man. I mean, we are done with all the matches now. Playoffs qualifiers, a phase 3rd,
is coming to an end. But let's just have a look at the teams to watch out. 2 Indonesian team, 1 Vietnamese team, 1 Korean team, Ruthless, Team Pandum, VOIN Esports, and Team Secret. These are going to be the teams to watch out for the last map of Miramar. As we will be taking a look at the match summary, we had 60 eliminations into this one, 10 grenade eliminations, no 8 drops were even touched, 1 vehicle eliminations, 5,471 healing done, and Porico on the side of D plus Kia with the longest elimination at 303 meters. Now taking a look at the match standings, we'll be looking at a lot of these teams going out pretty early. At the bottom, that is, the teams at the top are still going to be at the top. True, man. The teams at the top, they are going to be still at the top. This is going to be the match summary, and we are done with all the match summary brief right there. We are done with the match highlights as well. इसके बाद हम लोग एक बार एक दफा नजर डालेंगे हमारी मैच रैंकिंग्स के ऊपर, क्योंकि देखते हैं टीम पैंडम क्लोज है या फिर टीम वॉइन esports कितना ज्यादा पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगा इसके बाद. And match rankings on the screen. 22 points and whoa. Just wait. Duplex, Kia. They're also having 22 points, and Team Pandum. Let me tell you all. Team Pandum ने यहाँ पर chicken dinner भले लिया, but we have 2 winners. We have technically 2 winners because Team Pandum and Duplex Kia दोनों ही teams यहाँ पर 22 points लेके जाएंगी आज. And VOIN esports जो team यहाँ पर सेकेंड स्पॉट पे आई थी वो लेके जाएगी 13 पॉइंट्स. एंड टीम फोर्थ रेव्स ओवरऑल अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस. हम लोगों ने यही स्पेकुलेट किया था कि अगर 9 से 10 पॉइंट्स के बीच में या फिर 8 से 10 पॉइंट्स के बीच में कोई इतने भी पॉइंट्स लेके जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट बी कंसिस्टेंट. एंड मेरे को लग रहा है ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर टीम फोर्थ रेव्स हैव अ चांस, मे बी 70-30%. 70% अब लोग यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं. I think so too. I mean, there's a really good chance that they're going to be, making their way towards the top. But here's the thing. At the top, they're still at the top. But it's all about the ones in the middle order. The ones at the bottom. WARGYE, Alter Ego, BLUG, ASI8, 2K, APG. These are the ones that are in a tough spot. We'll have to wait and watch which of these teams are going to be having a really good chance going into the grand finals, into the next matchup. Nongshim, 240. D plus Kia, 235, 216 for DRX, 1 and 200, 194 for Team Secret, RIQ, 189, 186 for Team FN Sejong, BTR, 183, Pandum, 170. Now, as you said, they have made their way to the top 9 in the first page. True, and on the first page now we can see 3 of the teams from the group Blue itself. Now we can see Team RRQ, Team BTR, and Team FN Sejong. And I mean all these teams, they are from group blue. Let me remind you all. And देखते हैं group blue से कितनी teams यहाँ पर हम लोग को qualify देखने को मिल जाएंगी. देखिए group red, and हालांकि यहाँ पर group green तो खेल ही रहे हैं पिछले 4 दिनों से. उनका आज के दिन के अंदर आखिरी मैचअप होने जा रहा है. But the thing is, the interesting thing is gonna be group ब्लू से कितनी टीम्स अभी क्वालिफाई करेंगे. एक बार हम लोग एक दफा नजर डालते हैं हमारी सेकंड पेज के ऊपर, एंड सेकंड पेज से कितनी टीम्स क्वालिफाई करती है, क्योंकि सेकंड पेज इट्स गोना बी अ स्टोरी लाइन. आई मीन अभी हम लोग को सिर्फ 3 ही टीम्स देखने को मिल रही है ग्रुप ब्लू से फर्स्ट पेज पे. सेकंड पेज यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे कभी भी आ जाएगा. एंड आई मीन सेकंड पेज मैन, it's gonna be good. And there we have it. I guess we have 4 teams. Team SCYTES, Team SKYFORCE, Team DRS, and Team Flash from the group blue on the second page. Oh, SKYFORCE SCYTES. They're gonna be counting their lucky stars right now. ASI8. I'm not really sure if they can, hold on to that position. This is very scary. Can we take a look at the last page, please? Here, production. It's all about those teams in 19th to 21st or 22nd, maybe. I mean, we know T2K are pushed down already, unfortunately. Alter Egos are there, APG, WARGYE. All these teams are fighting. And there's a really good chance for 2K as well. If ASI are unable to get any points into this one, and if 2K gets around, let's say 15, yeah, I think 15 is the score that they need, they will make their way to the top 18, which is ridiculous. So you're telling me teams up until 23rd position have a really good chance to make it through. 6 points for WARGYE, the difference between them and ASI8. Same thing for APG. Alter Ego is not that far away. So this game,
The last matchup. Oh, it's gonna be scary. But absolutely, it's gonna be scary, man. Team WARGYE, Alpha Gaming. Oh man, they're so close. They are so freaking close, man. And to all the audience watching out there, if you guys are not subscribed to the channel of IQ, go and make sure to hit that like and subscribe button right now. I mean, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चैट सेक्शन के अंदर एक पिन कमेंट लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, वो IQ के ही चैनल का है, फोर्थ स्ट्राइप्स IQ, yes. तो जाइए जाके सब्सक्राइब करिए because he is really close hitting that 50k subscribers. Let me see कि कितने उनके subscribers हो रखे हैं अभी. Right now he's on 48.1k. So all he needs is just 1.9k subscribers. So जाइए जल्दी से जाके subscribe करिए and support him as well. Edge, let's just come back to the screens right now. We can see overall MVP because Nongshin Red Force का वो खिलाड़ी लेके जाएगा 53 elimination with 50 knockouts, 10,000 plus damage. He is just a beast unleashed right now. क्योंकि Fatalist जो अब तक consistently यहाँ पर अपने spot को hold कर रहे थे overall MVP में, top first पे, he's gone, man. He's nowhere standing. He has no chance right now. You've been doing really well. No Fear 911 also was dominant here for the side of HORAA Esports. Has been one of the key players. I mean, we have not seen anyone on the side of HORAA Esports step into the overall MVP for a really long time. Now, him coming up tells you how brilliantly HORAA are performing. And at the moment, we can see 4 tries at DRS. ASI8, hold up. Okay, fans. Okay, buddy. They've actually caught up. They are not that far away anymore. This is spectacular. I mean, this is what we call people power, man. This is exactly what we call people power. Man, I mean, ऐसा esports के fans जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी fans देख रहे हैं, आज के दिन के अंदर क्या DRS से ज्यादा पॉइंट्स उन लोगों के पास में रहेंगे या फिर नहीं. देखिए, जो भी यहाँ पे नेपाली फैंस देख रहे हैं, you guys don't have to worry about anything, क्योंकि DRS वो लोग अभी बहुत ज्यादा अच्छे स्पॉट पे है ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर, and they will be surely getting qualified for the grand finals. Right now, ASID Esports, they are really close to making that one. And it's really happening right now. ASID Esports, उन लोगों ने 10,000 वोट्स आज ही के दिन के अंदर accumulate किए. Fans watching out there, you guys need 3,000 more votes. That's all. आप लोग जैसे 3,500 votes लोगे, you'll be having much more points, and ASID Esports आएगी DRS के spots के ऊपर, and फिर तो surely qualify करेंगे हमारी fan favorite team के अंदर. And hopefully मैं बोलूँगा, they don't even have to worry about anything because ASID Esports, they're performing good. And यहाँ पर वो लोग second page पे हैं overall standings में, and top 18 के अंदर हैं, so they can get qualified easily. But still, fans, keep on supporting, keep on voting, do that. I mean, all those keyboard warriors out there, all you have to do is just control CV, keep on spamming in the chat. Right now, keep on voting because ये रहेगा हमारा आखिरी मैच मेरा मार का, और उसके बाद हम लोग को at least 3,000 votes चाहिए ASID Esports के लिए, so that वो लोग easily qualify कर सकते हैं. Oh, it's going to be a battle for the audience as well. And it's definitely going to be a battle for that top 18, top 16 spots for the teams and the players. This Miramar is going to be a banger. I never really expected, the last match to be the one deciding the fate of not just one or two, but like 5 to 6 teams now. 2 of those are from the side of Group Blue as well. They're going to be biting their nails, hoping that they secure their spot. Let's see how things are going to be, unfolding here on towards the last match of the playoffs here, ladies and gentlemen. This is PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3 by 141 Esports. And well, we are coming to an end of the playoff before we head down to the grand finals. One more matchup to decide the fate of the last 6 teams out there struggling, battling it out for that 1 or maybe 2 spots to get themselves a slot in the grand finals. Absolutely. And ladies and gentlemen, and the boys and girls watching out there, this is going to be Miramar, and this is Asia Battle Wars Chapter 3rd Playoffs Qualifiers Phase 3rd match number 36 and final freaking match. Before we get our top 18
freaking teams gonna be fighting in the grand finals from tomorrow. एक बारी हम लोग एक दफ़ा नज़र डालते हैं हमारे फ्लाइट पाथ के ऊपर. इम्पाल से स्टार्ट करेंगे, लकोब्रिया से पास थ्रू करके हम थोड़ा बहुत आगे जाके फिनिश ऑफ कर देंगे. हसन दिन पोथरॉन, सेंट मार्टिन, ग्रेवयार्ड, पिकारो, पावरगेट, लेबेंडता, मिनाज, and I mean truck spot, Elazar. There are a lot of areas to drop by. So Edge, there are no problems whatsoever. But the thing is, the fight's capitalizing. The region of Picardo, Forthrives versus Alter Egos, Los Leones, A-Site Esports, Duplex Kid. There will be a lot of teams. Porto Peruso के ऊपर कितनी teams जाएंगी वो देखने वाली चीज रहेगी. And now it's going to be the last game, last 30 minutes before we end our phase third playoffs qualifiers. It's going to be interesting to see if there's going to be any drop clashes here, early game skirmishes, as the flight path is going to be coming in. And I don't really think anyone's going to be ending towards Ruins, Trella Park, Campo Militar, maybe Prison Patona. We've seen a couple of teams go towards that region last time, but right now with the flight path on our screens, that is looking pretty much impossible. So if anyone goes for these early round skirmishes, if any of these other teams like, let's say 2K, Alter Ego, WARGYE, Alpha Gaming, SI8, and it's going to be very scary for these teams. And look at the circle ending towards northeastern side. So this is going to be an interesting matchup for sure. True. And now we can see the zone. ये जो जोन है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएगा क्योंकि सीधा हम लोग को एक नॉर्थ ईस्ट का शिफ्ट देखने को मिलेगा. नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पे DRX के ऊपर एक और कोरियन टीम. एंड नाउ वी कैन सी दे आर कमिंग अप हियर. एंड DRX अभी के लिए यहाँ पर शुरुआती फेज के अंदर है. सो एक रहेगी हाथ में DP28 उजीज रहेंगी. किसी के पास शॉटगन है या फिर नहीं मैं देखना चाहता हूँ. जिसके पास भी शॉटगन रहेगा मैं बोलूँगा क्लोज रेंज के अंदर दे विल बी परफॉर्मिंग गुड. मेरे को DRX का तो नहीं पता बट टीम ब्लू esports यहाँ पर अपनी शॉटगन्स के साथ में तैनात. एंड टीम ब्लू esports कभी भी यहाँ पर फाइट डाउन सिनेरियोस के अंदर आ सकती है. टीम ब्लू तैनात है अपने वेपन्स के साथ में. हाथ में रहेगी थॉमसन्स, SMGs बहुत सारी. और मैं बात करूँ टीम DRX के बारे में, they're having SMGs. That's all. DP28 रहेगी, एक LMG भी रहेगी उनके हाथ में. But right now, they're not having any sort of good weapons to work with. And to the audience watching out there, guys, hope you guys are enjoying the matches. And चलिए मैं आप लोगों से एक question पूछता हूँ. We keep on saying these adverbs, right? So मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि SMG का full form क्या होता है? It's really easy to be honest, and बहुत सारे लोगों को पता होगा because UMP, Uzis, all these guns they are coming up in the category of SMG. And देखते हैं उन OGs के लिए जो भी वहाँ पर है, the watching the stream right now, the audience out there, SMG के साथ में LMG का भी full form बताना. देखते हैं यहाँ पर आप लोग बता पाते हो या फिर नहीं, क्योंकि if I'm not wrong M249 is an LMG. That is true. And DP28, I guess that is also. But जल्दी से बताइए इनके फुल फॉर्म्स. बट एक बार हम लोग यहाँ पे नजर डालते हैं एक दफा टीम Forthrives वर्सेस टीम Alter Ego Ares. देखिए अभी तो शायद से किधर है मैं एक बार मिनी मैप पे देखना चाहूंगा, बट किस रीजन के ऊपर रहेंगे बिकॉज Alter Egos एंड Forthrives दोनों ही टीम्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था. बट स्टिल यहाँ पे दोनों ही टीम्स कोई फॉर अर्ली स्टोरेज के अंदर आते हुए, अर्ली बैटल के अंदर आते हुए हुज़ैफा इज रनिंग बैक बिहाइंड. एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक कंपाउंड के अंदर होल्ड करते हुए सभी की सभी टीम ग्रेनेड बहुत ज्यादा बेहतरीन. हुज़ैफा रियली लोडेड HP, मे बी नो इसके साथ यहाँ पर रोज़मेरी डाउन हो चुकी है. पलक विद दैट AUG जस्ट शॉपिंग बाय. एंड नाउ इसके साथ में T24 ओपी उनको भी यहाँ पर डाउन करा जा सकता था, बट उनके साथ से रिटेलिएशन आता हुआ जो 4-4 बैटल है T4 के हिट में जाती हुई. एंड ये जो 4-4 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग T24 ओपी मैं वही बोल रहा था, he was really low the HP और भी ज्यादा लो हो रखे हैं. बट ट्रिप्टन एंड स्नेप रहेंगे डूम एंड स्टनिंग टीम Forthrives. फलक क्या यहाँ पे डाउन हो चुके हैं एग्जैक्टली. फलक इज डाउन एट T24 ओपी इज गोना बी सोल्ड स्टैंडिंग इन दिस 4-4. क्या यहाँ पर उनको डाउन कर सकते हैं? Alter Ego Ares and Forthrives, both of the teams, they're putting up a show and they're gone. Oh my freaking lord. No way. No way they get taken down. No way Alpha gets taken down. No way Pandum's gone. The chicken curse. If you ask me, they're coming into play yet again. The RX on the other hand, surviving right now, holding on. But I do feel bad, man. Oh my god. Alpha Gaming, we will not be getting to see them in the grand finals again.
Chapter 3 has been a disaster for them. They will not be able to showcase their skills in the grand finals. After the brilliant run in PMGC 25, I was hoping to see a lot coming in. But this is not the way I expected them to go out. True. DRX. The Korean team right now on the screen. 14 teams and हम लोगों ने यहाँ पे देखा 3 teams eliminate होती हुई. Team APG, Team 4 Thrives and Team PANDUM. Game से हुई बाहर. Team 52 they did not join the game. And right now Edge, we can see Team DRX अभी भी कोई भी elimination points के अंदर इजाफा नहीं, and they're holding in. And Edge, let me tell you one thing man. अभी हम लोगों ने गेम के 6 मिनट्स देखे. I mean, हम लोग यहाँ पे देखते हैं. चलिए ठीक है, DRX एंड ब्लू esports मे भी 1 मिनट लगा होगा लूट करने में, 1 मिनट 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा. बट बाद बाकी 5 मिनट जो है ना एज, दोनों ही टीम्स वो सेम पोजीशन होल्ड करती हुई और हिलने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा. बेमिसाल एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं एंड बेमिसाल दबदबा दिखा रहे हैं. बट द थिंग इज DRX एंड ब्लू esports, why you guys are not leaving your position right now? What is the plan coming? When you'll find the opportunity? Because Edge, itna patience. This is why these teams are the best in the socket. You guys need patience. Be it in game, be it in real life. You gotta be patient, man. That is true indeed. Patience is the key for a lot of these. Vigilance and patience. And you can see how these teams are performing, right? Although they're at the top of the leaderboard and they don't really need to work hard, they're still opting to perform their best. That is the kind of level of discipline and dedication that every team needs to have. And look at that cover coming in. It's UK ready with the crossfire there and trying. Oh my lord! Finds a perfect cheeky angle, gets him down, and there you have it. Xavier will lose another one. They're down to this one player. The last player would, I believe, did come in, and there you go. He's gonna be on the run, and maybe Team Secret wants to chase him. Yeah, they're gonna be chasing in Lolwoo again. ये PUBG का game है, it's not gonna be need for speed my friend. But again हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं SIT esports, VOIN esports के against बहुत ही ज़्यादा important fight. And VOIN esports भरेगी आके, एक player को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. 10 AVS के खिलाड़ी हो चुके हैं डाउन. पीछे से यहाँ पर spot किया गया Poxy. Oh wait, that's free. It was just an insane spray incoming. Oh my lord, that was one of the best sprays, man. I mean, you saw that? It was laser. And was it Pritham, if I'm not wrong? It was Pritham, I guess. It was. Yeah. I believe that was. But what a start for them. Can they capitalize? Can they get more? That is the question. ASI, a very important game for them. VOIN in a bit of trouble now. Last surviving player, Pareto 5, he gets taken down. That's going to be Foxy actually. And I think that grenade might just be softening him up a bit more. And now the Molotov is good enough. There you go, GG. He's probably going to get taken down. There you have it. 4 elimination points for the side of ASI. As Aaron needs that revival, they will probably go for it immediately. They want to make sure they stay alive for as long as possible with as many players as possible. Keeping that man advantage in their favor is definitely going to help them in the later half of the game. At the moment, we have 12 teams, 44 players in the server, 9-minute mark about ahead. Stage 2 circle coming into play. Mikado, they will have to make their way now, ASI into the zone, as we now divert our attention towards HORAA versus Boom. These are going to be exchange of grenades again. True, Evo. The exchange of the grenades have been happening. No fear on this train. Going for the Molotov. Will it connect? Sky अभी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं. 3 men standing. HORAA esports. Evo. Boom esports की तरफ से. No, he is also down, man. क्या यहाँ पर कोई Boom esports का प्लेयर डाउन हुआ? जी हाँ, इसी के साथ में यहाँ पर Boom esports को कीबोर्ड को डाउन करेंगे. लॉबी तक का रास्ता उस प्लेयर को दिखाया जाएगा. Boom esports सर्वाइव करेंगे 2 और प्लेयर्स के साथ में. HORAA esports उन लोगों का एक प्लेयर डाउन हो चुका. बट भले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. टीम 11 वर्सेस टीम पैंडम. 10 मिनट का टाइमर हम लोग यहाँ पर इस लम्हे के अंदर देख पाएंगे. टीम 11 भाई मतलब Edge. I mean, this team, the journey is over. The journey is gone. This Korean team is they won't be able to make it happen, man. Whenever they're taking a fight, they just get eliminated. Unfortunately, yeah. I mean, the only Korean team that will not be making it to the grand finals. That is, once again, for the Korean region, it's a great news that most of their teams, and by most I mean 4 out of 5 teams, are going to be making it to the grand finals. But
if 11 would have also made it there, things would have been even better. As we are looking at the final moments here in playoffs, there is still a chance for Alter Ego, still a chance for WARGYE. 2K also has a really good chance, to be honest. So SI8, they will be looking forward to get more and more points. This is gonna be a battle for those 2 spots, maybe 1 spot in the top 18. True, man. HORAA esports versus Team WARGYE coming up in a 2v4 battle. एक एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम वॉर को मिल तो चुका है. WARGYE क्या करने के सिनेरियोज रहेंगे इसी के साथ में. WARGYE एक और बेहतरीन तरीके से एक प्लेयर को डाउन करेंगे. नो फियर यहाँ पर रहेंगे सोलोमन स्टैंडिंग एंड आई फील लाइक WARGYE इजीली यहाँ पर उस प्लेयर को भी डाउन कर सकते हैं. HORAA esports they performed really well. I mean, a huge round of applause for that team and all the fans watching out there from the side of HORAA esports. Can we have some HORAA esports in the chat? I mean, come on, I'm telling you all to do that because they finally made a comeback, man. क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर HORAA esports की चारों players की coordination थी, symphony थी और जो rhythm के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, it was top notch, man. And especially जो synergy यहाँ पर I mean HORAA esports ने कहीं ना कहीं lose करी थी, उसको recover किया. And Sabhi players, they are coming up with a great bang right now. But they're in top 9. They're on the first page. Nothing to worry about. HORAA esports, applause for you all, man. Great play coming in from HORAA esports, man. I mean, this is, as I said, best performance we've seen from them in so long. And I'm really looking forward to see their performance in the grand finals again. And I think this time, HORAA is going to have a different, fate coming into the grand finals than their previous ones, of course. 6 eliminations for Alter Ego. They're surviving still with 4 players. They're still behind WARGYE and ASI8. They need, what, 115? What was the points again? I believe 115, 116 that they need to surpass so they can have a really good chance going into the top 16th, 17th position. Exactly, Team WARGYE. I guess they did eliminate. There we have it. HORAA esports के साथ में यहाँ पर गेम से होते हुए बाहर बेहतरीन उन लोगों ने परफॉर्म करने का ट्राई तो किया था, बट अभी के लिए यहाँ पर वो लोग होते हुए बाहर इस गेम से. Alter Ego Aries 6 elimination and Snake वो अकेला प्लेयर एटलीस्ट 97% वर्क करके जाएगा and 5 elimination लेके जाएगा. That is just insane. Alter Ego Aries right now. Let's see what is going to be the case scenario. And हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी के लिए शॉट्स लेते हुए दूर दराज से यहाँ पर कुछ शॉट्स आ रहे हैं. इजाफा इस गेम के अंदर देखते हैं Alter Ego सीरीज कैसे करती है. एंड राइट नाउ they're having a good spot, nothing to worry about. But Arcal 2K esports का Solomon Stranning, I guess टीम Alter Egos को इस प्लेयर की इंफॉर्मेशन या इंटेल नहीं है. एंड अगर टीम Alter Egos इस कंपाउंड को होल्ड करने का ट्राई करेंगे, so there are high chances they might actually lose some of the players because that player, he's just holding the compound. They need to be cautious. They need to be vigilant about their position here on the map, and they cannot lose. I mean, and I just got the confirmation that SKYFORCE is on 119 and 124 for sites. So 119 and ASI8 will push SKYFORCE down to 18. WARGYE will need 119 too, along with Alter Ego. So it is looking like it might not be enough. And I think if ASI8 are not going to get taken down here, they probably are going to be qualifying to the grand finals based on the point system itself. They won't need the help of the votes. But I do think, in terms of votes, also they might beat DRS here because I see a lot of these ASI8, hashtag ASI8 in the chat, and I think it might have just taken down DRS. And if it keeps going this way, they might even take down 4 tribes in the fan fight. I mean, yep. Because all the Pakistani fans out there, the audience out there, they keep on supporting. So ऐसे आप लोग यहाँ पर support करते रहिए SIT esports को. And बिल्कुल यहाँ पर हम लोग उन लोगों को देख सकते हैं top 8 के अंदर. I mean actually SIT esports को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं top 2 के अंदर. But एक बारी नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पर zone के ऊपर and Elazar के ऊपर ये जो zone है फिनिश ऑफ होता हुआ. And Elazar एक रहेगी यहाँ पर सिटी. बट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं SIT esports, every one of them, उन लोगों का यहाँ पर जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है. Ooh, Team Secret, taking a bit of damage, but will be retaliating too here on the side of Glue, as they will be losing a couple players. They got to be very cautious. Lolbu hits the deck. Glue, there's one player down, and I think Lolbu might not be in a situation to get the revival, or is he? Rosemary actually shields it. Wait a second, that's Alter Ego Aries stealing a point. Now, Alter Ego, if they capitalize, if they get the
the upper hand in this fight. This might just be enough for them to, get themselves in a better position, having a better chance at the qualification of the grand final. This is going to be it. It's going to be Krypton trying to take one more player down, Karbu. Unfortunately, will not be hitting the deck as Glue, with 4 players still standing. It's going to be Team Secret who is going to be taking down Xbox inside of Glue. And now Team Secret are still holding on to their position, trying to take down Benz inside of Glue. True. Team Secrets 3 एलिमिनेशन लेने के बाद में बेहतरीन इजाफा यहाँ पर चलता हुआ एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी के लिए क्रिप्टॉन एक्चुअली पिक ऑफ हो चुके हैं जेन क्रिप्टॉन को सिर्फ फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा इसी के साथ ही यहाँ पर और टीम टीम्स क्या सिनेरियोस रहेंगे मेरी रोज फ्रिकिंग मैरी ही इज रियली लो विद एचपी जाना पड़ेगा पीछे एंड हील ऑफ करना पड़ेगा फर्स्ट एड को पॉप इन करते हुए 108 points for all three go, 109 for WARGYE, 115 for SI8. It's a close battle between all of these teams as we have top 10, 30 players in the server right now. DRX will find another player on the side of Glue BLUG as they are finding players on multiple teams. They find another one on Glue. There's only one man standing. He's going to be trying to get his way back to safety as Leon is the last man standing. Karbu hits the deck. He will not be able to get the revival. So Leon, let's see how long he'll be alive. Well, for now, Karbu hits the deck and gone immediately. As Team Secret now find the players on the side of ASI8. Raju, he will take the hit. He's bleeding. But Team Secret, they have to capitalize. With only 3 players standing, they cannot just keep dealing damage. They have to make those plays work. And I believe Team Secret might have to face the likes of 2K ESPORTS, the last surviving player that is Arkrol. True. And now, यहाँ पर Team Secrets. ग्रेनेड्स यहाँ पर आते हुए जल्दी से आप पर फर्स्ट पैचन करेंगे तो मैं बोलूँगा बरकरार रख सकते हैं अपने आप को इस गेम के अंदर एंड माहिर टीम सीक्रेट्स मैं बोलूँगा गेम के अंदर पबजी के गेम के अंदर एंड जो एक्सपीरियंस जताते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बट द थिंग इज़ लोअर रिच के ऊपर है एंड अभी के लिए यहाँ पर जोन के अंदर जाने की टक्कर रहेगी टीम 2K ESPORTS यहाँ पर DRX के अगेंस्ट सोलो स्टैंडिंग यहाँ पर रहेगा TBS स्ट्राइकिंग शॉट इनकमिंग आगे यहाँ पर बढ़ेगा ये जो आखिरी खिलाड़ी इज जस्ट ऑन फायर एंड राइट नाउ एक ग्रेनेड आएगा तो डाउन हो सकता है देवी हैव इट ग्रेनेड तो नहीं यूजी के साथ में उनको खत्म कर किया जाएगा बट दैट शॉट फ्रॉम S12K वाज pinnacle. That was good. That was good indeed, and DRX will also get taken down here thanks to Team Secret coming into the picture now. WARGYE will be able to get a couple more points. They're up to 110 now. Alter Ego is now falling behind with that in that fight. At the moment down to top 8 teams. We're losing players, we're losing time, we're losing hope here for the teams like WARGYE and Alter Ego Ares. They will have to get at least 119 points or at least beat ASI8 to have a slot, to take their slot. But at the moment, D+ here now looking like they might be able to drop a couple more players. WARGYE will lose one. Will they be able to go for more? And Daku saves the day. Saves it for WARGYE right now. As D+ here, they get taken down with no eliminations. All this fight, all this struggle, all this time being alive, they were unable to get even a single point in terms of elimination. But they will get 1 point in terms of position placement. As WARGYE up to 112 now. They're slowly picking up the pace, slowly picking up the numbers. But all 3 teams, SI, WARGYE and all 3 Ares, they're down to only 3 players alive. They are. Alter Ego Ares. एलिमिनेशन पॉइंट्स के अंदर इजाफा सिर्फ एक ही हुआ उसके बाद में यहाँ पर मैं बोलूँगा एलिमिनेशन पॉइंट्स हम लोग के पास में नहीं आ पाए इन लोग जस्ट नीचे हम लोग को देखने मिल जाए कि टीम सीक्रेट्स के खिलाड़ी लो रिच के ऊपर यहाँ पर जिंदा बट कंपाउंड इन लोग पास में रहेगा 2 ग्रेनेड्स यहाँ पर रहेंगे इस खिलाड़ी के पास में कभी भी ग्रेनेड्स को दागा जा सकता है बट लियोन क्या स्पॉट किया गया है लियोन को ओह अल्टर ईगोस इसी के साथ में यहाँ पर स्नेप को डाउन किया इट वाज पैंथर इट वाज SCYTES वाज पैंथर फ्रॉम द बैक एंड्स थर्ड पार्टी करेंगे टीम अल्टर ईगोस के ऊपर स्नेप को फिनिश ऑफ किया जाएगा This is looking bad for Alter Ego Ares. And the SI8, they're getting more. They're 117 now. They get 2 more points, and they will probably just beat, in terms of elimination, of course, if they get 2 more points, they'll probably beat the side of SKYFORCE. They'll push them down. So SKYFORCE now are going to be watching the stream and feeling the heat. They're going to be hoping that any of the other teams, like WARGYE or Alter Egos, do not get those 119. Because if 2 teams get 119, they will be pushed down, which will be very unfortunate. So I think SCYTES are in a good spot at the moment to maybe qualify to the grand finals with the current position that they have on the overall. And Alter Ego, they understand the situation. They might not be able to survive this fight. So that is why they're going for the confirmations there immediately. As WARGYE is trying to juke out the players. It's still not going to be enough. Team Secret, will he be able to go for the fight? Rosemary is there to save the day for now. But Ren, will he get the revival? That is the question. He's passing him up.
passing up immediately. What a pace, what speed, what reactions coming in from Rosemary, man. He's an absolute GOAT right now. ASI8 on the other hand, 6 eliminations, they're still in the game. Same as WARGYE. With 2 players though, you gotta be really, really cautious. Greatest of the all time, you say, and I say it's Rosemary, but still यहाँ से grenade जाता हुआ SIT Sports. ये मैच इन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा important और कोई भी खामियाजा इस टीम को नहीं भुगतना पड़ेगा. But still fans रहेंगे and वो जो आखिरी खिलाड़ी था ग्लू esports का, लियोन को स्पॉट किया जाएगा, फिनिश ऑफ किया जाएगा. ग्लू esports यहाँ से होती हुई बाहर. We are upcoming with top 5 teams. 13 players remaining and 20 मिनट का गेम का जो मार्कर है वो हिट अप हो चुका है. Edge, what do you think, Edge? Maybe this Korean team, maybe Indonesian team or Team Pakistan. What do you think? Which team is coming on top and making the chicken dinner this time? I honestly do not know, man. I feel like WARGYE has a really good chance to maybe get the chicken dinner, but my heart says alter egos. So, I mean, my heart says alter egos in the sense that I kind of want them to win so that they also have a really good chance to make it to the grand finals. I mean, I was hoping APG to make it to the grand finals, but since we can't really see them, at least alter ego errors. I mean, they're going to be adding that extra flair coming into the grand finals. But Nongshim, with 4 players standing, we all know definitely are going to be the favorites coming out on top with the chicken dinner. True, man. That could be the case scenario because they're having 4 man standing. So वो जो advantage है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन उन लोग के लिए निकल के जा सकता है. And हम लोग देखें अभी के लिए यहाँ पे Nongshim 3 points इन लोग को मिल चुके हैं. स्कोर पे प्लेयर जो है रोजमेरी डाउन हो चुके हैं. आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर रिमोट उसको बचा रहेगा. क्या उनको पिक ऑफ किया जाएगा? स्मोक के अंदर जिंदा, बट नो, एक और प्लेयर यहाँ पे पीछे से आएगा. 5 स्पॉयलर्स यहाँ पर बनेंगे. टीसी एसआईडी स्पोर्ट्स दे आर गुड बट ऑल ईगल्स यहाँ से उठ हुई बाहर. Top 4 players, top 4 teams on the screen right now, and no खिलाड़ी अपने क्या पर जिंदा. XZY को रिवाइव करते हुए WARGYE भी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करती हुई. Oh my god, 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे. टीम नॉन्गशिम नेट पोस्ट बूम esports सेम पर एक खिलाड़ी जिंदा, जहां पर एसाइड esports के पास में रहेंगे 3 खिलाड़ी. और मैं बोलूंगा शायद 3 नहीं, वो खिलाड़ी और आखिरी खिलाड़ी उसको पिक ऑफ किया जा सकता है. सीधा का सीधा यहाँ पर पुश करेंगे and they are making up a great goal decision. यहाँ से होती हुई बाहर आगे की तरफ यहाँ पे पुशिंग करेंगे. सामने एस्ट्रोल के हाथ में बट द थिंग इज टीम एसआईटी esports क्या बाहर करेंगे. जी हाँ बिल्कुल. एंड गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑडियंस वाचिंग आउट देयर, फैंस फ्रॉम पाकिस्तान, ऑडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, आप लोगों को शायद से अब वोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. आप लोग अपनी वोटिंग जोड़ सकते हो क्योंकि टॉप 18 या टॉप 16 के अंदर आके टीम एसआईटी esports आराम से हो सकती है क्वालिफाई. I'm pretty sure they've already surpassed SKYFORCE there. They're making their way to the 17, maybe even 16 position if they get Boom here, and I feel like they will. With the 3-man standing against Boom, just 1 Maul. I mean, they still stay 6. They will have to go for the fight. Even if they go down here, it doesn't really matter. They're going to be qualifying here. ASI8, what a monstrous performance coming into the last day. And what a twist in the tail here. They might be the fan favorites at the moment. I mean, I'm not really sure. They could actually surpass DRS, but does it matter? No. Regardless of their position, in terms of fan votes, they will make it through to the grand finals against all odds. They fought hard, and now they will try to get the chicken dinner twice. The second one, by the way, making sure the Pakistan flag rises high. They're the only team that actually got the chicken dinner from the region, by the way. And now they're looking to make it 2 in a day. True. Boom esports. Maul, Solomon standing. क्या पे players ने अभी तक spot किया Maul को, and he has been spotted maybe? No, he's not. Drop था क्या यहाँ पे drop भी actually loot. Yeah, he has been not spotted yet. क्या scenario रहेगा? Cause आखिरी player है and SIT esports. They're gonna be hunting this guy, man. I mean, he keeps on showing those parkours, and अपन इसका advantage लेने का try करेंगे. जी हाँ बिल्कुल. इसके साथ में SIT esports के खिलाड़ी, तीनों के तीनों खिलाड़ी यहाँ पर actually वीडियो के जैसे आएंगे, and he will be getting hunted for sure. He's getting down, but Maul, I mean, anything is possible. Yeah, go on. True. I mean, here's the thing. I like how Boom, even though they are in a good position to qualify, are still trying. I mean, Maul, he can just end it right now and, just let it go. But no, he wants to go for this 1v3. He knows he can actually go for a chicken dinner here. That'll be really good with the confidence, with the momentum that they have. And it's a good practice too. A 1v3 like this against, world-class players like the players on the side of ASI8. If Maul can actually pull it off,
then it'll not only increase the chances of the better performance, of the betterment into the next few matches, but also increase the confidence coming in to him and the squad at the same time. ASI 8, on the other hand, with 3 players standing, it's not going to be easy. And boom, Maul, he's going to be on the move yet again. Not really sure what he's trying to do now because he had a great position. He's going to let that go. But I think he heard the commotions there coming in. So maybe get himself into a better position so he can go in and approach this 1v3 from a different angle. Or he's going for the drop, I think. Oh, I think it's loot. SIT Sports, the players are shooting and they want Maul to come and open, but still Maul यहाँ पर इधर उधर भाग रहे हैं and शायद से Maul दोबारा से यहाँ पर उस कंपाउंड के ऊपर चढ़ जाएंगे and दोबारा से एक कवरेज का एडवांटेज लेके जाएंगे. हाइट एडवांटेज ज़रूर है बट एसाइट ई स्पोर्ट्स हर एक इलाके को अच्छे से स्कैन करेंगे. बट द थिंग इज एसाइट ई स्पोर्ट्स अगर यहाँ ऊपर इस कंपाउंड के ऊपर स्पॉट नहीं किया प्लेयर को तो मे भी हो सकता है दिक्कतें हो सकती है. मॉल ही डिड स्पॉट द प्लेयर. ग्रेनेड यहाँ पर कुक किया जा रहा है क्रिप्टो की तरफ से. एट दिस मोमेंट वी आर जस्ट स्ट्रेचिंग द टाइम राइट नाउ बट मॉल I mean, let's just give him a benefit of doubt. Maybe he can actually pull this 1v3 off. He's opening this heights, but not able to make any sort of connections. Yeah, he did. He did spot someone, but he's not going to be giving away his position. He understands the situation, that once he gives away his position, and there you have it. Now, Maul, is this the perfect opportunity for you to strike? Is it the time for you to maybe pull that trigger? We are still in stage 7, I believe. Stage 8 coming in. So there's still a lot of time for both of these teams to actually go for that end circle. That was a clean shot. I'm not really sure why he didn't take it. I think he doesn't want to... I think he wants to spot all 3 first and then go for the fight. I mean, true. Is he waiting for the last end circle? I think so too, actually. Zone nahi aaya. Yeah, I mean, he's waiting for the last end circle and जब players यहाँ पर सभी के सभी एक single cluster पे रहेंगे तब शायद से fight लेना चाहेंगे and that would be the wrong decision. मैं बोलूँगा एक एक करके 1v1 ले. एक player को पहले down किया जाए. Yes, he needs to pick one player and then 1v2 might be easier than 1v3. But that's the thing. If he takes down one and if that player is not confirmed, first point, he will be revived. Second point, Maul will be given away his position. So now those 3 players will jump on him. So even that, I mean, then if he won't even be able to go for a fight any longer. Because then all 3 players will be coming in. But let's see the airdrop. What does he find? The MG. Oh boy, that could be deadly. And a fresh helmet and vest. He's going to be ready for this. That MG is going to be deadly for sure, and that's exactly what he's going to be equipping himself up with. And it looks green. It's venomous. It's gonna be fun. This MG in the hands of Maul. Let's see if he can maul them all down. Oh man, this is intense to be honest. And Maul, I mean, we are giving all the attention to you, man. I mean, we are giving all the time to you. So better we see a good fight. I mean, I want ASI esports to get eliminated because they are really close. Boom esports still, they are having a great spot. So, but still, I mean, let's see, man. I mean, anything is damn possible at this moment. It's either gonna be a straight up 1v3 or a great performance coming in from Maul. It's one of these. Spotted. One. What's the trigger? What's the trigger? Drops him. Go for the go. He's not going for the confirmation. And Aaron will be relaying the information. The Molotov might be pushing him out. Beautiful Molly. It will push him out. But will he be able to go for it? I think he can. That's one elimination. Is it? No, not yet. Aaron's barely surviving. But the information will be relayed. And I don't think he can go for the revival there. Beautiful grenade though coming in from ASI Esports. And Maul is going to be healing himself up immediately. And the play zone will be against Siren. He's going to get taken down. Boom. Now in a 1v2 situation. Maul has a really good chance to go for this play. He has to go and wait for the opportunity though. The crossfire is set up from ASI Esports. And boom. Maul. I'm not really sure if he's in a position to do this because of the high ground advantage that ASI have right now. Oh, the grenade.
अब यहाँ पे ग्रेनेड की जो पिन थी मॉल की तरफ से मे भी हो सकता था उस प्लेयर को, जी हाँ बिल्कुल तरीके से डाउन किया जा सकता था, बट मॉल एक और ग्रेनेड यहाँ पे दागते हुए एंड जो जोन है उनको शिफ्ट करेगा ओपन के अंदर, यहाँ पर उनको पड़ेगा एंड ही इज थ्रोइंग अ machete, इज थ्रोइंग एन एक्स ऑन हिम। मॉल अब यहाँ पर ओपन के अंदर आना पड़ेगा एंड पैंथर से एक 1v1 की फाइट लेनी पड़ेगी। मॉल no, not the grenades, not the grenades. Come on, we'll take that 1v1 now. Open के अंदर आएंगे, shots up here, he's reloaded the HP and he's gone. He is gone. Stun भी यहाँ पर हो चुके हैं and last bullet hit coming and he's gone. I mean, you knew it that ASI Esports was winning this one, but Boom Esports, they did give him a benefit of doubt. But there we have it. Elimination incoming and now we have ASI Esports as a winner with 21 points. Gotta give credit to Maul, man. I mean, the way he was switching those from left to right and ADSU, I mean, it was beautiful. He was on point with the game. I mean, that was a great showcase of skill, but once again, towards the end of the zone, playing against him, and obviously the numbers advantage that ASI have. They will be the ones coming out. We were speculating, will they get to the grand finals? Will the fans help them with the votes? But here's the thing. They don't really need the words anymore. They were on point, and the second chicken dinner for them here today. What a great performance coming in from ASI8 Esports. Winner, chicken dinner, and they have also qualified. True man, I mean ASI Esports and especially मैं बोलूँगा जितनी भी हमारी audience पाकिस्तान से देख रही है, देखिए, you guys played good. I mean, you guys weren't the player playing in the lobby right now, but right now, you guys were the hopes for ASI Esports, and you guys kept on helping them, kept on voting them, and I feel like Edge, they did accumulate 3,000 plus votes, but एक बार यहाँ पर हम लोग नजर डालते हैं हमारे मैच हाइलाइट्स के ऊपर, and मैच हाइलाइट्स से पहले हम लोग आप लोगों से एक बार ही रिक्वेस्ट बोलेंगे, दिल से रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे 141 Esports को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए सब्सक्राइब करिए, because these are not matches anymore. It's all emotion, right? क्योंकि आप लोग अगर अपनी टीम्स को इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हो, right? You guys are keep on voting, इतने ज्यादा efforts डाल रहे हो, इतने ज्यादा emotions डाल रहे हो, you guys can actually subscribe and help 141 Esports grow as a business, grow as an organization, and उससे जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, and they will be bringing more and more great tournaments, more and more great events for you all. So जाइए अभी जाके सब्सक्राइब करिए एंड मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि कल से हम लोग विटनेस करेंगे हमारे ग्रैंड फाइनल्स का पहला दिन का आगाज कल से होगा एज। And check out 141 Esports on Instagram too, so you don't, you also stay updated and keep yourself in the loop, and also get updated about the future tournaments. And also, if you, just in case if you miss any of the streams, which I hope you don't, but if you do, then you will also be updated about the stats of the day, so you don't miss out on any of the action. But links down in the description. Make sure to check it out and leave a follow. As 141 Esports, I mean, we're done with Chapter 3. Chapter 4, I'm pretty sure is around the corner. So, we're done with Chapter 3, as in we're done with the playoffs. We still have grand finals left, but Chapter 3 is coming to a close. So hopefully, these grand finals are going to be explosive as ever, and it's going to be amazing. We have 4 tribes. We have Korean dominance. We have Boom coming in. We have BTR coming in. And we have, well, if I don't take their name, someone will hit me for sure. We have Flash coming in to defend their title for the second time in a row. Can they be the team getting themselves a 3rd championship here in Chapter 3? That would be history in the making. That would be. नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पर एक बारी विनिंग टीम स्टैट्स के ऊपर, जहाँ पर ASI Esports लेके गई है 23 पॉइंट्स एंड 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स को एक्युमुलेट किया गया था पिछले मैच के अंदर। बेहतरीन यहाँ पर पैंथर ने खेला, प्रीतम also performed really good, Cryptoron, everyone, it was good. Iron, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हम लोग को देखने को मिली थी, एंड आई मीन यहाँ पर बूम Esports के जो मॉल थे उनके अगेंस्ट वो जो फाइट थी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुई थी, बट स्टिल ASI Esports will come on top, make that chicken dinner happen, एंड इसके बाद हम लोग एक बार जरूर डालेंगे MVP के ऊपर नजर, देखते कौन रहेगा MVP। Yeah, the MVP is definitely gonna be an important factor, and this breaks my heart. Oh, I never thought watching an MVP would actually break my heart. It's Snave from the side of Alter Ego, who unfortunately have not qualified. I never really thought I would see this coming into Phase 3, especially after Rosemary jumping back into the squad with 5 eliminations, 825 damage, assist 1, survival time of 19 minutes and 7 seconds, 4 knocks, and 119 heal. He was the MVP, and I do feel a little sad, I'll be honest.
True, man. I mean, also because it breaks my heart as well because all the emotions we were connected with Rosemary, Snape, out there, Krypton as well. Because all the players from the side of Ultra Egos, they are amazing, man. Man, still they're not able to make up. It is going to be the phase third where we won't be able to see them playing in the grand finals. Maybe, I mean, I don't know. We need the confirmation for sure in the overall rankings, but let's just have a look onto our top 4 players. WARGYE, Daku, Panther, Tarang from side of Team Secrets and 2 of the players from the Pakistan. नजर डालते एक बारी हम लोग यहाँ पर टीम्स टू वॉच आउट के अंदर कल के ग्रैंड फाइनल्स के अंदर एंड मैं बोलूँगा वी आर डन क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स के अंदर यहाँ पर ये जो टीम्स है देखते हैं कल कैसे परफॉर्म करती है कल की Ultra Egos दे आर नॉट इन द ग्रैंड फाइनल्स maybe not but teams to watch out it's going to be for this one and देखते हैं कल के अंदर ग्रैंड फाइनल्स के अंदर ये टीम्स टू वॉच आउट कैसे खेलती है ASIT esports they did qualify WARGYE unfortunate it's really breaks my heart as well for that team not going to be joining the spot क्योंकि मैं बोलूँगा डाकू शाका रेज सब लोग यहाँ पर बेहतरीन खेलते हैं WARGYE की तरफ से अभी के लिए यहाँ पर ये लोग भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे थर्ड पेज के ऊपर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए टीम सीक्रेट्स हालांकि यहाँ पर शायद उन लोग के पास में एक चांस है 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन लोग के पास में रहेंगे नजर डालते हमारे मैच समरी के ऊपर 62 total elimination 6 rated elimination 2 airdrops were looted 7,000 plus healings were done and I mean yeah Rosemary will be taking the longest elimination but he won't be able to qualify. Oh god, that is heartbreaking. If you're a fan of Ultra Ego Ares, or as a matter of fact, if you're a fan of aggressive gaming, you will miss Ultra Ego in the grand final. I guess I have to wear my cap from tomorrow to see some chaotic action because Ultra Egos are not going to be in it. They tried their best. They got like 13 points into this one, but ASI at 21. I think they surpassed SCYTES as well there. But WARGYE on 12 points, Boom on 10, Non-Shim on 10, Team Secret with 7-5 for 2K, BLUG, Xavier and DRX with 4 points each, DK 1, HORAA 1, 11-1, PANDUM 1, VOIN, none, 40 none, APG none, with esports unfortunately none again. And now, moment of truth. Overall rankings will be on our screen now. Time to see which teams are going to be the ones making it to the grand finals for one last time in Chapter 3. True, man. I mean, these are going to be the match rankings. ASIT esports, 21 points. Ultra Egos will be taking 13. But it is going to be the moment of truth. All these teams on the 9th page. We can see on the first page, actually, all these top 9 teams, they will be qualifying very easily. Nonstop Red Forces, Team DK, Duplex Kia, Team DRX, Team Secrets, One Esports, RQ, FN, Team BIGETRON by Vitality, Team PANDUM. They clear themselves in top 9 and getting qualified for grand finals. As we take a look at the second page, the names are going to be scary for sure. The numbers, did we get anything wrong? That is a question I'm asking myself. Is it going to be SCYTES qualifying or not? Yes, they are. 4 tribes, HORAA Esports, DRS, Flash, Xavier, Boom Esports, ASI8, and SCYTES and SKYFORCE. They barely made it. SCYTES and SKYFORCE, they barely survived. They're going to be thanking their lucky stars, but we will see them in grand finals tomorrow. Congratulations to the 18 teams that have made their way. But let's see, how heartbreaking is it going to be? SKYFORCE on 119. Let's see how far was the team in number 19 position. Now, how big of a heartbreak are we talking about? Is it 1-2 points? Because if it is, oh boy, then it's going to hurt a bit more for sure. Or it is 2 points. Oh no, it is 2 points. It's gonna break heart, man. I mean, Ultra Egos, WARGYE, Team Alpha Gaming, 2K Esports, T2K Esports, Glue, HKG, Team 11, and Team 52 Esports. They're not here in the lobby for us. And they won't be joining in the grand finals. All these teams, all these 8 teams, they are not gonna be joining us in the grand finals of phase 3rd. I feel bad. I feel a little hurt, to be really honest. Ultra Ego Ares, WARGYE, APG, 2K as well. Not making it there to the top. Unfortunate turn of events. But as we look at the overall MVP, we have Hyunbin on the side, and he surpassed Federals in terms of damage too. 10,871 damage, 54 eliminations, and 20 minutes of survival time average, of course. 53 knockouts. Absolute monster. Red Force, Nongshim, that is.
They're going to be so happy with the way he's performing right now. Federal's in second position. Jackie on side of Team Secret in third. Well, DRX, they have two players, which is a good sign for them moving into the grand finals. Hoxie and TRE, both of them making it to the top 5 of the overall MVP. Now, there are a lot of these players are going to be coming into action tomorrow. Actually, all of them, to be honest. And well, a lot of these eyes are going to be set on them. True. And the overall MVP, we are going to be making a wrap there as well. Daily MVP, it's going to be Kayaxe with 18 elimination, with 14 knockouts, 3000 damage. He was a freaking war machine. 5 assists, 3 headshots, and 19 minutes and 40 seconds of our average survival time incoming. Team Duplex Kia, let's just see what you guys are up to into the grand finals. It is going to be amazing to witness these Korean teams join us here in the grand finals. For the last phase, it is definitely going to be an interesting turn of events. And it's definitely going to be chaotic for sure. As we will also take a look at the votes. So I kind of want to see if they are going to be, if the audience actually helped SIA surpass DRS. I think they did. I think they even maybe even took down 4 tribes. And if they did, it's going to be amazing. And if they did, by the way, Inferno, you are going to be, you're going to be wrong with your prediction, because you said 4 tries and DRS 3 times back to back. It's twice. Is it thrice? And the answer is, oh my lord. Oh, whoa. Oh my God. Whoa. It's the first time they ever touched 30,000, by the way. I don't think so. Is it? I think we've seen. Yeah, it is maybe. 4 tribes do it, no? But regardless, they took down 4 tribes. Yeah. Is the support coming in from Pakistan, by the way? 2 Pakistani teams now are going to be the fan favorites. Both of them qualifying, which means we have the top 18 moving forward and not just top 16. Congratulations to ASI 8. You have the backing of the audience. You have the backing of yourself. And well, there's an entire nation behind you. This has been an amazing playoffs. And I cannot wait for grand finals to begin. Absolutely, Edge. We are done with all the matches today, and this is gonna be the 6th day, and it's a wrap. It's a wrap for day 6, and tomorrow it is gonna be grand finals. To all the audience watching out there, still make sure to subscribe to channel, notification bell icon ऑल कर दीजिए, क्योंकि कल के दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे विटनेस करेंगे हमारे कुछ आखिरी चंद लम्हे इस एशिया बालवर्स चैप्टर 3 के, एंड उसके बाद it's a wrap to the whole tournament now. 30 दिन का ये पूरा टूर्नामेंट हम लोगों ने विटनेस किया, and it's gonna be insane, man. I mean, Edge, we are down to the grand finals of phase 3. Yep, we're done with this. So make sure to subscribe and hit that bell icon so you don't miss out on any of the action. Tomorrow especially, we have 4 days of grand final before we wrap up Chapter 3. As Inferno said, well, for day 6 of playoffs, this is it. This is me, Edge, along with Inferno, signing off for now. We'll see you with the grand finals. Until then, good night, take care, and stay safe. Invincible.
invincible.